All right. Hi, everyone. Hello and good afternoon. Good evening, rather. This is Ayesha Khan. I'm your English Literature faculty for UGC NET here at Unacademy. फटाफट से join कर लो because we're going to have a very, very long class. This is going to be a 5-hour marathon of all 10 units. Paper 2, all 10 units, 5-hour marathon में हम questions करेंगे from all the 10 units. मेजरली क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पैटर्न जो आपके नेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है, विच मीन्स आज के सेशन में we're going to have a lot of chronology questions. Expect a lot many questions about reason assertion, statement 1, statement 2 questions होने वाले हैं. काफी सारे questions होने वाले हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी होगी. यू हैव 5 स्टेटमेंट्स अबाउट अ थियोरिस्ट और राइटर एंड यू गॉट टू पिक वन ऑफ दोस स्टेटमेंट्स. तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस नेट फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं. आर वी ऑल सेट? आर वी ऑल रेडी? कैन यू पीपल हियर मी क्लियरली? सब कुछ कंफर्म कर दो बिफोर वी बिगिन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, डन. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. वेरी वेरी क्विकली वील गेट स्टार्टेड. डन. चलो, गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है बच्चे, 5-hour मैराथन है. प्लीज ब्रेस योरसेल्व्स. लॉन्गर मैराथन होने वाली है. यूजुअली हमारी क्लासेस 2 या 3 घंटे की होती हैं. आज 5 घंटे की है. और दिस इज द टेलीग्राम चैनल. फिलहाल तो टेलीग्राम अभी फंक्शन नहीं कर रहा है. ठीक है, अभी तो वी आर नॉट कनेक्टेड थ्रू टेलीग्राम, लेकिन दिस इज द टेलीग्राम चैनल. तो आप इस क्यूआर को ज्वाइन स्कैन कर बाद में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. डन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आर वी ऑल सेट? आर वी ऑल रेडी? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करेंगे. स्पेसिफिकली कुछ न्यू क्रिटिक्स हैं, कल्चर क्रिटिक्स हैं जो हर साल नए नए पूछे जाते हैं. तो आज की क्लास में मैंने कुछ नए क्रिटिक्स भी ऐड किए, उनको भी कवर कर लेना. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे. ऑल्सो डू रिमेंबर 21st को आपका क्या है, 22nd ऑनवर्ड्स आपकी 20 यूजीसी नेट की जो जून साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो उससे पहले आपका एग्जाम बिफोर एग्जाम होने वाला है अनअकैडमी का. दिस इज योर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और ये फाइनल मॉक टेस्ट है. ठीक है, तो ये होगा 6 PM शार्प स्टार्ट ऑन 21st जून. इसके लिए आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के लिए लिंक कहाँ पर है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलो ओके, रेडी रेडी रेडी. ठीक है, चलो अब जब सब रेडी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू पीपल इज अ बेसिक क्वेश्चन. The concept of intersectionality, which is now central to feminist and cultural theory, was coined by which of these figures in which of these works? That's the first question, question number 1. चलो आयुषी पटेल बच्चे, आई विल लेट यू नो कि कोर्स कैसे लेना है. बट या दिसंबर का आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 22nd जून को. 22nd जून को आई एम गोइंग टू बिगिन विद माय बिगिनर्स सीरीज एंड 10 जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर कोर्स की. दिस इज द विक्ट्री दिसंबर कोर्स. इसकी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. डिटेल्स में बाद में आपको बता दूंगी ड्यूरिंग द क्लास. फिलहाल फोकस करो यहाँ पर. इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? इंटरसेक्शनैलिटी को हम फेमिनिज्म में यूज करते हैं इन व्हाट इज कॉल्ड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म. इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या होता है? द आइडिया दैट वी हैव दलित फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, वो क्या है? इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है. मतलब फेमिनिस्ट कंसर्न्स होंगी लेकिन साथ ही साथ कुछ और कंसर्न्स भी होंगी. कंसर्न्स ऑफ रेस, कंसर्न्स ऑफ कास्ट, कंसर्न्स ऑफ रिलीजन फॉर दैट मैटर. तो ये सारी की सारी थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म हो सकती है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी. द आइडिया वाज गिवन बाय किम्बर्ली क्रैनशॉ. किम्बर्ली क्रैनशॉ ने 1991 के वर्क मैपिंग द मार्जिन्स में ये आइडिया प्रपोज किया था. अगर ये क्वेश्चन आपको गलत हुआ है तो मतलब आपके थ्योरी के बेसिक्स भी अभी वीक हैं. Kimberly Crenshaw, in mapping the margins in 1991, she was a legal scholar and she proposed the idea of intersectionality. In her 1989 paper, पहले पेपर में प्रपोज किया था, बाद में कंसेप्चुलाइज फर्दर किसमें किया? आपने इस वाले वर्क में. कंसेप्ट प्रपोज कहाँ पर किया था? कॉइन कहाँ पर किया था? 1989 का पेपर है जिसका टाइटल है डीमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स. बच्चे क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी आ जाएगा दैट किम्बर्ली क्रेंशॉ डिड इंडीड कॉइन द टर्म, बट वेयर डिड शी कॉइन द टर्म? 1989 का पेपर है. उसके बाद 1991 का जो फुल लेंथ वर्क है मैपिंग द मार्जिन्स, उसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप किया. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू पीपल इज, आपको मैच करना है इन रिटोरिकल डिवाइसेस को विद देयर एग्जांपल्स एनाफोरा, यूग्मा, लिटोर्स एंड हाइपरबोली. चलो वेरी वेरी क्विकली स्टार्ट आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा वॉइस ठीक है ना? लेट मी जस्ट चेक इट वंस माय सेल्फ. ऑडियो में प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए वैसे, पर मैं कर लेती हूँ चेक. ठीक है, वी आर या प्रीटी क्लियर. ठीक है, काफी क्लियर है. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज,
Question number 2 is she lost her heart and her handbag at the party. See, यहाँ पे lost term का हम use कर रहे हैं for two things, लेकिन दोनों चीजों में अलग अलग respects में, अलग अलग aspects में lost word का use हो रहा है. Losing the heart is obviously not a literal losing of the heart. However, losing the handbag is a literal losing of the handbag. तो इस term को क्या कहा जाता है? इस figure of speech को क्या कहते हैं? Not the worst poem I have ever read. आप क्या कर रहे हो? In order to say that this is actually a good poem, आप कहते हैं this is not the worst poem I've ever read. तो आप understatement का use कर रहे हैं. Understatement, है ना? I have a dream, I have a dream, I have a dream. Martin Luther King Jr. He said, well, I have a dream about this and that and this and that. तो उन्होंने एक idea, एक phrase को बार बार repeatedly use किया था अपने work में. उसको क्या कहते हैं? And I've told you a million times. जैसे मैं आपसे कहती हूँ I've told you a million times to study this and not to study that. तो बच्चे मैं exaggerate कर रही हूँ because obviously nobody could have told you something a million times. They could have told you the same thing 10 times, 20 times. That is definitely an exaggeration for emphasis. तो exaggeration जब emphasis के लिए किया जाता है तो वो आपका hyperbole का example होता है. Yes indeed. तो हम 4 को मैच कर देंगे D के साथ. ठीक है. Litotes क्या होता है? Understatement होती है. For example, not the worst poem I have read is basically an implication that says this is actually one of the best poems I've read. I have a dream, I have a dream, I have a dream. ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा. अच्छा, by the way, सबसे पहले है ना हम ऐसे मैच कर लेते हैं. 1 को मैच कर लिया आपने एनाफोरा को. I have a dream जो रेफरेन है बार बार आता है, that's एनाफोरा. ठीक है. तो A को मैच कर लिया C के साथ. ज्यूगमा क्या होता है बच्चे? ज्यूगमा होता है आपका not the worst poem, अंडरस्टेटमेंट को बोलते हैं ज्यूगमा. फिर आपके पास आ जाता है लिटोट्स. लिटोट्स क्या होता है? सॉरी, लिटोट्स होता है अंडरस्टेटमेंट. ज्यूगमा क्या होता है? जब आप एक वर्ड को यूज कर रहे हो लेकिन दो अलग अलग फंक्शन वो वर्ड परफॉर्म कर रहा है. लूजिंग द हार्ट एंड लूजिंग द हैंडबैग. ठीक है. तो दैट्स योर करेक्ट आंसर. एंड हाइपरबोली इज एग्जैजरेशन. तो वो तो ऑलरेडी आपका पहले ही मैच्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Han Kang's novel The Vegetarian, which has been translated into English by Debra Smith, belongs to which literary tradition and what is the primary thematic concern of this novel? Next question, chalo batao. Okay. Han Kang recently, she was awarded a very prestigious literary prize. Recently, as in recently मतलब last year, ठीक है? Last year इन्हें बहुत ही prestigious literary prize भी मिला था और इनकी novel का नाम है The Vegetarian. इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी डेब्रा स्मिथ ने. आपको ट्रांसलेटर का नाम लर्न करना पड़ेगा. इन द ईयर 2015. लेकिन किस ट्रेडिशन को ये बिलोंग करती है? बट ये टाइटल से भी काफी एविडेंट हो जाना चाहिए. दिस इज एक्चुअली अ नॉवल ऑफ कोरियन लिटरेचर. दिस इज अ कोरियन फेमिनिस्ट नॉवल. फीमेल बॉडीली ऑटोनॉमी एंड रेजिस्टेंस टू पेट्रियार्कल वायलेंस के बारे में ये नॉवल है. दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है. दैट्स योर करेक्ट आंसर. हान कांग. यस, हान कांग. It's a Korean feminist novel. That's your correct answer. The Vegetarian was actually originally published in Korean language in 2007. फिर English translation appear करती है 2015 में. It's a landmark of Korean feminist literature. It explores a woman's radical refusal to eat meat. Hence the title, The Vegetarian, which is an act of resistance against domestic violence and patriarchal societal control over the female body. In 2024, Han Kang was awarded the Nobel Prize for Literature and she became the first woman from Korea to become a Nobel laureate. Next question. The literary device ekphrasis refers to what? Example के तौर पर Ode to a Grecian Urn. Ode to a Grecian Urn, जो कि जॉन कीट्स का one of the 6 famous 1819 odes है. This is one of the 6 1819 odes of John Keats. Odes of John Keats. Ode to a Grecian Urn is basically the description of an urn. ठीक है. एक urn का description है. तो जब आपके पास पोइट्री होती है about another piece of art, for example, if I write a poem about a painting, or if I write a poem about a statue, or if I write a poem about a piece of architecture, so क्या कर रही हूँ मैं? What I am writing is basically ekphrasis. तो ekphrasis क्या होता है? It's a vivid, detailed literary description of a visual artwork, creating a verbal equivalent of the visual piece. Ode to a Grecian Urn, perfect example है इसका ekphrasis का. Next question for you people is,
एन केथरीन हेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर अटेंशन। अच्छा, आज की क्लास के लिए क्वेश्चन काफी रेलेवेंट भी है, आप लोगों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। ऑल यू पीपल, स्पेशली द जेंजीज जो कि स्क्रॉल करते रहते हो सोशल मीडिया पर, सिंस योर अटेंशन स्पैन्स हैव बिकम द वर्स्ट पॉसिबल, ठीक है। तो एन केथरीन हेल्स ने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है हाइपर अटेंशन का वर्सेस डीप अटेंशन, as developed in electronic literature in the year 2008. क्या नाम है वर्क का? Electronic Literature 2008. It is most directly relevant to which contemporary debate in English studies? Next question. चलो करो आंसर. Next question. Please answer. देखो, N. Catherine Hales says that it has become extremely difficult for a teacher, especially a teacher of literature, to teach literature to students जिनके attention spans बहुत majorly affect हो चुके हैं, because now they have a lot many distractions. For example, what device are you watching this class on? आप इस class को किस device पे attend कर रहे हैं? First of all ये बताइए मुझे. Are you attending this class on a phone or a tab or a laptop? किस चीज पर attend कर रहे हो? तो एन केथरीन हेल्स ने कहा कि आजकल क्या है, स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो इजीली वेवर ऑफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं बच्चे। आज अगर आप क्लास को अटेंड करते हो ऑन अ डिवाइस, हो सकता है साइमल्टेनियसली या लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो हो सकता है साइमल्टेनियसली आपके फोन में इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रही हो, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ रही हो, 10 तरह की और एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हो, ठीक है, यूट्यूब की नोटिफिकेशंस आ रही हो फॉर दैट मैटर। तो आप क्या करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका अटेंशन थोड़े टाइम के लिए इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो इसी के लिए टर्म यूज किया था हाइपर अटेंशन वर्सेस डीप अटेंशन। द पेडागोजिकल चैलेंज, द चैलेंज ऑफ टीचिंग लिटरेचर टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैं, where students shift between multiple information streams. बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, बीच में ट्विटर स्क्रॉल कर लिया, बीच में थ्रेड स्क्रॉल कर लिया एंड ऑल दैट, राइट। तो ये टर्म यूज किया था एन केथरीन हेल्स ने। इज इट एन इंटरेस्टिंग टर्म? तुम लोग पे अप्लाई करता है, ठीक है, एंड यू पीपल आर गोइंग टू टीच लिटरेचर एट सम पॉइंट। तो आपके लिए जो ये पेडागोजिकल चैलेंज है, इंग्लिश लिटरेचर के टीचिंग का चैलेंज है, वो आप फेस भी करोगे। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, next question for you people is the pedagogical challenge, as in the challenge in the teaching process due to the age of digital distraction where students shift between multiple information streams. This is your correct answer. अगला सवाल देख लेते हैं. Who developed the concept of, अच्छा हाँ ठीक है, now onwards जितने भी questions आएंगे are going to be questions जो मैंने आपको literary theory में कुछ culture studies में कुछ minor topics करवाए थे culture studies के within, उसके questions frame किए आपके लिए, ठीक है। So you're going to have questions from ये सारी की सारी theories. By the way, we've covered all these theories in your course class and your paid class on Unacademy app. So we've covered space theory. Have we or have we not covered space theory? Give me a quick yes or no. We've covered trauma studies. Under culture studies, I've taught you trauma studies. We've also covered film theory or film studies. Richard Dyer, film studies. We've covered disability studies also, है ना, ये भी study किया है हमने, disability studies. Mall culture studies, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चन प्रैक्टिस आई वांटेड कि ये कर ले हम, बिकॉज ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं, ये सारी की सारी बच्चे नई थ्योरीज हैं कल्चर स्टडीज में, ये नई ब्रांचेस हैं कल्चर स्टडीज की। तो अब जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, वो इन टॉपिक्स में से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, who developed the concept of the production of space, arguing that space is actually a socially produced rather than neutral container? किसने कहा था that space is not a neutral container, rather space क्या है, space socially produced है? किसने कहा था? ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। ही इज अ फ्रेंच फिलोसोफर, ही इज अ फ्रेंच थिंकर, मिशेल फूको, ओके, हेनरी लेफेब्रे, एडवर्ड सोया एंड डोरीन मेसी। चलो करो आंसर। देखो टाइटल गिवन है, बुक का टाइटल गिवन है, टाइटल द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस किसकी बुक है बच्चे?
इट्स अ बुक बाय हेनरी लेफोर्ब. हमने ये क्लास में डिस्कस किया है. अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है, यू नीड टू गो बैक टू माय क्लास नोट्स और मेरी कल्चर स्टडीज की क्लास को अटेंड करो और क्लास नोट्स को फिर से रिवाइज करो. ठीक है. तो हेनरी लेफोर्ब की 1974 की बुक है. फ्रेंच टाइटल था इसका ला प्रोडक्शन डे ल स्पेस. English title is The Production of Space. It's argued that space is created through social relations, politics and economics and culture rather than being a simple neutral container. अब space को कैसे discuss करते हैं? You discuss space as something that has to be occupied. He says no, such is not the case. Space is not simply a neutral container to be filled in. Space is very much socially developed. So space भी एक social construct है. ठीक है. Next question, Henry Lefebvre, French philosopher, 1974 book which is called The Production of Space. It was a French book. English title आपका Production of Space है. ठीक है. अगर ये नई piece of information है, take a screenshot. Lefebvre's conceptual triad of space includes spatial practice, representations of space and third term का क्या है. तो Lefebvre ने कहा था कि जो space है, I'm gonna divide the space into three parts, the triad of space. He says first is the spatial practice, the actual space. Then you have the representation of that space, that is second space. The third space that he talks about वो कौन सा है? Discursive space, third space, representational space और heterotopia. Heterotopia. Okay. यस, लेफोर्ब का बचा कॉन्सेप्ट है. लेफोर्ब ने कहा कि देखो स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सिंपल न्यूट्रल कंटेनर नहीं होता. सेकेंडली आई एम गोना डिवाइड द स्पेस इनटू थ्री काइंड्स. तो उसमें आपका सबसे पहले स्पेशियल प्रैक्टिस आएगा, द स्पेस दैट यू एक्चुअली लिव इन. फिर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस आएगा. तीसरा जो आपका आएगा दैट ही टॉक्स अबाउट इज एक्चुअली representational space. एक बार देख लेते हैं. Lefebvre's triad consists of spatial practice, the space as it is perceived in your heads, in your minds, the representation of space as conceived space, and the representational space that is lived space. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, think of a classroom. Think of a typical classroom, not a digital classroom. Think of a typical traditional classroom. ठीक है, सोच लिया माइंड में आइडिया. गिव मी अ yes or no. तो लेफोर्ब ने कहा कि देखो किसी भी स्पेस को आप न्यूट्रल एंटिटी या न्यूट्रल कंटेनर नहीं मानो, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड स्पेस होता है. ठीक है. थिंक ऑफ अ क्लासरूम. अब क्लासरूम आपने सोच लिया, अपने माइंड में क्या सोचा आपने? क्लासरूम इज बेसिकली अ रूम, अ ह्यूज रूम विद 4 वॉल्स एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ बेंचेस होंगे. देयर मस्ट बी अ डेस्क फॉर अ टीचर, देयर कुड बी अ लेक्चर स्टैंड एंड ऑल द बेंचेस विल बी फेसिंग द ब्लैक बोर्ड. डन. ठीक है. तो आपने माइंड में जो अपना आइडिया परसीव किया स्पेस का, दैट इज योर स्पेशियल प्रैक्टिस या परसीव्ड स्पेस. ठीक है. आपके माइंड में क्लासरूम का आइडिया एक आपने परसीव कर लिया. नाउ व्हेन यू एक्चुअली ड्रॉ इट ऑन अ मैप, सोचो आपको क्लासरूम एक उसमें बनाना पड़े. ठीक है. यू नीड टू डिस्क्राइब योर क्लासरूम टू मी. तो आप मुझे बताओगे कि मैम दिस इज आवर क्लासरूम और यहाँ पर स्टूडेंट्स के बेंचेस की रोज हैं, यहाँ पर आवर टीचर स्टैंड्स. Here we have a lecture stand. Here stands a digital board or a blackboard, and यहाँ पर we have some bookshelves or something, right? So when you represent the space for me, that is your representation of space or the conceived space. But when you actually live in this classroom, जब आप इस classroom में बैठते हो, interact करते हो with your with your friends, with your teacher, तो जो relations form होती हैं when you actually live in this space, that is your lived space. तो ये तीन तरह के spaces हो जाएंगे. This was idea was proposed by Henry Lefebvre. ठीक है. चलो. Next question, which Foucauldian concept describes other spaces as cemeteries, ships and prisons that operate by special rules outside normal societal norms? अब space theory में एक idea आता है मिशेल फुको का. He is also a French theorist. मिशेल फुको ने कहा कि कुछ spaces होते हैं जो normal traditional spaces के rules के हिसाब से चलते ही नहीं हैं. They have their own set of rules. For example, किस तरह के spaces हैं? Cemeteries, ठीक है, graveyards and ships and prisons. He said in spaces में अलग तरह के rules apply होते हैं and I am going to call these spaces by a certain name. तो मिशेल फुको ने क्या name use किया था? Did he use the word panopticon, heterotopia, third space या discursive formation और discursive formation? चलो बता दो.
Michel Foucault, I know, ends up in every single theory. ठीक है, that's the beauty of Michel Foucault because इनके theories almost हर theory में आ जाते हैं ये. नहीं बचे. उत्तम, you might not have attended my course classes, लेकिन मिशेल फुको का आइडिया पेनोप्टिकन का है. ठीक है, दैट डज नॉट मीन आप मिशेल फुको को देखोगे क्वेश्चन में और पेनोप्टिकन टिक कर दोगे. बच्चे, मिशेल फुको ने कहा था कि कुछ स्पेसेस होते हैं विच डू नॉट ऑपरेट बाय द सेम रूल्स दैट अदर ट्रेडिशनल स्पेसेस ऑपरेट बाय. फॉर एग्जाम्पल सेमेट्रीज हुई, जो आपकी ग्रेवयार्ड्स होती हैं, ठीक है, शिप्स हुई या प्रिजन्स हुई. These spaces are called heterotopia. Heterotopia. Heterotopia comes from the Greek word hetero मतलब different. Hetero means different. जैसे कि heterosexual, right? Heterogeneous, है ना? So hetero means different. Other spaces. Michel Foucault describes heterotopia as those cultural, institutional, and discursive spaces that are simultaneously real and unreal, functioning as mirrors or critiques of surrounding society. That's your correct answer. नया वर्ड है हेट्रोटोपिया, तो इसको लर्न कर लो. मिशेल फुको का आइडिया है, ग्रीक टर्म से आता है, हेट्रो मीनिंग डिफरेंट. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशेल फुको's कॉन्सेप्ट ऑफ पेनोप्टिकन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच आइडिया. अब एक और स्पेस का आइडिया है मिशेल फुको का, बट दिस इज पेनोप्टिकन दिस टाइम. उत्तम, अब बताइए बच्चे, आप जो कह रहे थे वो अब बताओ. ओके, मिशेल फुको व्हेन ही टॉक्स अबाउट पेनोप्टिकन, आइडिया क्या है मिशेल फुको का? मिशेल फुको ने कहा कि देखो, जिस तरह से Jeremy Bentham gave us the idea, the architectural idea of prison, and he said कि the prison is designed in such a manner so that there is always somebody who can keep an eye on all the inmates of the prison at every single point of time. Likewise, the society also works by the same idea. ठीक है, the governments or the ruling parties or anybody who's in power makes us believe that we are constantly being watched by them. ठीक है, so when we live under the threat of constant surveillance, we occupy the space, but actually उस space को हम freely occupy नहीं करते. So space used to control and discipline people through surveillance. बच्चे, एक मुझे बात बताइए. Imagine you have a space and there is no CCTV camera in space. And then the same space later has 2 CCTV cameras installed in it. Do you think your behavior is going to alter in these 2 cases या फिर same behavior रहेगा? In first case, there is no camera. In the second case, there is a camera. So is your behavior going to alter? Are you going to modify your behavior? Although there is no third person telling you to change your behavior, लेकिन आप automatically क्या करोगे? बिकॉज अब आपके ऊपर वो थ्रेट है कॉन्स्टेंट सर्विलेंस की, आप अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लेंगे. तो ये स्पेस जो आपने ऑक्यूपाई किया, ये किस तरह से ऑक्यूपाई किया? नाउ यू आर बीइंग कंट्रोल्ड. अब ये स्पेस क्या बन गया? आपको कंट्रोल करने का एक मीडियम बन चुका है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ पेनोप्टिकन एज गिवन बाय मिशेल फुको. दैट्स योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, या फुको ने आर्ग्यू किया था कि ये पेनोप्टिकन वाला जो डिजाइन है किस पर वर्क करता है? Institutions like prisons, schools and hospitals, ये ऐसे वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Edward Soya's theory of third space combines which 2 other spatial categories? Okay, Edward Soya third space. चलो बताओ. जैसे क्लासरूम में जब एग्जाम हुआ करते थे, ट्रेडिशनल एग्जाम हुआ करते थे, और इन्विजिलेटर 1 मिनट के लिए क्लास से बाहर जाता था, व्हाट डिड यू पीपल डू? यू स्टार्टेड आस्किंग अराउंड, है ना, बातें करना स्टार्ट कर देते. द मोमेंट द इन्विजिलेटर वाज बैक, आप रुक जाते थे एंड यू स्टार्टेड लुकिंग एट योर ओन क्वेश्चन पेपर. दैट मीन्स व्हेन वी हैव अ थ्रेट कि हमें कोई देख रहा है, हम अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं. ठीक है, चलो. या तो एडवर्ड सोया ने थर्ड स्पेस का आइडिया दिया. बाय द वे, थर्ड स्पेस का आइडिया होमी के भाभा के साथ भी एसोसिएट करते हैं हम, और एडवर्ड सोया के साथ भी करते हैं. ठीक है, होमी के भाभा ने कहा था कि एक अलग अलग ही कल्चरल स्पेस बन जाता है जहां पर जो हाइब्रिड है, रिमेंबर द कॉलोनियल हाइब्रिड, द कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड का जो मिक्सचर बनता है, द हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? द थर्ड स्पेस. उन्होंने थर्ड स्पेस का जो डिस्कशन की थी वो पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स में की थी. यहाँ पर एडवर्ड सोया ने जब थर्ड स्पेस की बात की,
he actually combines two spatial categories which are first space जो physical space है and second space जो imagined space है. अब ये तीनों spaces हैं क्या डिस्कस कर लेते हैं. Edward Sawyer's third space is actually the lived socially produced space where first space the physical material world and the second space the conceived imagined world come together in actual human experience. ऐसा similar सा idea अभी किसका डिस्कस किया था हमने. The similar idea, the triad of space. एक और ये सिमिलर आइडिया ऐसा ही है, एडवर्ड सोया का भी यही आइडिया है. बेसिकली ही सेज एक स्पेस आपके माइंड में आप परसीव करते हो एंड देन उसको आप क्या करते हो, कंसीव करते हो एंड देन एक्चुअली व्हेन यू ऑक्यूपाई दैट स्पेस उसमें जो रिलेशंस पॉसिबल हो पाती हैं वो आपका थर्ड स्पेस है. तो सिमिलर आइडिया वाज आल्सो गिवन बाय हेनरी लेफर्ब. ठीक है, तो हेनरी लेफर्ब का भी ट्रायड ऑफ स्पेस वाला आइडिया है एंड थर्ड स्पेस, फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, ये आइडिया हमारे एडवर्ड सोया का भी है. कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which theorist argued that places are dynamic and relational, having multiple identities rather than a single fixed one, as in her example of an airport meaning different things to an employee, tourist and migrant. कौन सी स्पेस थ्योरिस्ट ने आइडिया दिया था. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. इमेजिन देयर इज एन एयरपोर्ट. ठीक है, इमेजिन एन एयरपोर्ट. नाउ इमेजिन समबडी जो कि इस एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाली टीम में है. ठीक है, जो आपके सिक्योरिटी चेक्स करते हैं ना. इमेजिन देयर इज समबडी हु वर्क्स ऑन द एयरपोर्ट. तो उनके लिए बच्चे एयरपोर्ट क्या हो जाएगा, इट्स देयर वर्क प्लेस. They visit the airport regularly. It's their workplace. Okay? The same space has different meanings for different people, depending on how they occupy it. Now imagine you people are going to this airport because you have a flight to Bali. ठीक है, आप UGC नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद बाली घूमने जा रहे हो. अब बाली घूमने जा रहे हो तो you need to take a flight. तो आप बच्चे इस एयरपोर्ट को ऑक्यूपाई करोगे briefly as a tourist. ठीक है, as a tourist because you need to take a flight from here to Bali. Then suppose there is a migrant who is leaving their country and going to another country to finally settle there. बच्चे ये वो space occupy ये भी करेंगे. ठीक है, but they occupy a space, the same space in a different manner because they will leave the space with a feeling of nostalgia. है ना, आप तो tourist हो, you're going to come back after some time. Imagine somebody who is going to leave the country. हर एक इंसान के लिए सेम स्पेस का आइडिया डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन हु ऑक्यूपाइज दैट स्पेस. सेम स्पेस डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल. तो ये आइडिया किसने प्रपोज किया था. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. इट वाज प्रपोज्ड बाय डॉरिन मेसी. ठीक है, डन हो गया. थिंक ऑफ दिस एज स्कूल. सोचो अपने स्कूल के बारे में सोचो. इमेजिन दिस इज योर स्कूल. ठीक है, स्कूल इज अ स्पेस. Yes, school is a space. Now, you people used to go to the school and you used to occupy the benches in the school. है ना? There was a teacher who would stand and occupy the central place in the classroom. And there was a principal who would occasionally just pass by your classrooms and keep an eye on the teacher and the students. तो बच्चे हर एक इंसान जो सेम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है बट द वे दे ऑक्यूपाई द सेम स्पेस डिफर करता है. So that's the idea that was given by Doreen Macy. Doreen Macy emphasized that space is dynamic and relational, right? Places are processes actually, she said, not frozen entities. Places are not static or frozen entities. These are dynamic processes. Different people experience the same space differently depending on their position. ठीक है, done है. Next question for you people is, Donna Haraway's A Cyborg Manifesto primarily challenges which set of boundaries? हाँ, तो कल्चरल स्टडीज में मैंने आपको एक टॉपिक और करवाया है विच इज ओके, डोंट एक्ट आउट. हाँ, तो कल्चरल स्टडीज में करो ऐसे आंसर करो. या सो आई वाज Donna Haraway post-humanism. So what I'm going to do is, इस list में let me also add post-humanism. And these are all subtopics of cultural studies जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं. ठीक है,
तो अब हमारे पास स्पेस थ्योरी के बाद क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पोस्ट ह्यूमनिज्म का क्वेश्चन है। साइबॉर्ग मैनिफेस्टो 1985 में डोनर हैरवे primarily challenges which set of boundaries? Well, she says, अब the kind of world that we live in, the post-world human world that we live in, there is no essential boundary between a human and a machine or an animal. ठीक है, so we live in a world that is post-human, beyond human. So she questions or challenges the binaries of human versus animal, organism versus machine, physical versus non-physical. That's your correct answer. Next question for you people is, डोनर हैरवे ने क्या कहा था कि नाउ दैट वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी सारी मशीन्स हैं, ह्यूमंस और मशीन्स के बीच की डिस्टिंक्शन है वो अब कोलैप्स होने लगी है. शी गिव्स अस एग्जांपल्स ऑफ सम डिवाइसेस व्हिच हैव ऑलमोस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बॉडीली functions. For example, a pacemaker which is installed in your body becomes a part of you. That means machine and human body are now working together. A hearing aid becomes a part of you, right? So she gives examples of these things to state कि अभी जो मशीन और ह्यूमन वाली एक डायकोटमी हुआ करती थी, बाइनरी हुआ करती थी, वो बाइनरी अब कोलैप्स होना स्टार्ट कर चुकी है. वो जो डिस्टिंक्शन है वो इतनी क्लियर नहीं रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक डज एन केथरीन हेल्स एग्जामिन द को एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विद इंटेलिजेंट मशीन्स? एन केथरीन हेल्स ने अपनी कौन सी बुक में स्टडी किया द को एवोल्यूशन, एज एन humans are evolving along with intelligent machines as well. But this is specifically relevant for today's times in the world of artificial intelligence that we live in. ये बहुत important और बहुत relevant है. Topical subject है, topical question है ये, है ना. Topical subject matter है and I am assuming कि topical subject matter पे से NTA questions पूछेगा because ये आपके times के लिए ज़्यादा relevant हो जाएगा. Just like we discussed the idea of the attention span वाला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो अटेंशन स्पैन के बारे में था, वो इंग्लिश लिटरेचर टीचिंग के बारे में था, वो पेडागोजी के बारे में था, तो आपके लिए वो ऑल द मोर रेलेवेंट है. लाइकवाइज एन केथरीन हेल्स ने एग्जामिन किया था द को एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस विद इंटेलिजेंट मशीन्स इन द बुक कॉल्ड हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन. आपको कोर्स क्लास में मैंने ये बुक लर्न करने के लिए भी कहा था अलॉन्ग विद द पब्लिकेशन ईयर. हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन इज योर करेक्ट आंसर. In this book, she explores the struggle between different versions of post-human as it co-evolves alongside intelligent machines. Next question, post-humanism is best described as a movement that primarily seeks to do which of these? Post-humanism क्या है? Post-humanism critique या challenge करती है the centeredness of humans. The idea that humans are the center of the world. That idea that humans are supreme. राइट, तो सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमंस को क्वेश्चन करने वाला आपका जो थ्योरी है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है, दैट इज पोस्ट ह्यूमनिज्म. अब तक हम बिलीव करते क्या आए थे, वी यूज्ड टू बिलीव दैट nature exists for humans. Animals are inferior to humans. Machines are actually there only to serve us because we have made the machines. Machines are there to serve us. However, now the idea has changed. Now our world is not, our perception, our understanding of the world is not on the centeredness around human. तो आपका जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का आइडिया हुआ करता था ना, ह्यूमन सेंटर्डनेस, उसको क्वेश्चन या चैलेंज करता है पोस्ट ह्यूमनिज्म. ठीक है, पोस्ट ह्यूमनिज्म क्या करता है, डिस्टर्ब करता है द ह्यूमन सेंटर्डनेस, जिसके लिए एक वर्ड होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ह्यूमन सेंटर्डनेस, ह्यूमंस आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. अकाउंट ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोर्स हाइब्रिड नेटवर्क एक्सिस्टेंस. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, पोस्ट ह्यूमनिज्म हो गया, इट डिसरप्ट्स द ह्यूमन सेंटर्डनेस. बच्चे, पोस्ट ह्यूमनिज्म कहता है कि ह्यूमंस आर नॉट सुप्रीम, ह्यूमंस आर नॉट सुपीरियर, नॉट दे आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. तो वो ह्यूमंस को डी-सेंटर कर देता है, विच इज व्हाई पोस्ट ह्यूमनिज्म चैलेंजेस एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, पोस्ट ह्यूमनिज्म challenges anthropocentrism. और anthropocentrism क्या है? The idea that humans are the center of the world. Done? चलो next question. According to cultural studies, analysis of consumer spaces, the shopping mall functions primarily as a site of which of these? अब ये mall culture हमने study किया था कोर्स क्लास में, वहां से question है. The shopping mall functions as a site of which of these? टेक्निकली मॉल कल्चर भी आपका स्पेस थ्योरी का पार्ट है बिकॉज मॉल इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो अ स्पेस अल्टीमेटली, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
करो आंसर. ओके, रिमेंबर हमने मॉल के लिए डिस्कस किया था, दैट्स अ टर्म कॉल्ड एक्लेक्टिसिज्म. एक्लेक्टिसिज्म बच्चे, मॉल क्या करता है? मॉल बिकम्स अ स्पेस दैट creates desire in you. Desire creating space hai mall. You go to a mall, you see 10 things that you do not even need, and when you come back from mall, even if you haven't bought anything, you have a desire of buying those 10 things because those 10 things were on display. A certain mannequin was wearing those 10 things. आपने वो 10 चीजें देखी, आपके पास उसकी जरूरत या नीड या नेसेसिटी नहीं थी, but the moment you looked at them, you wanted to have them, right? So everything being on display creates a desire in you, and that's how capitalism wins. So this is how capitalism uses the space for the creation of desire, and that's the idea of mall culture studies. Gazing and spectacle alongside shopping, like we discussed in class. Traditionally हम malls में shopping करने नहीं जाते. More often than not, what do? You go to a mall, you do window shopping. आप कुछ चीजों को देखते हो, अच्छी भी लगती हैं, but then you come back and then you check them on your e-commerce platforms कि वही product कहीं और easily available है and सस्ता तो नहीं मिल रहा, right? So it is very rare that you actually go to a mall and do your actual shopping there. Majorly shopping आप malls में नहीं करते, at least अभी, right? That means malls are, yes, they are definitely a place of shopping, but they're also a space जहाँ पर gaze, the act of looking, which induces desire in you, gaze and spectacle play a central role. ठीक है? Next question for you people is, which term best captures the mall's blending of diverse global brands, cuisines and styles under one roof? वैसे तो ये मैंने आपको गलती से बता ही दिया लास्ट क्वेश्चन में, बट चलो कर दो आंसर. दी आइडिया कि आप एक मॉल में जाओगे और आपको H&M एंड Zara जैसे स्टोर मिल जाएंगे टू बाय योर क्लोथ्स फ्रॉम, ठीक है? दी आइडिया दैट आप एक मॉल जाओगे और आपके पास वेस्ट साइड एंड व्हाट्स दैट अदर ज़ूडियो, राइट? ज़ूडियो जैसे स्टोर्स मिल जाएंगे टू बाय योर क्लोथ्स फ्रॉम, स्पेसिफिकली योर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, राइट? दी आइडिया that you go to a mall and आपको जो डिजाइनर्स हैं, जो सो कॉल्ड डिजाइनर्स, राइट, ऋतु कुमार एंड ऑल दोज, तो उनके कपड़े भी आपको मिल जाएंगे इन द सेम प्लेस. द आइडिया कि इसी मॉल में देयर विल बी अ फूड कोर्ट, इसी मॉल में देयर विल ऑल्सो बी सैलॉन्स जहां पर आप अपनी सैलॉन सर्विसेज भी ले सकते हैं. इसी मॉल में यू कैन ऑल्सो बाय ज्वेलरी फॉर योर सेल्फ, ठीक है? इसी मॉल में यू कैन ऑल्सो बाय स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट रिलेटेड स्टफ. इसी मॉल में यू कैन ऑल्सो हैव अ डीकैथलॉन स्टोर, राइट? तो मतलब everything under the same roof. This idea is called eclecticism. So mall culture is actually sorry, mall works under eclecticism. Everything under the same roof. जब सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलता है, right? Next question is, eclecticism describes how the mall brings together a mix of products, styles, traditions, local and global brands. आपने देखा होगा एक मॉल में एक बहुत ही रैल्फ लॉरेन वाला स्टोर भी होता है, ठीक है? वैन ह्यूजन भी होता है, बीबा का स्टोर भी होता है, मतलब इंडियन ट्रेडिशनल स्टोर्स भी होते हैं, मैक का स्टोर होगा, सफोरा भी होगा, बट देन आपका काम आयुर्वेदा भी होगा और फॉरेस्ट एसेंशियल्स भी होगा, है ना? होता है ना? So you have the ingrown human, your own brands, your Indian brands, but then you also have international brands, then you also have Miniso, then you also have all these luxury brands all in the same place. That is purely what is called eclecticism. Eclecticism, ठीक है? Also multiplexes. So if you got to watch a movie, go to a mall. If you got to buy clothes, go to a mall. If you need to get your hair done, go to a mall. If you need to get your nails done, go to a mall. So this is how mall works on eclecticism. That's the correct answer. The mall has been described as a hyperreal, ahistorical and postmodern secular space. Why? Next question. चलो बताओ. The mall has been described as a hyperreal. Hyperreal. Mall is a hyperreal space. ठीक है? Second, it is a ahistorical space. अच्छा बच्चे, आपको मॉल को कंपेयर करना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट से या बाजार से, तब आप you will be able to make better sense of this idea. Compare mall. Mall is what? Mall is a marketplace. Compare the mall, today's marketplace,
to a traditional bazaar. ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल बाजार्स होते हैं they have historicity to them, right? बच्चे आपके जो ट्रेडिशनल बाजार्स होते हैं they have an element to them, they have a personality of their own. वो ओवर टाइम डेवलप होते हैं, ग्रेजुअली ग्रो होते हैं. बाजार्स कम इनटू एक्सिस्टेंस ग्रेजुअली, अनलाइक अ मॉल दैट जस्ट क्रॉप्स अप आउट ऑफ नोवेयर वन डे. है ना, है ना. एग्जाम्पल, अगर आप आज भी अपने किसी होम टाउन में जाएंगे, सिटी में जाएंगे, there's always that one shop that your mother takes you to. बेस्ट ब्रेड कहाँ मिलती है, वहां मिलती है. इट माइट बी अ टाइनी लिटिल शॉप बट यू गो टू दैट शॉप. बेस्ट कपड़े कहाँ मिलते हैं, वहां मिलते हैं. यू नीड टू बाय अ स्वेटर, यू विल गो टू अ लोकल शॉप इन योर टाउन, राइट? दैट मीन्स आपके ट्रेडिशनल बाजार्स में वो चीज हुआ करती थी जो आज मॉल्स में नहीं होती. मॉल्स आर न्यूअर स्पेसेस विच आर हाइपर रियल. फर्स्ट ऑफ ऑल, they are ahistorical, they are postmodern, and they are definitely secular. It takes the city's streets into a tightly controlled artificial environment immune to weather and time. हमने discuss भी किया था एक दिन क्लास में. Sometimes you enter a mall at 4 p.m. and by the time आप बाहर निकलते हो आप realize करते हो कि अरे 10 बज गया. ठीक है, when you went inside it was broad daylight, but when you come out it is dark. Why? Because inside the mall you do not even realize that how much time has passed. ठीक है, दैट्स हाउ मॉल क्या करता है, एक एनक्लोज स्पेस क्रिएट कर देता है आपके लिए, जहां पर द आइडिया ऑफ टाइम होल्ड्स नो वैल्यू. बस आप शॉपिंग करते जाओ, शॉपिंग करते जाओ, शॉपिंग करते जाओ. लाइकवाइज, समटाइम्स यू व्हेन यू एंटर अ मॉल, outside there is scorching heat, but when you come out it's been raining for hours. ठीक है, और आप सरप्राइज हो जाते हो कि पता नहीं कब से बारिश हो रही है. we did not even realize. why? because malls बने ही ऐसे होते हैं. ठीक है, once you are inside the mall, once you are inside the premises, you don't even realize the weather or the time. So this is your hyper real ahistorical postmodern secular space called the shopping mall. Next question for you people is Richard Dyer. अब से question start हो जाएंगे film theory के. Richard Dyer's foundational work on stardom, he studied stardom, the idea of some public figures becoming stars, celebrities, which explores how viewers' experience of films is shaped by their perception of those stars, is titled what? Richard Dyer. Next question. चलो बताओ. Richard Dyer. रिचर्ड डायर को हमने स्टडी किया है बच्चे फिल्म स्टडीज में, फिल्म थ्योरी में. कोर्स क्लास के नोट्स को रिवाइज कर लेना. अगर रिचर्ड डायर का नाम देखकर फेमिलियर नहीं लग रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं रिविजन की जरूरत है. ठीक है, ओके, चलिए. रिचर्ड डायर की कौन सी बुक है जिसमें इन्होंने सेलिब्रिटीज या स्टारडम की स्टडी की थी एंड ये ऑब्जर्व किया था कि हम जिस फिल्म या मूवी को देखने जाते हैं, आर परसेप्शन ऑफ द फिल्म, आर एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द स्टार जिसकी हम फिल्म देखने जा रहे हैं. ठीक है, दिस आइडिया वाज एक्चुअली गिवन बाय हिम इन हिज बुक. बुक का नाम ही स्टार्स था. बुक का नाम ही स्टार्स था. Stars is a 1979 publication, the first full-length book or study analyzing critical writing, advertising, and the film to explore how the perception of stardom shapes audiences' experiences of cinema. Next question for you people is, in which work does Richard Dyer examine the representational and reproduction of whiteness in visual culture from the Renaissance to the late 20th century? The representation of whiteness in cinema, in films. Whiteness. Next question. Richard Dyer, representation of whiteness. He says, see, if there is a middle class man and there's a middle class woman in a film, in a Hollywood film, there's a middle class man, there's a middle class woman, both of them are white. Okay? There's a woman, there's a man, both of them are white. तब भी in a film the woman will be shown to be whiter than the white man. ठीक है, so he says such is the kind of representation that happens in films, right? There is the element of race and there's also the element of beauty standards. The fairer the better, right? तो ये idea इन्होंने कहाँ दिया था? In his book White Essays on Race and Culture. That's your correct answer. Next question for you people.
कब की बुक है? 1997 की बुक है। स्टार कब का पब्लिकेशन था? 1979 का पब्लिकेशन था। स्टार बाय रिचर्ड डायर। नेक्स्ट बुक बाय हिम इज वाइट एसेज ऑन रेस एंड कल्चर, दिस इज 1997. Next question is Richard Dyer earned his doctoral degree, his PhD, at which institution which is closely connected to the foundations of culture studies? Pretty evident from the word founding of culture studies. तो रिचर्ड डायर ने अपनी PhD डिग्री इस इंस्टीट्यूट से अर्न की थी. नेम दैट इंस्टीट्यूट. कल्चरल क्रिटिक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, तो वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्रेडिट करते हैं फॉर द बर्थ ऑफ कल्चर स्टडीज. करो आंसर. Richard Dyer earned his PhD from CCCS at University of Birmingham. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में CCCS सेंटर फॉर कॉन्टेम्पररी कल्चर स्टडीज एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में. तो यहाँ से इन्होंने अपनी PhD डिग्री अर्न की थी. दैट्स योर करेक्ट आंसर. Dyer completed his doctorates in English literature at the University of Birmingham in CCCS. Before later holding a professorship in film studies at King's College London. Later, once he graduated from CCCS, he became a professor of film studies in London in King's College. ये भी important detail है. Heavenly Bodies, Film Stars and Society. ये भी Dyer की ही book है. This is also a work by Richard Dyer, the film critic. ठीक है. Heavenly Bodies, Film and Society, Film Stars and Society examines the constructed personas of which trio of stars. कौन कौन से stars की study की थी इन्होंने अपनी इस बुक में? That's your next question. चलो बताओ. आई रिमेम्बर एक नाम हमने एक्सप्लिसिटली क्लास में डिस्कस किया था, वन ऑफ दोज सेलिब्रिटीज. तो वो नाम अगर आपको याद है देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. नहीं, वो नाम भी दो जगह आ रहा है, दो ऑप्शंस में आ रहा है, सो कर लो पिक. Yes, one of them was Marilyn Monroe for sure. The other ones are Judy Garland and Paul Robeson. ठीक है, तो इन तीनों स्टार्स की स्टडी की थी रिचर्ड डायर ने in his study titled Heavenly Bodies, Film Stars and Society. That's your correct answer. Next question for you people is the anthropological method of thick description later adopted by new historicists, literary theorists and critics demonstrated in his essay Deep Play Notes on Balinese Cockfight was developed by which of these critics? Simple question क्या है? Thick description का idea किसने develop किया और कहाँ develop किया? In his work Deep Play Notes on the Balinese Cockfight. Sorry. क्लिफोर्ड गीट्स का आइडिया है थिक डिस्क्रिप्शन का, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो ये पास में आ चुका है. एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट थिक डिस्क्रिप्शन विद क्लिफोर्ड गीट्स ये क्वेश्चन पास में आ चुका है. ठीक है, ये एस्पेक्ट इसकी पूछी जा चुकी है. Although the term originated with Gilbert Ryle, students please note now. This is noteworthy. The term originates with Gilbert Ryle, लेकिन क्लिफोर्ड गीट्स ने क्या किया था, इसको फर्दर डेवलप कर दिया था इन हिज बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स 1973. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स 1973. इसी बुक में इनका ये बालिनीज कॉक फाइट वाला जो एसे था वो इसी बुक का पार्ट था. रिमेंबर, the essay is called Deep Play Notes on Balinese Cockfight. It was a part of his 1973 book, The Interpretation of Cultures. The writer's name is Clifford Geertz. However, the term was actually it originates with the philosopher Gilbert Ryle. Questions आपको दोनों figures के नाम learn करने हैं. ठीक है? Thick description. Yes, next question for you people is disability studies. अब से questions कहाँ से हैं? Disability studies ये भी हमने क्लास में cover किया है. Disability studies is an academic field. It drew its inspiration and impetus chiefly from which other fields? जैसे queer theory है. Queer theory drew its impetus from feminism, है ना? Feminism में से ही queer theory निकल कर आती है. जैसे feminist की demands थी of gender equality, तो queer theorists ने कहा कि how about our rights? How about the right of the queer people? So queer theory basically
drew its impetus, its inspiration from feminism. Likewise, disability studies also drew its inspiration from which of these? Okay. Linguistic and stylistics, feminist, race and queer studies, formalism and new criticism, और structuralism and semiotics. बच्चे जितनी भी activism वाली theories हैं, theories which seem to be questioning the status quo, theories that seem to be questioning a certain prejudice in society, आपकी disability studies वहीं से निकल कर आएगी ना. For example, feminism question करता है patriarchy को, the domination of women by men. ठीक है, तो ये एक्टिविज्म है एक तरह का. लाइकवाइज रेस थ्योरी क्वेश्चन करती है रेसिज्म को, और द सुप्रीमेसी, द आइडिया दैट व्हाइट इज सुप्रीम और बेटर देन द ब्लैक, राइट. क्वियर स्टडीज क्वेश्चन करती है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल क्यों माना जाता है, व्हाई नॉट होमोसेक्सुअलिटी. लाइकवाइज डिसेबिलिटी स्टडीज क्वेश्चन करता है दैट व्हाई इज सोसाइटी सो एबलिस्ट इन नेचर, व्हाई इज इट दैट हम एबल लोगों को कहते हैं कि ये नॉर्मल है एंड द अदर पीपल आर कंसीडर्ड अब नॉर्मल, राइट. So this is how disability studies comes into existence. Option number B आपका correct answer है. Disability studies कब develop होती है? 1990s के around develop होती है. Queer theory भी 1990s के around ही develop होती है. ठीक है, 20th century का last decade. Next question for you people is, the first US disability studies program was established in the year 1994 at which university? पहला प्रोग्राम, पहला एक्चुअल एकेडमिक प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था अमेरिका में 1994 में. डिसेबिलिटी की स्टडी के लिए प्रॉपर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक कोर्स स्टार्ट हुआ. तो कौन सी यूनिवर्सिटी में था? हार्वर्ड, साइरक्यूज, येल और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. ये सारा मेरे नोट्स में है बाय द वे, ठीक है. तो अगर नोट्स रिवाइज किए थे लाइक आई टोल्ड यू, तो क्वेश्चन काफी इजीली आंसर हो जाएगा. पहला यूएस डिसेबिलिटी स्टडीज प्रोग्राम यूएस में स्टैब्लिश हुआ 1994 वाज द ईयर एंड द यूनिवर्सिटी वाज इंडीड इट वाज साइरक्यूज यूनिवर्सिटी. नोट्स को ध्यान से पढ़कर आया करो. साइरक्यूज यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश द फर्स्ट डिसेबिलिटी स्टडीज प्रोग्राम, जिसमें पहली बार एकेडमिकली हमने डिसेबिलिटी को स्टडी किया. ठीक है, हमने पहली बार एकेडेमिया का पार्ट बना लिया द स्टडी ऑफ डिसेबिलिटीज. दैट वाज 1994 की बात है. यूएस की यूनिवर्सिटी है साइरक्यूज यूनिवर्सिटी. और आपको पता है जब किसी भी फील्ड को ऑफ स्टडी एकेडमिक सैंक्शन मिलती है तब वो क्या होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है. जस्ट लाइक कल्चर स्टडीज, कल्चर की स्टडी बहुत सारे क्रिटिक्स करते आ रहे थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब 1964 में कल्चर स्टडीज के लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बना था CCCS, तब कल्चर स्टडीज एज अ प्रॉपर एकेडमिक फील्ड बन गई थी. लाइकवाइज डिसेबिलिटी स्टडीज को जब पहली बार एकेडमिक अप्रूवल या सैंक्शन मिली थी 1994 में, तब जाकर इट बिकेम अ सेपरेट academic field in itself. Next question. The term crypt theory originates from which scholars 2003 article exploring queer and disabled identities. देखो अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, किम्बर्ली क्रेंशॉ का आइडिया था इंटरसेक्शनैलिटी का. यहाँ पर दो चीजें इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है. वन इज डिसेबिलिटी, द अदर वन इज क्वियरनेस. So the intersection of queerness and disability, this was studied by which of these figures, और उन्होंने ये आइडिया दिया क्रिप्ट थ्योरी का in the 2003 article. The idea of crypt theory, which comes out of an intersection of queer and disability studies. किसने दिया ये आइडिया? It was given by Rosemary Garland Thompson, Kerry Sandel, Robert McClure और Alison Kafer. ये मेरे नोट्स में क्लियरली गिवन है. उसके बाद भी गेस वर्क कर रहे हो ना तुम लोग. कैरी सैंडल इज योर करेक्ट आंसर. कैरी सैंडल्स 2003 आर्टिकल का टाइटल क्या था? क्वियरिंग द क्रिप और क्रिपलिंग द क्वियर. नाउ डू यू अंडरस्टैंड क्रिप थ्योरी क्या है? क्रिप इज क्रिपलिंग डिसेबिलिटी. So queering the crip or crippling the queer 2003 article which introduced the idea of crip theory, which is the intersection of queer theory and disability identities. Carrie Sandel is the correct answer. Next question. Robert McClure's influential 2006 work that explores cultural signs of queerness and disability together is called what? Robert McClure again did the same thing. Robert McClure also studied the intersections of queer theory and disability theory in his 2006 work. Name the work. Name the work.
अब क्रिप थ्योरी, कल्चरल साइंस ऑफ क्यूयरनेस एंड डिसेबिलिटी, ये तो वैसे भी कैरी सैंडल का वर्क है, तो इसको रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे ना। 3 वर्क्स बचे, सेक्स एंड डिसेबिलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडीज और फेमिनिस्ट क्यूयर एंड क्रिप बचे। ये भी मेरे नोट्स में मेंशन है। वो अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ, दैट्स अ डिफरेंट टाइटल। सो कैरी सैंडल का टाइटल है क्यूयरिंग द क्रिप और क्रिपलिंग द क्यूयर, और रॉबर्ट मैक्लूअर का टाइटल है, आई एम सॉरी, द वन दैट आई एलिमिनेटेड इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, माय बैड माय बैड, इट्स कॉल्ड क्रिप थ्योरी, द कल्चरल साइंस ऑफ क्यूयरनेस एंड डिसेबिलिटी, 2006 का वर्क है, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट्स योर करेक्ट आंसर। Please note, McClure's Crip Theory, The Cultural Science of Queerness and Disability, is a foundational text that brings together disability studies and queer theory at its intersections. तो दो थ्योरिस्ट हमने देख लिए, दोनों ने क्रिपलिंग क्या किया, डिसेबिलिटी एंड क्वियर थ्योरी का इंटरसेक्शन करके स्टडी किया। One of them is Robert McClure 2006, and then we have Carrie Sandel 2003. 2003, yeah. Carrie Sandel 2003 essay is called Crippling the Queer or Queering the Crip. Queering the Crip or Crippling the Queer. Right? That's an article. It's not a book length essay. Yeah, it's an article. 2003. Robert McClure's work is 2006 का work. Title क्या है? Crip Theory, Cultural Science of Queerness and Disability. Will you remember both these theorists? क्योंकि दोनों का सेम ही काम है, दोनों ने intersections of queer and disability को स्टडी किया है, याद रखोगे? Chalo, next question for you people is, disability rights advocates prefer the term disability over phrases like differently abled or specially abled because ये जो latter terms हैं ये problematic क्यों हैं? आज जब आप refer करते हो to somebody who has a disability, you refer to them by calling them person with disability. अभी अपने UGC NET के form में देखना, while you fill the form also, वहाँ पर option आता है people with disability, persons with disability. We never call them disabled persons, disabled people. No, we don't even call them specially abled or differently abled, right? These words, these terminologies ये पहले यूज हुआ करती थी, अभी वो यूज नहीं होती हैं, ठीक है, करंट यूसेज में यूज नहीं होती हैं। So why do we prefer the term people with disability over disabled, differently abled or specially abled? क्या problem है इस word में? Why do we not? Why have we discarded the usage of this phrase or this term? It focuses on the individual rather than on societal barriers and is seen as patronizing also, right? Suppose somebody cannot see and you call them specially abled. Do you think they are actually specially abled? No. So आपकी जो tone है, is trying to, it seems like it is trying to overcompensate for the lack, है ना? When you call somebody specially abled or they are special people, you are somehow driving the emphasis on the fact that they have a lack of something. So again, these terms are seen as patronizing one. These are also seen as focusing on the individual rather than the society. हमने क्या discuss किया था? Disability studies का core idea है that a disability is not a lack on the part of the individual, rather it's a lack on the part of the society. ठीक है? So हमने ये discuss कर लिया था. So it's not a defect. It's not a defect on the part of the individual. Human की defect नहीं होता disability. Disability defect किसका है? Of the society that makes it difficult for that human to navigate that society. So that's your correct answer. Next question is, Rosemary Garland Thompson's 1996 work examining physical disability in American culture and literature is titled which of these? Again, another work of disability studies, particularly in literature. ये देखो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज दिस इज स्टडीज ऑफ डिसेबिलिटी, बट इन लिटरेचर इट वाज डन बाय रोजमेरी गार्लैंड थॉम्पसन इन हर 1996 बुक. नेम द बुक. नेम द बुक. ओके. Extraordinary bodies, crib times, the matter of disability, or disfigured, or disfigured. The answer is Rosemary Garland Thompson. आंसर हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडीज, 1996 का वर्क, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. अच्छा, पूरा टाइटल इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है.
Garland Thompson's Extraordinary Bodies, Triggering Physical Disability in American Culture and Literature is a 1996 work of disability studies, particularly in literature. Particularly in literature. If I were you, I would have learned the name of the theorist, the name of the book, the subtitle of the book, and the publication year, which is 1996. Next question is from trauma studies. Disability studies के इतने questions हैं. अब next questions trauma studies के हैं. We have covered trauma studies in class. Trauma studies के दो broad schools भी हैं. हमने वो दोनों cover किए हैं. उनके theories भी cover किए हैं. That's your first question. Kathy Caruth's influential model of trauma, developed in works such as Unclaimed Experiences, characterizes trauma chiefly as which of these? कैथी करूथ की अकॉर्डिंग ट्रॉमा उन्होंने कैसे कैरेक्टराइज या डिफाइन किया है इन हर बुक अनक्लेम्ड एक्सपीरियंस. ओके, तो कैथी करूथ comes in the first model of trauma जो कहता है कि trauma is actually unrepresentable. रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि ट्रॉमा के दो स्कूल्स हैं ब्रॉडली ट्रॉमा स्टडीज के. स्कूल नंबर 1 सेज ट्रॉमा इज नॉट representable. ठीक है, ट्रॉमा इज सो इंटेंस an experience, so disruptive an experience that it cannot be verbalized through language, it cannot be articulated, it cannot be represented. तो कैथी करूथ आपके उसी वाले मॉडल में आती हैं. So trauma, according to Kathy Caruth, is an event that fragments the consciousness, that breaks apart your consciousness and resists direct linguistic representation. आप language के through directly trauma को completely represent नहीं कर पाते, right? चलो, she comes in what is called the Caruthian Freudian model of trauma studies. Caruthian Freudian model of trauma studies, which says trauma is very difficult to express. Next question for you people is, your next question is, before we continue with the next question, this is the victory batch. December 2026 का UGC NET का जो कोर्स है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं. क्लासेस हैं, नोट्स हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगी क्लासेस, बट लाइव क्लासेस होंगी आपकी डेली. माय क्लासेस आर गोइंग टू बिगिन ऑन जून 22. तो जून 22 को आपकी बिगिनर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी एंड 10th of July ऑनवर्ड्स आपकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं फॉर दिसंबर दे विल बिगिन. ठीक है, अगर आपको इसमें एनरोल करना है, टुडे यू हैव अ स्पेशल ऑफर. और आपको ऑफर को कहाँ से अवेल करना है, आपको करंट क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. इफ दिस डिसाइड्स टू मूव तभी तो हम जा पाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, बट चलो ठीक है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लेना. या देयर यू गो, मोर पर क्लिक कर लेना. वंस यू क्लिक ऑन मोर, अच्छा बाय द वे, इफ यू पीपल लाइक दिस क्लास डू मेक श्योर टू लाइक इट एज वेल. एंड यहीं पर आपके पास बच्चे लिंक होगा आपके दिसंबर बैच का. या हियर्स द लिंक, विक्ट्री बैच कंप्लीट दिसंबर बैच इंग्लिश एंड पेपर 1. इस लिंक पे क्लिक कर लेना. या फिर ऑफर के बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे. फ्लैट 60% ऑफ एंड 2 months फ्री एक्सटेंशन. वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके पास दो बेनिफिट्स हैं. अभी आप एनरोल करोगे तो आपके पास 60% ऑफ तो है ही ऑन द कोर्स प्राइसेस, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा 1 month का फ्री कोर्स मिलेगा. 6 months का कोर्स लोगे 1 month फ्री मिलेगा. 12 months का कोर्स लोगे 1 month फ्री मिलेगा. ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बाय अप्लाइंग द कोड. यहाँ पर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा. यू नीड टू अप्लाई द कोड AYESHAJRF, आयशा JRF. जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे, योर प्राइसेस आर गोइंग टू रिड्यूस नाउ. ठीक है. सेकेंड थिंग बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है ऑन 21st of June, उसकी डेट्स में आपको उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ. सो यू नीड टू एनरोल फॉर दी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. दिस इज योर लिटरल एग्जाम बिफोर द एक्चुअल NTA कंडक्टेड एग्जाम. तो इसका एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन का फ्री लिंक यहाँ पर है. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक और इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 1234567890. एनरोल फॉर फ्री. वंस यू क्लिक ऑन एनरोल फॉर फ्री, आपके पास 1 time पासवर्ड आएगा, उसको एंटर कर देना एंड यू बी एबल टू रजिस्टर. 21st जून को शार्प 6 PM आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम. ठीक है, इट्स एन एग्जाम बिफोर एग्जाम. इसको प्री नेट की तरह कंसीडर करना. ओके, दैट्स इट. या आई थिंक दैट्स इट.
और जितनी भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, उनके लिंक्स यहाँ पर हैं और उनके नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे. दिस इज द लिंक. तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको सारी की सारी क्लासेस के नोट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे. डन. तो यहाँ पे सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी लिस्टेड हैं. ये देखो, कल हमारा पार्ट नंबर 3 फिनाले पार्ट है. बाय द वे 8 AM कल सुबह आपका क्या है, आपका AI जनरेटेड जून 2026 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं इन द फ्री क्लास. आप इस क्लास को ज्वाइन कैसे करेंगे, इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास फ्री क्लास का लिंक है. क्लिक ऑन दिस फ्री क्लास लिंक एंड आपके पास कल की क्लास यहाँ पर है. AI generated June 2026 UGC NET English question paper finale will happen on June 18th at 8 AM. Done? Chalo, let's get back to your next question. Next question is All India mock test for UGC NET. This is your final mock test by Unacademy. In trauma theory, Kathy Caruth uses the term latency to describe which of these? Kathy Caruth says the experience of trauma and the actual memory of trauma coming back. इनके बीच में there's a period and she says that period is the period of latency. इसका term है, Kathy Caruth का term है. Remember, she says अगर आपके पास at point A you go through a traumatic experience. Let's say you have just witnessed a car accident where somebody very close to you has passed away. ठीक है? Imagine, right? It's hypothetical. Now, the actual moment when this traumatizing experience happened and the moment when this traumatizing memory comes back to you, there could be a period of latency. Latency क्या होता है? Your trauma could actually remain hidden. Like I told you this morning, the human mind has a tendency of denying the trauma in order to protect itself. So हो सकता है कि immediately आपको उस event का जो trauma है वो hit नहीं करेगा, but after a while it might come back, it might resurface. तो ये जो period है, ये जो gap है between the actual incident and the memory resurfacing, इस period को हम क्या कहेंगे? The period of latency. So the delayed arrival of traumatic symptoms after the event. ठीक है? आपने कभी कभी देखा होगा when somebody dies, कुछ लोग होते हैं they don't cry immediately. देखा है किसी के घर में डेथ होती है and there are some people who don't immediately cry about it. Right? They have a very different way of dealing with the idea of death. ठीक है? They'll mourn it, they'll grieve it, but later. Right? So that's a latency period. Sometimes when grief hits you, you don't let it sink inside. ठीक है? So there's a delayed arrival of traumatic symptoms of the event and this is called the latency period. The term was used by Kathy Caruth. Kathy Caruth एक trauma theorist है and she comes under what is called the school one of trauma, which says trauma is actually not representable through language. Next question for you people is Kathy Caruth's key text, which is called Unclaimed Experience, Trauma, Narrative and History, was published in which year? Was published in which year? Okay. Kathy Caruth's book is called Unclaimed Experience. टाइटल के साथ सबटाइटल लर्न कर लो, मैच करने के लिए आ जाता है. Trauma, Narrative and History. This book was published in the year 1991, 1996, 2000 or 2013 or 2013. The answer is 1996 MG. ठीक है? किस किस का बर्थ ईयर 1996 है? Anyone who was born in 1996? ऐसा भी है कोई जिसका बर्थ ईयर ही 1996 है? I'm gonna have to sip a lot of coffee today during the class, ठीक है? So you'll have to bear with me on that because this is what is going to keep me fueled through the 5 hours. Okay. Chalo. Next question for you people is, which trauma theorist and their work distinguishes between type 1 trauma and type 2 trauma,
सेट आउट इन द बुक ट्रॉमा एंड रिकवरी। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। कौन सी ट्रॉमा थ्योरिस्ट का आइडिया है कि देखो ट्रॉमा कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दस टाइप 1 ट्रॉमा जो कि एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से इंड्यूस हो जाता है। दस टाइप 2 ट्रॉमा जो कि रिपीटेड इंसिडेंट्स की वजह से इंड्यूस होता है। ठीक है, टाइप 1 ट्रॉमा, टाइप 2 ट्रॉमा। सो ये आइडिया किसका है? एंड दिस आइडिया हैज बीन गिवन बाय दिस थ्योरिस्ट इन द बुक कॉल्ड ट्रॉमा एंड रिकवरी। ट्रॉमा एंड रिकवरी। Type 1 trauma is single incident trauma. Type 2 trauma is complex or repeated traumas. आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका जो इंड्यूस हुआ ट्रॉमा दैट इज टाइप 1 ट्रॉमा, जो एक इंसिडेंट की वजह से हो गया। ठीक है, बट इमेजिन द सेम इंसिडेंट हैपेंस टू यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1 year और 10 years। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिपीटेड ट्रॉमा इंड्यूस हो जाएगा दैट इज कॉल्ड टाइप 2 ट्रॉमा। दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय Judith Lewis Herman. Judith Lewis Herman, that's your correct answer. Yep. Judith Lewis Herman in Trauma and Recovery distinguishes between type 1 and type 2 traumas. Also outlines a 3-stage model of trauma recovery. How many of you remember? हमने क्लास में डिस्कस किया है. Judith Lewis Herman does not simply talk about the two kinds of trauma. Also goes on to say that trauma को recover करने के लिए there are 3 steps. And then elaborates those 3 steps. हमने तीनों steps भी क्लास में डिस्कस किए थे, है ना? चलो, the pluralistic model of trauma associated with scholars like Naomi Mandel. Students, ये दूसरा वाला school of trauma studies है. जो कैथी करूथ वाला स्कूल है वो पहले वाला है. The second school of trauma studies is called the pluralistic model of trauma studies. This school believes, यही क्वेश्चन है, अच्छा यही क्वेश्चन है, so I won't answer the question, but हाँ, pluralistic model of trauma studies में कौन कौन theorist हैं? Naomi Mandel and Anne Betkovich. चलो बताओ. Pluralistic model of trauma says trauma always has a clear cultural context or trauma is necessarily unspeakable or unrepresentable. ये तो स्कूल नंबर 1 हो गया ना, ये तो कैथी करूथ वाला स्कूल हो गया, तो इसको रिमूव कर देते हैं. That trauma cannot affect the collective identity or the trauma studies began in 1990s. Pluralistic model of trauma says that trauma is अच्छा क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, द क्वेश्चन सेज कि प्लूरलिस्टिक मॉडल ऑफ ट्रॉमा किस आइडिया को चैलेंज करता है? तो जो मॉडल नंबर 1 था उसके आइडिया को चैलेंज करता है. मॉडल नंबर 1 का आइडिया क्या था? दैट ट्रॉमा इज नेसेसरीली अनस्पीकेबल और अनरिप्रेजेंटेबल. दैट्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है, कौन कौन से मेजर फिगर्स हैं, थ्योरिस्ट्स हैं जो स्कूल नंबर 2 में आते हैं, प्लूरलिस्टिक मॉडल में आते हैं? यू हैव नाओमी मैंडल एंड यू हैव एन बेटकोविच. दोनों के नेम्स लर्न कर लो. ठीक है, फर्स्ट वाले में कौन थी? कैथी करूथ थी. यहाँ पर कौन है? नाओमी मैंडल एंड एन बेटकोविच. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज नाओमी मैंडल्स बुक अगेंस्ट द अनस्पीकेबल 2006 की बुक है, argues that treating trauma as inherently unspeakable functions as a what? Naomi Mandel's 2006 book Against the Unspeakable argues that treating trauma as inherently unspeakable functions as which of these? Okay. Well, she says जब हम ये कहते हैं that trauma cannot be expressed or represented, हम ये भी कह रहे हैं कि discursive production that evades moral responsibility in representing atrocity. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे, अगर आप ये कह देते हो कि ट्रॉमा इज सो डिसरप्टिव एन इवेंट कि इसकी तो बात ही नहीं की जा सकती, ठीक है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रॉमा, है ना? तो आप डिस्कर्सिव प्रोडक्शन, समथिंग दैट कैन पोटेंशियली बी टॉक्ड अबाउट, इज सिंपली बीइंग डिसमिस्ड. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट. ठीक है, सो शी सेज जब हम ये कहते हैं that trauma cannot be represented, what are we doing? हम क्या कर रहे हैं? We are actually evading the moral responsibility in representing such an atrocity जिसकी वजह से ultimately trauma cause हुआ in the first place. So she says it is our ethical responsibility that we need to represent trauma as much as it is possible. बच्चे स्कूल नंबर 2 जो आपका प्लूरलिस्टिक स्कूल है,
It does not say that trauma can be completely represented through language, but it definitely also does not believe in the idea of the school number one, which says trauma is completely unrepresentable. Pluralistic school and the theorists who come under pluralistic school like Naomi Mandel, they say that trauma can be represented to a certain extent at least. Next question for you people is, next question, which term coined by Cheryl Glotfelty? अब आपका ना next वो start हो चुका है. I can't name it because वही आंसर है, बट आपका एक और कल्चर स्टडीज के अंदर एक और सब थ्योरी आती है, वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके क्वेश्चंस आएंगे. So which term coined by Cheryl Glotfelty and associated with ASLE? With ASLE, who is going to tell me the full form of ASLE? ये मेरे notes में से question है. Refers to the study of relationship between literature and physical environment. Cheryl Glotfelty gave us a term to discuss the relationship between literature and environment. What is that term? क्या है वो term? What is that term? Yes, it is eco-criticism. It is eco-criticism. Eco-criticism क्या है? जब आप किसी भी literary work को पढ़ेंगे, novel को पढ़ेंगे, to understand the representation of environment, the representation of nature, not as a background, ठीक है? आपके romantic age के writers के लिए nature क्या थी? Simply एक inspiration थी, है ना? यहाँ पर बच्चे जब आप eco-critical reading करते हो किसी भी literary text की, could be a novel, could be a play, could be a poem, तो आप environmental concerns को study कर रहे हो, ठीक है? जितना important society है novel में, जितने important humans हैं, उतना ही importance आप किसको भी देते हो? Environment को भी देते हो, environmental concerns को भी देते हो. Next question, अच्छा देख लो, eco-criticism is a term popularized by Cheryl Glotfelty in the Eco-criticism Reader in 1996, and this idea is central to ASLE. What is ASLE? Association for the Study of Literature and Environment. बच्चे इसमें से आपके पास question आ सकता है कि eco-criticism के लिए आपके पास एक separate association है, which is called ASLE, Association for the Study of Literature and Environment. Next question for you people is, Lawrence Buell's concept of an environmentally oriented work outlined in their work The Environmental Imagination 1995, ये भी eco-criticism का question है, insists that non-human nature should be treated as dash. Lawrence Buell. Lawrence Buell. Okay, next question, please start answering. ठीक है, चलो. The answer is, of course, Lawrence Buell in The Environmental Imagination 1995 insisted that non-human nature should be treated as a present, suggesting human history is implicated in natural history. ठीक है? So let's not assume that nature or environment is simply a background, simply a context, simply a setting. Let's also study environment and prioritize it as much as we prioritize the study of humans in literature. That's the core idea of eco-criticism. Major representative eco-critics are Jonathan Bate, Lawrence Buell, and you have Cheryl Glotfelty. ठीक है? Cheryl Glotfelty eco-critic है. उनका वर्क कौन सा है बच्चे? उनके वर्क का नाम है the Eco-criticism Reader. Then you have Lawrence Buell, The Environmental Imagination. Next question for you people is, which eco-critical concept describes the slow, often invisible environmental harm that unfolds gradually across time as theorized by Rob Nixon? रॉब निक्सन ने कहा कि कभी-कभी environmental harm बहुत ही evidently visible नहीं होता because it unfolds slowly and gradually. ठीक है? So you don't see it happening that clearly. So what was the term that Rob Nixon uses for this eco-critical concept? Next question. Deep ecology, slow violence, third space और heterotopia. Heterotopia तो देखो विशेल फुको का टर्म है, डिस्कस कर लिया था. heterotopia मतलब डिफरेंट स्पेसेस जो कि रेगुलर स्पेसेस के रूल से ऑपरेट नहीं करते, वो heterotopia में आते हैं, जैसे कि prisons, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि cemeteries also, graveyards also.
थर्ड स्पेस किसका कॉन्सेप्ट है, एडवर्ड सोया का कॉन्सेप्ट है। एडवर्ड सोया ने फर्स्ट स्पेस की बात की, सेकंड स्पेस की बात की एंड थर्ड स्पेस की बात की। डीप इकोलॉजी भी यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। द स्लो एक्ट और द ग्रेजुअल एक्ट, जिस तरह से एनवायरमेंटल हार्म होता है जो कि ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, इसके लिए जो रॉब निक्सन ने टर्म यूज किया था दैट इज स्लो वायलेंस एंड दिस इज अ वेरी एप्ट टर्म। आई थिंक इट्स अ टर्म जो आपकी एक्चुअल वायलेंस को डिस्क्राइब करता है, बिकॉज वी आर इंडीड इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस ऑन एनवायरमेंट, बट वो स्लो है ना, but it is indeed violence inflicted by humans on the environment. So Rob Nixon calls it slow violence. Rob Nixon's Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. The name of the work is, complete work का नाम क्या है, 2011 का work है, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. He coined the term slow violence to describe gradual attritional environmental destruction that is often invisible to traditional narrative and media attention. ठीक है, डन। अगर ये नया राइटर है, पहली बार सुना है इनका नाम, तो लर्न कर लो। रॉब निक्सन, बुक का नाम क्या है, स्लो वायलेंस एंड एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, 2011 is the publication year. Next question is also from eco-criticism. The philosophical movement known as deep ecology, associated with Arne Naess, is distinguished from the mainstream environmentalism. How is Arne Naess's deep ecology different from the traditional environmentalism idea? Next question. Also a question from eco-criticism. चलो, focus solely on economic cost benefit analysis of conservation. Deep ecology. Why would deep ecology focus solely on economic cost benefit? Rejection of the non-human centered view. Okay. अगर बच्चे इकोलॉजी पर फोकस है तो नॉन ह्यूमन सेंटर्ड व्यू का रिजेक्शन। ओके। Insistence on the intrinsic value of all living beings, not just their utility to humans. Okay, हाँ. And extensive focus on urban green spaces. Deep ecology is different from mainstream environmentalism because it insists on the intrinsic value of all living beings, not simply as a utility to humans. बच्चे हम क्या कहते हैं, humans are at the center of the world. ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है बेसिकली क्या है, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है। अच्छा, इसी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को पोस्ट ह्यूमनिज्म भी चैलेंज करता है, इसी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को इको-क्रिटिसिज्म भी चैलेंज करता है। ठीक है, द आइडिया इज दैट ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स वर्ल्ड में जितनी भी और चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो नॉन ह्यूमन चीजें हैं, लाइक नेचर, like environment and like animals, all these things are basically there only to serve us, ठीक है, only to be of some use to us. The river is there for us, the mountains are there for us, the trees are there for us, the animals are there for us. ठीक है, the idea that we can put up animals in a zoo for our entertainment is a very anthropocentric idea when you think about it. The idea that we can make a spectacle out of animals living in their natural habitat, don't you think? The idea that animals living in the natural habitat are something to be looked at for entertainment, that is also a very anthropocentric idea. ठीक है, तो anthropocentrism को critique करता है आपका deep ecology, which was championed by Arne Naess. Next question for you people is Greg Gerard's widely used introductory text mapping key tropes such as wilderness, apocalypse and pastoral within environmental literary criticism is titled what? Greg Gerard का कौन सा वर्क है जिसमें उन्होंने स्टडी किया है wilderness को, apocalypse को, apocalypse क्या होता है, the end of the world, and pastoral को within environmental literary criticism. See, this is not just eco-criticism, this is eco-criticism in literature. ठीक है, this is not simply eco-criticism, ये इको-क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर है। ओके, ग्रेग गेरार्ड्स वर्क इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इमेजिनेशन। तो इनका वर्क नहीं है, ये तो अभी डिस्कस किया था हमने, तो इसको रिमूव कर देते हैं। स्लो वायलेंस भी इनका वर्क नहीं है बच्चे, अभी डिस्कस किया था, है ना।
इको क्रिटिसिज्म रीडर, वो भी इनका वर्क नहीं, तो क्या बचा? इको क्रिटिसिज्म। इनके बुक का नाम ही इको क्रिटिसिज्म है। इट्स अ 2004 publication. Greg Gerard's Eco Criticism is a 2004 publication. It's a key introductory text that organizes eco-critical inquiry around reoccurring or recurring tropes, including pastoral, wilderness, and the apocalypse as well. Next question is from media studies. Again, culture studies के अंदर हमने क्या study किया था? Media studies. So now you have a question from media studies and also a question from the father of culture studies. Who is called the father of culture studies? We have reserved this label for, ये label हमने किसके लिए reserve किया है? Father of culture studies का label हमने reserve किया है Stuart Hall के लिए, ठीक है? Although Stuart Hall was not the first director, he was not the founding director of CCCS, still इनका contribution ज़्यादा है, तो हम कहते हैं he is the father of culture studies. In his encoding decoding models, he identified three possible ways of audience and their reading positions. Which of these is not one of the three positions? Dominant hegemonic reading, negotiated reading, oppositional reading, deconstructive reading. Multiple times हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके बाद तो ये गलत होना ही नहीं चाहिए. स्टुअर्ट हॉल ने कहा था कि मीडिया के मैसेजेस को ऑडियंस इंटरप्रेट कर सकती है तीन तरीके से. पहला तरीका है आपका जो इंटरप्रिटेशन है एग्जैक्टली अलाइन करता है विद द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द प्रोड्यूसर द मैसेज. मैसेज जो प्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर ने, उनका जो इंटेंडेड मीनिंग था, जो डोमिनेंट मीनिंग था, जो वो चाहते थे कि आप माने, अगर आप उसी को मान लेते हैं तो आपने डोमिनेंट हिजेमनिक रीडिंग कर ली है, ठीक है? आपने क्वेश्चन नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, ब्लाइंडली उस मीडिया मैसेज को कंज्यूम कर लिया और सच मान लिया. दैट इज डोमिनेंट हिजेमनिक रीडिंग. कभी कभी आप क्या करते हो, आप बहुत एंटी मीडिया मैसेजेस हो जाते हो. आप कहते हो कि मीडिया के मैसेजेस में तो झूठ बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट्स में झूठ बताया जाता है, या फिर मीडिया सोशल मीडिया में झूठ आता है. सो यू चूज नॉट टू बिलीव एनी ऑफ इट. अगर आप उसमें से कुछ भी बिलीव नहीं करते, राइट, एंड यू इंटरप्रेट इट इन सच अ मैनर, तो आपने क्या किया? कंप्लीटली उसको अपोज कर दिया. एंड दिस इज एन ऑपोजिशनल रीडिंग ऑफ मीडिया मैसेज. एंड तीसरी तरीके का मीडिया इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, जिसमें आप बच्चे क्या करते हैं? यू नो that some part of it could be true while some of it could also be fabricated. So this balanced out approach is called negotiational reading. ये तीनों इसकी बात की थी हमारे स्टुअर्ट हॉल ने. इसको हमने लर्न किया है DON के साथ, डॉन के साथ, D for dominant, O for oppositional, N for negotiational. However, deconstructive reading is not one of the answers. ठीक है? Next question for you people is Kimberly Crenshaw is most ये आइडिया तो हो गया ना, ये दोबारा से कैसे घूम के आ गया? ठीक है, क्वेश्चन बच्चे घुमा कर आ गया. किम्बर्ली क्रेंशॉ इज मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर व्हाट आइडिया? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी ये किया था, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शनैलिटी. आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडिथ बटलर. क्वेश्चन कहाँ से है? क्वियर थ्योरी. ठीक है, जूडिथ बटलर Butler's theory that gender is actually constructed through repeated ritualized actions rather than being a fixed essence is known as what? Butler ने कहा कि देखो, gender एक fixed चीज नहीं है, static चीज नहीं है. Gender is dynamic. Gender is actually a process. Gender can be subject to changes. Gender is always in process. ठीक है, you can always become something. You can become something. And the act of becoming, that means what? That means आप हमेशा gender को क्या करते हैं? आप gender को perform कर रहे हैं, ठीक है? You wear a sari, you become feminine. You wear pants, you wear oversized clothes, you wear a cap, you become masculine, है ना? So she says gender is basically a performance, ठीक है ना? Sometimes you act feminine, sometimes you act masculine. So she says gender is not something that is prescribed to you at birth. It's not pre-given. It is something that you construct as part of your daily life. The kind of clothes that you wear, the way you carry yourself, the way you speak, your preferences, the kind of taste that you have in films, everything makes up your gender. So gender performativity or gender is a performance. This idea was given by Judith Butler. ऐसा similar idea पहले Simone de Beauvoir दे चुकी थी when she said that one is not born a woman, one becomes a woman. And the idea of becoming a woman instead of being a born one, right? That is also an idea that hints at the later idea that would become gender performativity. Okay? Gender performativity by Judith Butler. The rise of digital humanities as a new trend in English literature studies primarily refers to which of these?
इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज में अब आपके लिए पोटेंशियल इन वो भी हो सकता है, पीएचडी का एक स्कोप भी है यहाँ पर। तो इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज में डिजिटल ह्यूमैनिटीज क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल ह्यूमैनिटीज? यस रूपश्री बच्चे, जेंडर इज अ परफॉर्मेंस, जेंडर इज परफॉर्म्ड, ठीक है। महिमा कह रही हैं हेलो मैम, आपका व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा, प्लीज हेल्प। महिमा, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में yesterday I did drop a link to join the WhatsApp channel because temporarily the Telegram channel is not going to work, of course, because Telegram is not going to work. So the link is there. If you can still open the chat, go there and click on the link and you'll be able to join. अगर नहीं ओपन हो रहा है तो बच्चे you'll have to manage. और I'll try कि मैं उसका लिंक किसी YouTube कमेंट में, इसी क्लास की कमेंट में दिलवा दूं, तो उसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है। Yeah. So the rise of digital humanities in English literature studies क्या है? The application of computational tools and digital methods to literary analysis and archiving. Now you people tell me, could you have ever imagined कि literature की studies के लिए भी आपको computational tools का use करना पड़ेगा? I mean, when you think of computational tools, right, you think of statistical data, है ना? You think of a lot of data, numbers, right, or a lot of data that could potentially be used in researching for maths or physics or science or other things. Definitely not literature. However, जब आप इन्हीं computational tools का use करते हैं, digital methods का use करते हैं literature के analysis के लिए, इसको हम बोलते हैं digital humanities, ठीक है। The application of computational tools and digital methods to literary analysis and archiving is called digital humanities. इसमें क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं? टेक्स्ट माइनिंग, डिजिटल आर्काइविंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये आपको हेल्प करता है कंप्यूटेशनल टूल्स ये सारी के सारे टास्क को अकम्प्लिश करने में। Okay, next question for you people is, world literature is contemporary critical framework revived through scholars like David Demrosh primarily emphasizes which of these? When we use this word world literature, what are we actually focusing on? And this idea has been revived by scholars like David Demrosh. David Demrosh. Okay. Literature written exclusively in English. फिर वो world literature कैसे हुई? The rejection of comparative approaches. बच्चे comparative approaches जितना ज़्यादा literature confined to national canons only, again वो भी literature, world literature कैसे हुई? The circulation and reception of literary works beyond the culture of origin. For example, Shakespeare being adapted for Indian films is basically a kind of culture transcending boundaries, right? So culture, जिस culture में literature originate होती है, उससे beyond जाकर जब वो work circulate होता है, for example, Han Kang writes a novel called The Vegetarian, but in Korean language. ठीक है? The Vegetarian is a novel by Han Kang that was written in Korean language. Do you think the world would have been able to read this work had it not been translated into other languages, including English? है ना? तब जाकर इसको क्या किया? International acclaim मिला because it was also awarded the International Booker Prize after translation. Right? That means circulation and reception of literary works beyond the places where they originate. The work originates in Korea, but only when it was circulated and received in other places did it actually get international acclaim. So that is called world literature. Next question. Edward Glissant's concept of relation and tout monde, whole world, as elaborated in Poetics of Relation 1990, is most directly opposed to which other concept in cultural theory? Okay, I've tried कि हर एक question आपके लिए नया हो, fresh हो, so that you also take something new from today's class. Otherwise, बच्चे जो आपके पास वो चीजें हैं जो आप already जानते हैं, I could have easily brought those questions. वो भी questions हैं class में, but I also wanted to add to your existing knowledge ताकि आप कुछ नया भी लेकर जाएं. हो सकता है आपने जो आज चीजें पढ़ी हैं एग्जाम में आ जाएं, एंड बिकॉज यूजली क्या होता है, कल्चर स्टडीज इज अ न्यूअर यूनिट, राइट? तो कल्चर स्टडीज को यूजली बच्चे इतना ध्यान नहीं देते,
और उसमें जितनी भी सब टॉपिक्स हैं, डिसेबिलिटी, ट्रॉमा, स्पेस थ्योरी तो समटाइम्स बच्चे पूरी तरह स्किप करके चले जाते हैं. देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेस थ्योरी, क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये सब कुछ पढ़ा करो. मॉल मॉल कल्चर से क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. या तो एडवर्ड ग्लिसर्न का कॉन्सेप्ट है रिलेशन एंड टाउट मॉन्डे. हाउ इज इट डिफरेंट और हाउ इज इट अपोज टू दी अदर आइडिया इन कल्चर थ्योरी, जिसके अगेंस्ट है ये. कौन से आइडिया के अगेंस्ट है ये? एसेंशियलिस्ट नेग्रीट्यूड ऑफ एम्स देयर. बच्चे एम्स देयर का नेग्रीट्यूड मूवमेंट क्या था? नेग्रीट्यूड का आइडिया क्या था? इट वाज एन आइडिया व्हिच सेज वी आर नॉट गोइंग टू एसिमिलेट. हमें अपनी आइडेंटिटी को क्या करना है? सेपरेट करना है ना. लेकिन आपका एडवर्ड ग्लिसर्न का आइडिया क्या है? वो उल्टा आइडिया है. इट सेज द वर्ल्ड इज एक्चुअली ऑलरेडी कनेक्टेड, तो सेपरेट करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. तो ये ऑपोज हो गया ना. The essentialist negritude of Ames is there. Glissant's relation proposes an open, unpredictable creolization of all the cultures in Caribbean and beyond, a tout monde, a whole world, interconnected, non-hierarchical differences. This is explicitly opposed to the essentialist negritude idea that was proposed by Ames Césaire and Leopold Senghor, which sought to reclaim a fixed African identity, a fixed African essence. तो नेग्रीट्यूड सेपरेटिज्म पर फोकस कर रहा था, लेकिन आपका जो ग्लिसैंट का आइडिया है रिलेशन का, वो क्या कहता है कि all of us are any which ways interconnected, so there is no possibility of separation. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है राइटर्स को, इंडियन राइटर्स को, विद द इयर्स इन विच दे वर अवॉर्डेड दीज अवार्ड्स, दीज प्राइजेस. बुकर ज्ञानपीठ अवार्ड. सबसे पहले तो सबसे इजी क्या है? The only writer in this list, the only Indian writer in this list to not have won a Booker is अमिताभ घोष. अगर आपको years नहीं भी पता है, ये तो पता होगा ना कि अमिताभ घोष को कभी बुकर नहीं मिला है. ठीक है. तो बाय दैट लॉजिक अमिताभ घोष को बुकर के साथ मैच ही नहीं करना, तो अमिताभ घोष को मैच करना पड़ेगा ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ. एंड ऑल्सो डू रिमेंबर 2018 में जब अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू रिसीव दिस अवार्ड. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो 4 को आपने मैच कर दिया डी के साथ. अरुंधति रॉय, अगर हम सलमान रुश्दी को कंसीडर ना करें, तो अरुंधति रॉय इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन द बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हर डेब्यू नॉवल इन 1997 which was 1997 बुकर. तो आप 1 को मैच कर दो सी के साथ. ठीक है. किरण देसाई को अपनी सेकंड नॉवल के लिए बुकर मिला था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में, तो इसको मैच कर दो ए के साथ. अरविंद अडीगा फॉर वाइट टाइगर इन 2008, इसको मैच कर दो इसके साथ. बाय दैट लॉजिक ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. डन. चलो हो गया. क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, इजी था. इफ यू सिंपली न्यू दैट अमिताभ घोष हैज नेवर एवर वन द बुकर प्राइज, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता. चलो ठीक है, एक बार को तुम्हें नहीं याद है कि ईयर्स क्या है. आपको ये पता है अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर मिला है, किरण देसाई को इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है, व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडीगा को मिला है. बट यू डोंट रियली रिमेंबर द ईयर्स. एटलीस्ट यू डू नो दैट अमिताभ घोष हैज नेवर रिसीव्ड द बुकर. दैट शुड हैव बीन योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आंसर. ठीक है. चलो, which of the following best describes the idea of arbitrariness in human language? Human language is arbitrary. ये arbitrariness का, randomness का idea actually है क्या? This is an idea जो कि structuralism का core idea है, structural linguistics का core idea है, Ferdinand de Saussure का idea है. ऐसा नहीं है बच्चे कि ये idea कभी किसी और के mind में नहीं आया था. ठीक है. I know एक बार क्लास में जब मैंने ये idea पढ़ाया, तो one of the students said कि मैम Saussure did not propose something जो इससे पहले किसी और ने नहीं सोचा होगा. ऑब्वियसली हम भी ये सोचते हैं कि कैट का नाम डॉग भी हो सकता था. अ पेन कुड हैव बीन कॉल्ड अ प्लेन. ठीक है. अगर हमने एक पेन का नाम प्लेन रखा होता तो उसको आज हम प्लेन कहा करते. राइट. व्हाट वी कॉल अ पेन टुडे कुड हैव बीन नेम्ड अ प्लेन हैड वी नेम्ड इट प्लेन इन द फर्स्ट प्लेस. बट हमने रैंडमली या आर्बिट्ररीली एक चीज के साथ एक नाम असाइन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इस चीज का नाम ट्री क्यों है? देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. हमने आर्बिट्ररीली इस चीज को ट्री कह दिया, सो इट बिकम्स अ ट्री. राइट. So this idea was first proposed in linguistic terms by Ferdinand de Saussure. He was definitely not the first human
to whom this idea had occurred. I'm pretty sure ये idea बहुत लोगों के mind में आया होगा, but उन्होंने conceptualize किया था by saying that human, the linguistic sign is actually arbitrary. The connection between signifier and signified is completely random. There's no logic why a tree is called a tree. There's no logic why a cat is called a cat. So there's no natural or inherent connection between a linguistic sign and its referent. That's the correct answer. The term phoneme refers to what? The term phoneme refers to what? नेट को सेट भी कह सकते हैं और सेट को नेट भी कह सकते हैं, कह तो सकते हैं. The term phoneme refers to what? Phonology study किया है, which is one of the levels of study of language. Language की study को हम करते हैं काफी सारे levels पर. तो ये हमने study किया है, language unit number 5 है आपकी क्लास में study की है. तो levels of study of language, ठीक है, जिसको आप linguistics कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, linguistics. Study of language or linguistic happens on multiple levels, starting with the smallest or unit. Smallest unit को जब आप study करते हो, that is called phonology. Study of sound, ठीक है, that is phonology. Another study of sound is also called phonetics. Phonetics होता है the sound in your mouth. जब आप actually उसको articulate करते हो sound को, that is phonetics. The sound in your mind, जब आप उसको as an abstract idea सोचते हो, that is phonology. Phonology, phonetics के बाद जो next आपका जो bigger unit है language का, sounds के मिलकर क्या बनता है, word बनता है. The study of the form of the word is called morphology. So morphology is your next level of study of language. Morphology के बाद क्या होगा, the combination of words gives us a sentence. और sentence के structure को study करने के लिए आपके पास जो field आती है, जो academic field आती है, that is called syntax. अब जब sentence form हो ही चुका है तो ultimately आपको उसका meaning find करना है. In order to find the meaning, जो meaning की study करते हैं उसके भी दो fields हैं. We have what is called semantics and we have pragmatics. हमने क्लास में इन सारे के सारे लेवल्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, बट आपको इनको लर्न करना है इसी ऑर्डर में. सिमेंटिक्स होता है द स्टडी ऑफ लिटरल मीनिंग, सरफेस मीनिंग, और प्रेगमेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की स्टडी. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोनोलॉजी में हम कहते हैं कि जो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट इज फोनीम. So phoneme is the smallest unit of sound that can distinguish meaning in language. For example, VAN is van, PAN is pan. What did I do? I simply changed one sound and the entire meaning of the word changes. So this meaning distinguishing sound is actually called the phoneme. Okay? It is the smallest unit of sound. Okay, next question. English is considered a synthetic language. A synthetic language is express grammatical relationships primarily through word order rather than inflectional suffixes. करो इसको answer. I'll just get water for myself. ठीक है? We have a lot many questions to do, but answer this while I'll quickly get water.
ठीक है, ऑल राइटी, हो गया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, nobody did any extra talking. You people are good students, है ना? ठीक है, am I audible clearly students? एक बार कंफर्म कर दो. Yeah, so the correct answer is both of them are actually false. English is not a synthetic language. English is what is called an analytic language or an isolating language. Analytic languages use word order and auxiliary words to convey grammatical relationships. तो आपका English एक synthetic language नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज you need to match the linguistic theories with their proponents. Linguistic theories कौन कौन सी हैं? Transformational, generative grammar. Most commonly asked theory यही है, ये हर बार आ जाती है nearly. Systemic functional grammar, Sapir-Whorf hypothesis and speech act theory. Match कर दो इन theories को with their proponents. Next question. Speech act theory कहती है कि देखो आपको हमेशा बताया गया है कि बात से काम नहीं होता, लेकिन कभी कभी बात से काम हो जाता है. ठीक है, if I say I request you, apparently I have actually performed an action in saying so. बस इतना कहने में कि I request you or I promise you, right? है ना? I have committed an action. If I say I fire you, I have committed an action, right? तो ये आपका स्पीच एक्ट थ्योरी कहता है. इसमें आपके 3 एक्ट्स आते हैं, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी, परलोक्यूशनरी, और इसको प्रपोज किया था जेएल ऑस्टिन ने. इसको फर्दर डेवलप किया था सर्ल ने, ऑस्टिन एंड सर्ल. ठीक है, दोनों के नाम याद रखना, ऑस्टिन प्लस यहाँ पर ऐड कर देते हैं सर्ल एज वेल. तो 4 को मैच करेंगे विद बी. फिर है सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस. सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस नाम बच्चे ये तो वैसे ही एविडेंट हो गया ना, सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस. सो सी को मैच कर देंगे डी के साथ, बेंजामिन ली वॉर्फ. अच्छा, सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस क्या कहती है? इंटरेस्टिंगली इट सेज that language is not simply a medium of expressing the existing world. Language also constructs the world. ठीक है, do you believe in that? Do you believe कि language आपका world construct करने में भी आपको help करती है? For example, आपका जो world का perception है वो आपकी language के through affect होता है. ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर तो देखो वैसे ही सबको पता है, अमेरिकन लिंग्विस्ट नॉर्म चॉम्स्की का है. बाय दैट लॉजिक मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा. माइकल हैलिडे का, माइकल माइकल हैलिडे. ठीक है, सिस्टमिक फंक्शनल ग्रामर. Okay, next question for you people is you need to consider these statements about Creole languages. Creole, Pidgin, Register, Jargon. ये 4 टॉपिक्स में से an idiolect and dialect, an accent and accent. कहोगे मैम सारे टॉपिक्स बता दिए, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से नेट हर बार क्वेश्चन पूछता है. सो आई एम गोना जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक्स हियर. इडियोलेक्ट विच इज इंडिविजुअल डायलेक्ट. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है. डायलेक्ट, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा इन योर यूनिट नंबर 5 लैंग्वेज. रजिस्टर, जार्गन, रजिस्टर एंड जार्गन, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, क्रियोल एंड पिजन. Favorite topics of NTA, Creole and Pidgin, and the process of creolization also. I'm going to write the process of creolization also. Favorite topics हैं ये NTA के. इसमें से questions repeatedly देखे गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से cover करके जाना है. चलो, a Creole develops when a Pidgin becomes the first language of a speech community. Pidgin क्या होती है? Pidgin होती है एक trade language. पिजन होती है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी काम के लिए, किसी ट्रेड के लिए, किसी बिजनेस के लिए बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल नंबर 1 फ्रॉम प्लेस नंबर 1 वांट टू हैव सम काइंड ऑफ ट्रेड विद पीपल नंबर 2 फ्रॉम प्लेस नंबर 2. तो इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज. ठीक है, तो वो क्या करेंगे? दे हैव टू कम अप विद अ थर्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज. जुगाड़ वाली लैंग्वेज इनको बनानी पड़ेगी, तो ताकि एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन पॉसिबल हो पाए और ट्रेड पॉसिबल हो पाए. ठीक है, तो दैट ट्रेड लैंग्वेज जो कि एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बनाई जाती है, दैट इज पिजन. पिजन किसी भी पीपल की, ना पीपल 1 की ना पीपल 2 की नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनकी मदर टंग नहीं है. हाउएवर, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि द चिल्ड्रन ऑफ दीज पीपल दे माइट एंड अप स्पीकिंग द लैंग्वेज विच इज पिजन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज. तो हो सकता है कि वो उनकी मदर टंग बन जाए, क्रियोल बन जाए. तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है. Creoles have limited grammatical structures compared to natural languages. Tok Pisin is an example of a Creole derived from English. बच्चे फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर है. क्रियोल्स जब फुली
लैंग्वेजेस बन जाती है ना, क्रियोल, क्रियोल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, क्रियोल की अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, रूल्स होते हैं, और क्रियोल का अपना वोकैबुलरी का सेट भी होता है। जैसे कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, यू हैव एन इंग्लिश डिक्शनरी जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के अपना ग्रामर के रूल्स हैं। तो बच्चे जब पिजन एक फुली फॉर्म्ड क्रियोल बन जाती है, क्रियोल बिकम्स एन अ लैंग्वेज इन इटसेल्फ, जिसके अपने फुली ग्रोन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी दो करेक्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर योर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर योर करेक्ट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, which of the following is an example of covert prestige in sociolinguistics? पहले मुझे बताइए covert क्या होता है, overt क्या होता है? What does covert mean and what does overt means? So what is covert prestige in sociolinguistics? जब आप लैंग्वेज को बोलते हैं in a social context, in a social setup, तो कभी कभी आप covert prestige के लिए for the sake of covert prestige अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हो। तो covert prestige होता क्या है? अच्छा, कोवर्ट नहीं बताया, सीधा आंसर बताने लगी। ओवर्ट होता है बच्चे समथिंग दैट इज वेरी एक्सप्लिसिट, ओवर्ट होता है समथिंग दैट इज वेरी विजिबल, है ना। कोवर्ट होता है समथिंग दैट इज हिडन, दैट इज इम्प्लिसिट। ठीक है, या तो कोवर्ट प्रेस्टीज सोशल लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, द डेलिबरेटली the idea or the act of deliberately adopting non-standard dialect features to signal group identity, that is called social, that is called covert prestige. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, suppose I begin to talk to you in a dialect of a language that is known only to you and me. बच्चे मैंने क्या किया? I am trying to assert my group identity. Both of them belong to a certain group, right? That is covert prestige. Covert prestige refers to the positive value attached to non-standard language varieties within certain social groups, even though these varieties lack overt prestige. Speakers may use stigmatized forms to signal toughness, solidarity. For example, मैं आपको इसका दे देती हूँ. You must have seen when a boy talks to another boy. They have a certain way of talking. Yeah, how are you, bro? What's up, bro? How's my strong, bro? And all that, right? What is that? That's an example of covert prestige. Okay, you want to identify as the part of the same group, and so what do? You switch your language, and that's called covert prestige. Okay, you deliberately adopt a non-standard dialect of speaking. Done? Done. Next question, you need to arrange developments in history of English language in the chronological order in which they occurred. ओल्ड इंग्लिश पीरियड कौन सा कब आता है, सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी कब आएगी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज इंग्लिश में जितने भी फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स का इन्फ्लुएंस है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से हुआ था। एंड ग्रेट वाउल शिफ्ट कब होता है। ये चारों चीजें जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में आती हैं, ये आपको अरेंज करनी है क्रोनोलॉजिकली, इक्वेंशली। चलो चलो चलो, बी क्विक, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज। ठीक है, आई एम बिगिनिंग टू थिंक कि अभी शायद वो 5 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं होंगे। अच्छा, बाय द वे स्टूडेंट्स, टुमारो यू हैव योर फिनाले ऑफ द एआई जनरेटेड क्वेश्चन पेपर। कल लास्ट 30 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसमें कल मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो कल 8 बजे सुबह वील मीट फॉर दैट। ठीक है, तो कल 8 AM आपका फिनाले है ऑफ द एआई जनरेटेड क्वेश्चन पेपर। डन, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। दैट इज लिटरली द नेट काइंड ऑफ पेपर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड ही आएगा, एंग्लो सैक्सन पीरियड आएगा, जहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज थी काफी डिफरेंट थी। अगर आप आज भी बेवुल्फ का टेक्स्ट उठाकर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इवन दो यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज आज की जो इंग्लिश है उससे काफी डिफरेंट थी। तो सबसे पहले तो 4 आने वाला है। उसके बाद क्या होता है, एंग्लो सैक्सन के बाद वी एंटर इनटू द एंग्लो नॉर्मन एज, बिकॉज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा ड्यू टू द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मन इन्फ्लुएंस आ जाएगा, फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो 4th के बाद आएगा आपका सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ग्रेट वाउल शिफ्ट आएगा।
काफी सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस है वो ग्रेट वाउल शिफ्ट में चेंज हुई थी, ये आपका 1 आ जाएगा। लास्ट में क्या होगा, इन द ईयर 1755, इन द ईयर 1755 से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी आ जाएगी, तो ये आपका थर्ड आ जाएगा। 4213, 4213 मतलब 4213, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो, एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 to 1100, 1066 टू बी स्पेसिफिक, 1066 ऑनवर्ड्स आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, तो हम मिडिल इंग्लिश में ट्रांजिशन कर जाते हैं। ग्रेट वाउल शिफ्ट आपका होगा बच्चे 64 के बाद, 64 की एज के बाद आपका ग्रेट वाउल शिफ्ट होता है, एंड फाइनली आपकी मॉडर्न इंग्लिश एस्टैब्लिश हो जाती है। 1755 saw the publication of the dictionary by Samuel Johnson. Samuel Johnson. अच्छा, who's gonna tell me Noah Webster की डिक्शनरी कब आई थी? Samuel Johnson की डिक्शनरी 1755 में आई थी, but Noah Webster, the American lexicographer, just like your Johnson was a lexicographer, just like your Johnson was a lexicographer, he compiled a dictionary, he put together a dictionary. Likewise, हमने एक American lexicographer डिस्कस किए थे क्लास में भी डिस्कस किए हैं, कोर्स क्लास में भी, फ्री क्लास में भी। His name was Noah Webster. नोआ वेबस्टर ने आपके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट की थी, बाय द वे। आजकल आप जब कंफ्यूज होते हो ना कि स्पेलिंग ऑफ ऑनर HONOR होगी या फिर HONOUR होगा, और द स्पेलिंग ऑफ कलर इज COLOUR और इज इट COLOR, ठीक है, और द स्पेलिंग ऑफ सेंटर इज CENTER और CENTRE। ये जो स्पेलिंग में चेंजेस हैं बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ये किसने किए थे? नोआ वेबस्टर ने ही किए थे ये। तो नोआ वेबस्टर वाज एन अमेरिकन लेक्सिकोग्राफर। उनकी जो मेजर डिक्शनरी है दैट अपीयर्ड इन 1828, yes indeed, 1828, yes, true. Next question for you people. The concept of negative capability, though coined by John Keats, has been retrospectively applied to Shakespeare's dramatic method. This concept means what? कॉन्सेप्ट तो जॉन कीट्स का है, लेकिन अप्लाई हम करते हैं टू शेक्सपियर्स ड्रामेटिक मेथड्स ऑल्सो। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? जॉन कीट्स ने इन वन ऑफ हिज लेटर्स इस कॉन्सेप्ट की बात की थी, एंड ही सेड नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ गुड क्वालिटी दैट अ पोएट मस्ट पोजेस। ठीक है, and he also said that S.T. Coleridge, the romantic poet S.T. Coleridge, he said S.T. Coleridge lacks, he does not possess the quality of negative capability. कि उनके पास ये क्वालिटी है नहीं। क्वालिटी है क्या? The capacity or the ability to remain in uncertainties, mysteries, doubts without irritably trying to reach for fact and reason. That's your negative capability. 1817 के लेटर में ही डिस्क्राइब कि शेक्सपियर के पास ये कैपेबिलिटी है, लेकिन एसटी कोलरिज के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है शेक्सपियर के प्लेस को विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्सेज। Shakespeare beautified with others' feathers, the feathers of other playwrights and other thinkers. So his stories were also borrowed from other works. तो ऑथलो की स्टोरी भी कहीं से बोरोड है, किंग लियर की स्टोरी भी बोरोड है। द स्टोरी ऑफ हिज लास्ट प्ले रिटन इंडिविजुअली, द टेम्पेस्ट, वो भी कहीं से बोरो किया था इन्होंने। एंड हैमलेट की जो स्टोरी है द रिवेंज ट्रेजेडी, दैट वाज आल्सो टेकन फ्रॉम समवेयर। सो प्लीज गो अहेड एंड आंसर दैट। Shakespeare's plays and their respective primary sources. He says primary sources. Please focus. ठीक है? Okay. देखो, लेट्स बिगिन विद द वन जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था। ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। हैमलेट की स्टोरी उन्होंने कहां से बोरो की थी? सैक्सो ग्रामेटिकस के हिस्टोरिया डैनिका से, राइट? चलो, टेम्पेस्ट की स्टोरी का कोई क्लियरली आइडेंटिफाइड सोर्स है नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल शेक्सपियर की नहीं थी, इतना भी नोन है। शेक्सपियर की ओरिजिनल नहीं थी एटलीस्ट।
देन यू हैव किंग लियर. किंग लियर की स्टोरी कहाँ से आती है? हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ थ्री प्लेसेस. नेम दो थ्री प्लेसेस डैश डैश एंड डैश. हॉलिनशेड ने जो हिस्ट्रीज लिखी थी कौन सी तीन जगहों की लिखी थी? तो किंग लियर की स्टोरी प्लॉट वहीं से आती है. एंड ऑथलो का आइडिया कहाँ से आता है? सिंथियोस ग्ली हेकाटोमिथी से आता है. तो दैट्स योर करेक्ट आंसर. हॉलिनशेड के वर्क का टाइटल कंप्लीट कर दो. हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ डैश डैश एंड डैश. The answer is चलो चलो बताओ. ठीक है. Next question is a reason assertion question from 17th century metaphysical poets. John Donne is classified as a metaphysical poet. Is that true? If yes, John Donne's poetry is characterized by the use of elaborate conceits. क्या John Donne की poetry में elaborate, बढ़ी चढ़ी, बहुत ही exaggerated conceits होती हैं, comparisons होती हैं, metaphors होते हैं, exaggerated? If yes, learned imagery and which is drawn from science and theology. साइंस और थियोलॉजी यानी रिलीजन और साइंस की कुछ इमेजरीज को ये अपनी पोइट्री में यूज किया करते थे, फ्यूज किया करते थे क्या? एंड इफ यस, डिड ही आल्सो मेक यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल विट व्हाइल डूइंग सो? Is this statement correct? Is this statement correct? And is this statement a good explanation of the assertion statement? England, Scotland and Ireland. Yes. Very good. जॉन डन 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्री के ग्रुप के लीडिंग फिगर हैं. लाइक इफ देयर इज वन मेटाफिजिकल पोएट दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड. बेस्ट सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स वाज जॉन डन, 17th सेंचुरी पोएट. तो असर्शन इज करेक्ट. मेटाफिजिकल पोएट इनको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी पोएट्री में वो फीचर्स थे जो मेटाफिजिकल पोएट्री में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंड प्राइमरी फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट. मेटाफिजिकल कंसीट क्या होती है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स. दो ऐसी चीज जिसके बीच में कोई भी कंपैरिजन पॉसिबल हो ना पाए, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो ना पाए. अगर आप दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर कर देते हैं तो इस कंपैरिजन को, इस फार फेच कंपैरिजन को कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट. उनके वर्क्स में उन्होंने साइंस एंड थियोलॉजी दोनों से बोरो किया था. यस, जैसे कंपस वाली एनालॉजी है, साइंस से बोरोड है. एंड जॉन डन जैसे पोइट्स हैं, जितने भी पोइट्स थे इनफैक्ट मेटाफिजिकल पोइट्स, उनके दो सब्जेक्ट मैटर्स थे जो फेवरेट थे, आइदर लव और रिलीजन. सो दे यूज्ड टू बोरो फ्रॉम थियोलॉजी आल्सो. ये भी करेक्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड आर आपका ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एडमंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन द कैरेक्टर ऑफ ऊना represents which of these? The character of Una represents which of these? Next question. अच्छा, लेट्स स्पीड अप द क्वेश्चन पेस. ठीक है, थोड़ा पेस अपना स्पीड अप करते हैं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड मैं चाहती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक ही क्लास में प्रैक्टिस करवा दूं. बाय द वे, टुमारो स्टूडेंट्स, टुमारो इज 18th जून. तो मैं आपको कमिंग क्लासेस का शेड्यूल भी एक बार बता देती हूँ. 19th जून. ठीक है. टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी सेम. 6 PM every single day we are going to meet. टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ. Just give me a second. Meanwhile, you people keep answering. I'll just let you know the topics. ठीक है. I'm not sure classes अभी वो schedule नहीं है, but हो जाएंगी. Very soon you'll be able to see all the classes. Cool. So on 20th you have a literary theory marathon. ठीक है. On 20th June you have a literary theory marathon and please remember it's not just a question practice on literary theory. इसमें हम सारी की सारी literary theories को discuss करेंगे. So this could go up to 4 to 5 hours because सारी literary theories discuss करनी है. So all theories, all theorists, ठीक है, and PYQs. I will simply stick to the previous year questions only. So all theories, all theorists and PYQs, literary theory on 20th June at 6 PM. Is that noted? Give me a quick yes or no. अगर ये नोट कर लिया है. Then on 19th June, you'll have a class on 200 one-liners. ठीक है. 200 one-liner questions का एक rapid fire होगा. इसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है. जब 200 one-liners कंप्लीट हो जाएंगे क्लास खत्म हो जाएगी. 18 जून दैट इज टुमारो. कल हमारी क्या क्लास है? कल का आपका टॉपिक है टुमारो यू हैव अ क्रोनोलॉजी मैराथन. बिकॉज पेपर 2 में 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस के आते हैं. मोर और लेस 15 क्वेश्चंस आते हैं. तो टुमारो
all the questions that we practice, it will be a longer class, marathon class होगी, सारे questions chronology के होंगे, chronology from British literature, chronology from Indian literature, chronology from American literature, chronology from world literature, and chronology from literary criticism and literary theory as well. So 18 June chronology marathon, 19 June 201 liners, and 28 June literary theory combined. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? Una represents truth, the true church of England and the Queen Elizabeth I. Next question is, you need to arrange these works in a public according to chronology. अभी chronology की बात कर रहे थे, तो ऐसे questions होंगे, लेकिन कल पूरे ही chronology questions होंगे. कर दो आंसर. Okay, ठीक है. Quickly. अच्छा, देख लेते हैं अगर क्लास schedule हो गई है. I'm not sure अभी schedule हुई है या नहीं हुई है, तो एक बार let me just check that. Okay. अरे, when did I just happens. ठीक है, तो हम अपनी क्लास शेड्यूल देख लेते हैं, हुई है या नहीं हुई है. इसके में 1 minute. ओके, अभी नहीं हुई है, मजियों में, बट हो जाएगी. ठीक है, so you will be able to see all your classes. या अभी तो नहीं हुई है. राइट नाउ दिस इज द क्लास जो आपकी ऑनगोइंग है. और कल हमारी जो क्लास हुई थी, yesterday we had a class on 50 मेजर इंग्लिश प्लेस. अगर आपने ये कवर नहीं किया, आप इसको कवर कर सकते हैं. एंड बिफोर दैट जो हमारी क्लास हुई थी was extremely important. हमने पूरा इंडियन लिटरेचर एक वन शॉट क्लास में कवर किया था. दिस was extremely important. इसको कवर कर लेना बच्चे. यू विल फाइंड ऑल द क्लासेस इन द प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर स्क्रॉल कर लेना, एंड आपको इंग्लिश लिटरेचर की जो प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. तो क्लास कोई मिस होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको कवर कर लेना. ठीक है, तो दिस इज द प्लेलिस्ट, और इसी में फ्यूचर वाली क्लासेस ऐड होती रहेंगी. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपके पास यूटोपिया आएगा बाय थॉमस मोर, फिर शेफर्ड्स कैलेंडर आएगा एडमंड स्पेंसर का, फिर डॉक्टर फॉस्टिस आएगा मार्लो का, एंड लास्ट में 1667 का पब्लिकेशन है पैराडाइज लॉस्ट. शेफर्ड्स कैलेंडर का ईयर क्या है बच्चे? शेफर्ड्स कैलेंडर वाज पब्लिश इन 1579. डॉक्टर फॉस्टिस के 2 वर्जन्स हैं, डिस्कस किया था हमने रिसेंटली. देयर टेक्स्ट ए, देयर टेक्स्ट बी. तो 1592 पब्लिश इन 1604. पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन 1667, एंड यूटोपिया लैटिन लैंग्वेज में अपीयर करता है 1516 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये स्टेटमेंट्स देखनी है अबाउट जॉफरी चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स, एंड यू नीड टू पिक ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट्स. प्लीज गो अहेड. This is a typical net pattern question. A typical net pattern question. Please start answering. The general prologue describes social diversity of the pilgrims. बिल्कुल, जितने भी pilgrims हैं in the Canterbury Tales, उन सबका social milieu, उनका social background, उनकी professions, उनका nature, the way they are dressed up, उनके attires, उनका personality, ठीक है, उनकी eccentricities, सब कुछ describe करते हैं चॉसर in the general prologue to Canterbury Tales. तो statement 1 correct है. Knight's Tale is in the genre of fabuleux. Is the first tale. First of all, जितनी भी tales बताई जाती हैं, how many tales do we have in total? ये क्वेश्चन पास में आ चुका है. नंबर ऑफ टेल्स एंड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी टेल्स आर एक्चुअली टोल्ड इन द कैंटरबरी टेल्स. तो उसमें से फर्स्ट टेल किसकी होती है? द वेरी फर्स्ट टेल इज एक्चुअली द नाइट्स टेल. सबसे पहली टेल बताने का मौका किसको मिलता है? नाइट को मिलता है. ठीक है, नाइट्स टेल. So is the Knight's Tale actually a fabuleux? ये next question है. The wife of Bath, my favorite character from all the pilgrims is the wife of Bath. तो क्या wife of Bath का जो description है prologue में, is it considered a proto-feminist text? Okay. Yeah. Tales होती हैं 24. Actually intended number of tales was 120. तो अगर चौसर ने ये work complete किया होता, had he managed to complete it, had he managed to finish it, the work would have contained 120 tales in all. But right now, since the work is unfinished, we only have 24 tales in all. ठीक है, पहली टेल नाइट की होती है, तो इस हिसाब से बच्चे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, लेकिन नाइट की टेल फेबल्यू नहीं है, तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. मिलर की टेल जो होती है वो फेबल्यू होती है. नाइट की टेल इज अ रोमांस, दैट टू अ शिवलिक रोमांस, बिकॉज नाइट बता रहे हैं, तो इट हैज टू हैव एलिमेंट्स ऑफ शिवलरी इन इट. इट्स अ शिवलिक रोमांस. नेक्स्ट क्वेश्चन, which term best describes the structural form of Petrarchan sonnets as adapted in? I mean, this is easy. Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet, Italian sonnet versus English sonnet, इसकी हम distinction multiple times discuss कर चुके हैं. So
Which term best describes the structural form of Petrarchan sonnet as adapted in Elizabethan England? As adapted in Elizabethan England. चलो बताओ. अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जैसे अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम की डेट क्या है? Anyone who is probably not aware of the exam date, or maybe has picked the wrong exam date from the date sheet and they are assuming the exam हमारा 22nd को है या 23rd को है या 28th को है. Because I remember ये भी commonly हुआ करता था. Remember schools में this must have happened at least once with you. होता था. You were all set for exam, सुबह जाते थे and then you realize कि आज तो मैथ्स का एग्जाम है, नहीं आज तो इंग्लिश का एग्जाम है. तो ऐसा किसी के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए. व्हेन इज द डी डे, व्हेन इज द एग्जामिनेशन डेट फॉर इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट? एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा. तो कब होगा? इन दिस केस एटलीस्ट आप ये नहीं कर सकते कि मैम मैथ्स का प्रिपेयर करके गए थे, इंग्लिश का एग्जाम हो गया, इंग्लिश का ही एग्जाम है. बट देन डेट क्या है? 25th जून. सो या, so 25th जून इज लिटरली द डे दैट कुड डिसाइड द कोर्स ऑफ योर लाइफ अहेड. तो कुछ ही दिन है. इन कुछ दिनों में अगर आप इनको बहुत ही वाइजली और जुडिशली यूज कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. अदरवाइज नहीं यूज करोगे तो बच्चे 6 महीने आपने कितना भी पढ़ा हो, लास्ट के फ्यू डेज में अगर आप गिव अप कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, ट्रस्ट मी ओवरवेलमिंग सबके लिए हो रहा है. सबको लग रहा है कि इतना सिलेबस है, कैसे रिवाइज करना है, और जो याद किया था क्या वो याद है भी या नहीं है, क्या वो ऑलरेडी स्टोर्ड है माइंड में या वो निकल गया दिमाग से. सबके माइंड में ये चीज आ रही है इस टाइम पे. इसको ओवरवेलम मत होने देना, ठीक है? बिकॉज अगर ये कर दिया, अगर अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अनदर 6 मंथ्स के लिए फिर इस साइकिल में फंस जाओगे, इस लूप में फंस जाओगे. ठीक है? या मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है 25 जून को. तो हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? तो बच्चे आपके पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? एक ऑक्टेव होता था, एक सेस्टेट होता था. मतलब एक 8 लाइन्स का स्टैंजा, एक 6 लाइन्स का स्टैंजा. 8 + 16 इज 14 लाइन्स. और 8 लाइन्स के स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होगी? ए बी बी ए, ए बी बी ए. और जो सेस्टेट है उसकी राइम स्कीम क्या होगी? सी डी ई, सी डी ई. दैट्स योर करेक्ट आंसर. कैन यू ऑल्सो टेल मी द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश सोनेट aka द शेक्सपियरियन सोनेट? स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी बता दो. चलो अब नाउ दैट वी आर एट इट, डिस्कस ही कर लेते हैं. सोनेट इज अ पोएट्री फॉर्म, लिरिक पोएट्री की फॉर्म है. सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री. ठीक है? शॉर्ट पोएट्री की फॉर्म है, लिरिक पोएट्री की फॉर्म है सोनेट. एंड इट ओरिजिनेटेड इन इटली. इसकी ओरिजिन्स कहाँ हैं? इन ऑर्डर टू ट्रेस द ओरिजिन्स यू नीड टू गो बैक टू इटली. और इटली में भी स्पेसिफिकली किस टाइम में? ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड. तो ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड आपके पास पेट्रार्क जैसे पोएट्स थे who used to write 14 line poems, and these 14 line poems were called sonnets. ठीक है? and उनका rhyme scheme क्या हुआ करता था? They were divided into groups of 8 and 6. There was a stanza of 8 lines which is called an octave. There was a stanza of 6 lines called an sestet. लेकिन जब इस फॉर्म को इंग्लैंड लाया गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया. Instead of the octave sestet structure, now we have quatrains plus couplet का structure. How many quatrains and how many couplets do we have? Together, these quatrains and couplets will ultimately make up 14 lines because it is ultimately a sonnet. How many quatrains? We have 4 quatrains. Quatrain is a stanza of 4 lines. So 3 4s are 12. Plus there's one couplet. Okay, one couplet that means 2 lines. So 12 plus 2 क्या हो जाएगा? 12 plus 2 is 14 lines. Now you need to tell me एक English sonnet का rhyme scheme. Rhyme scheme of English sonnet is Ashmita, I had a similar friend. Okay, I had a similar friend who literally used to ask me. I remember, can you teach me this topic? Right before the exam, she used to ask me, can you teach me this topic? Right? And as much as I did not mind teaching them the topic, I did mind it right before the exam. It happens. Chalo.
तो English sonnet का rhyme scheme is what I'm asking you people. Rupa says it should be A B A B C D C D E F E F G G. ठीक है, that is indeed your correct answer. सही है. चलो. Next question. Alexander Pope's Rape of the Lock employs the genre of which of these? Easy question. Easy question. Alexander Pope का Rape of the Lock कौन से genre को employ करता है, use करता है? Epic tragedy है या mock epic poem है या फिर pastoral elegy है या pindaric ode है? Alexander Pope ने जो किया is something which is no less than a masterstroke. He thought I'm going to use the structure and the form of an epic poem. The grandeur of the epic poem is what I'm going to borrow from poems like, Homer's Iliad and Odyssey. But I'm going to make my subject matter very trivial, very unimportant, very insignificant. ठीक है, बहुत ही stupid, nearly ridiculous topic के बारे में. I'll write a grand epic poem. And hence I'm going to mock, I'm going to make fun, I'm going to make parody of the epic poem. And so he writes what is called the mock epic poem called Rape of the Lock. Okay. ठीक है. Next question for you people is assertion reason. William Wordsworth's preface to lyrical ballads 1800 मतलब second edition में आया था तो 1800 इसलिए लिखा हुआ है. Is considered a manifesto of English romanticism. Is that true? Reason: the preface argues for poetry written in real language of men and privileges emotion recollected in tranquility as the origin of poetry. Is that true? Next question. William Wordsworth, preface to lyrical ballads. Preface to lyrical ballads. Okay. William Wordsworth का preface indeed second edition of lyrical ballads में publish हुआ था and it is actually considered the manifesto, the underlying statement, the guiding document for English romantic period. तो ये तो बिल्कुल correct है और इसमें actually Wordsworth ने यही कहा था कि in order to write poetry you do not have to choose the very fancy kind of English, the very fancy kind of language which is only understood to a certain number of people in the society. Rather, we can choose the ordinary language that is spoken by ordinary folks, ordinary people. And he also did assert that poetry is actually something that comes into existence after you recollect your thoughts in tranquility, in peace and calm. So both the statements are true, and R is actually the good solid explanation for A. So ये आपका correct answer है. Next question, आपको मैच करना है novels को with their narrative techniques. Good question. आपको novels को मैच करना है. Writers तो already mentioned हैं brackets में. ना publication year से मैच करना, ना subtitle से मैच करना. Match them with their respective narrative techniques. You have Bleak House by Charles Dickens. All of them are Victorian age novels. Middlemarch by George Eliot. Wuthering Heights by obviously Emily Bronte, and The Woman in the White by Wilkie Collins. The Woman in the White by Wilkie Collins. Okay. Multiple embedded frame narrators, omniscient narrator with philosophical intrusions. Okay. Multiple narrative perspectives and epistolary form. Epistolary form ही इस novel में use है. Sorry. Dual narrator, third person omniscient narrator भी है और बीच बीच में first person narration भी है. अच्छा, good question. तो काशिफा से इसके आंसर 1 होना चाहिए, तो ठीक है मान लेते हैं काशिफा. सबसे पहले बचे ब्लेक हाउस, चार्ल्स डिकेंस दिस नॉवल. इसमें आपके पास डुअल नैरेटिव है. जो नैरेटिव है वो ऑल्टरनेट करती है बिटवीन अ थर्ड पर्सन नैरेटर एंड अ फर्स्ट पर्सन नैरेटर. ठीक है, तो कुछ कहानी आपको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से मिलेगी. कुछ कहानी का जो पार्ट है वो आपको मिलेगा एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से. फिर आपके पास जॉर्ज एलियट की मिडिल मार्च आ जाती है. इसमें आपके पास ओमनीसियन नैरेटर हैं, बट एज इज टिपिकल ऑफ जॉर्ज एलियट इन मेजॉरिटी ऑफ हर नॉवेल्स उनकी जो ऑथोरियल वॉइस है वो इंक्लूड कर जाती है, वो बीच में आ ही जाती है. इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने एडम बीट का चैप्टर नंबर 17 लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिस्कस किया है. किस किस को याद है? उसमें भी वो क्या करती हैं, while she is telling you the story, she includes the author's voice includes, and वो स्टोरी को पॉज करती हैं because she has something more important to say. She says, well, I have something very very pressing to say, so I'm going to put my story on hold for a while, and next chapter में I'm going to talk about something जो story से as such connected नहीं है, story को advance नहीं करेगा, but I will do it since it's my novel, right? तो मिडिल मार्च में उन्होंने क्या किया था, ओमनीसियंट नैरेटर का यूज किया with philosophical intrusions by the author.
वदरिंग हाइट्स जो नॉवल है मल्टीपल एम्बेडेड नरेशंस हैं इसमें, एंड वुमन इन द वाइट में बच्चे आपके पास मल्टीपल नरेशंस हैं एंड कुछ लेटर की फॉर्म के नरेशंस भी हैं, एपिसोडरी फॉर्म भी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रेम नैरेटर्स कौन है आपके पास? लॉकवुड की नरेशन है, नेली की है एंड अदर्स की है, और ब्लीक हाउस में डुअल नरेशन है। फर्स्ट पर्सन नरेशन किसकी है? एस्थर की है, और थर्ड पर्सन ही है। चलो, मिडिल मार्च में ओमनिसेंट नरेशन है, बट ऑथर की फिलोसॉफिकल वॉइस बीच बीच में इंक्लूड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इगोटिस्टिकल सबलाइम का आइडिया जो कीट्स ने यूज किया था, किसकी पोएट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया था? जस्ट लाइक Keats said negative capability is a good idea that a poet must possess. He said egotistical sublime is actually a bad idea. It's a bad quality. It's a bad quality that a poet should not possess. That a poet should not possess. ठीक है? Why do I keep telling you these things? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सिंपली ना लर्न कर लेते हैं कि जॉन कीट्स ने ये दोनों आइडियाज दिए थे। जॉन कीट्स ने दिया हमें आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, आप सिंपली इसको मेमोराइज कर लेते हो कि नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज एन आइडिया बाय जॉन कीट्स, एंड वेल यू नो इगोटिस्टिकल सबलाइम वाज आल्सो एन आइडिया बाय जॉन कीट्स। ठीक है, आप ये समझ नहीं पाते कि व्हेन ही गिव्स अस दिस आइडिया, इनमें से कौन से आइडिया के फेवर में थे वो और कौन से आइडिया को अपोज कर रहे थे। जॉन कीट्स सेड नेगेटिव कैपेबिलिटी होना इज एक्चुअली अ गुड क्वालिटी, अ पोएट मस्ट पोजेस इट। ठीक है, लेकिन इगोटिस्टिकल सबलाइम होना इज एक्चुअली अ बैड क्वालिटी, एंड दिस इज व्हाई ही क्रिटिसाइजेस अ पोएट फॉर बीइंग इगोटिस्टिकल सबलाइम। कौन है वो पोएट? विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर यू पीपल, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, consider these statements about Samuel Johnson's literary criticism. Johnson as a critic. Johnson's Lives of the English Poets established biographical criticism as a major critical mode. In his preface to Shakespeare, Johnson defended the three unities as essential to drama, all the three unities. Johnson attacked Milton's Lycidas as an insincere pastoral elegy. चलो बता दो आंसर। लाइव्स ऑफ इंग्लिश एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स के थ्रू जॉनसन ने इंडीड बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म को एज अ मेजर क्रिटिकल मोड एस्टैब्लिश कर दिया था। 52 इंग्लिश पोइट्स की बायोग्राफिकल अकाउंट्स दे दिए थे। टिपिकली बायोग्राफिकल अकाउंट्स नहीं थे, बायोग्राफिकल अकाउंट्स थे, बट इसमें क्रिटिकल कमेंट्रीज भी थी उनकी पोइट्री के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है बच्चे। शेक्सपियर के प्लेस को जब इन्होंने प्रीफेस किया था तो इन्होंने कहा कि शेक्सपियर के प्लेस में जो मोस्ट एसेंशियल यूनिटी है विच इज यूनिटी ऑफ एक्शन वो प्रेजेंट है, ऑल्दो शेक्सपियर डिड नॉट इंक्लूड यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस in his place, which is completely okay. So Johnson did not say that all the three unities were essential. He simply said the unity of action was most essential. So statement number 2 हमारी हो जाती है गलत। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी हो जाती है गलत। However, जॉनसन ने इंडीड जॉन मिल्टन की पैस्टोरल एलिजी लिसिडस को इनसिंसियर कहा था, बिकॉज इन्होंने कहा कि पैस्टोरल मोड जो है, जो इडिलिक मोड है, वो एलिजी के लिए किसी चीज को ग्रीव करने के लिए, मोन करने के लिए सूटेबल नहीं है। सो ही सेज कि पैस्टोरल मोड में क्या होता है, आप जो इडिलिक ब्यूटी होती है, जो सीनिक ब्यूटी होती है, उसके डिस्क्रिप्शंस देते हो, द लाइफ ऑफ द शेफर्ड के डिस्क्रिप्शंस देते हो। ठीक है, ही सेज दिस इज नॉट वेरी वेल सूटेड टू द एलिजी और एलिगाइक फॉर्म, विच इज वाई इन्होंने कहा था कि ये इनसिंसियर है। तो ये आपका करेक्ट है, ये जॉनसन का एक्चुअल ओपिनियन है अबाउट मिल्टन लिसिडस। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, you need to arrange these romantic era publications in a chronological order. Shelley's Prometheus Unbound, Blake's Songs of Innocence, Byron's Don Juan, the first two cantos, and John Keats's Odes. John Keats के odes अभी हम डिस्कस कर रहे थे। 1819 is the year जब इन्होंने अपने 6 odes कंपोज किए थे। 1819 जॉन कीट्स। इनफैक्ट जॉन कीट्स के जो ओड्स हैं, कहा जाता है कि उसके बाद उनका कोई मेजर सक्सेसफुल पोएटिक वर्क आया ही नहीं था, because obviously his health was declining, his financial condition was not very good, and ultimately he would also contract tuberculosis, TB, and he would die. Done? चलिए, ब्लेक का पहले सॉन्ग ऑफ इनोसेंस आया, फिर उसके बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन कर एक कलेक्टिव वर्क आया था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। लेकिन इंडिविजुअली सॉन्ग ऑफ इनोसेंस किस ईयर में आया था, इस क्वेश्चन। प्रोमीथियस अनबाउंड क्या है बच्ची, कल ही डिस्कस किया था, आज डिस्कस किया था, सुबह नहीं कल डिस्कस किया था। Your closet drama, your closet play, Prometheus Unbound by
PB Shelley. So arrange them according to their publication years. According to their publication years. Okay. ठीक है. Since most of you say कि आंसर होना चाहिए, नैना is saying कि आंसर C होना चाहिए. C के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नैना says कि पहले विलियम ब्लेक आएंगे. ओके. नैना says कि देखो विलियम ब्लेक वैसे भी प्रॉपर रोमांटिक एज के पोइट तो है नहीं, एज ऑफ ट्रांजिशन के पोइट हैं, प्री रोमांटिक हैं, तो लॉजिकली विलियम ब्लेक पहले आने चाहिए, है ना? अगर ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हो तो विलियम ब्लेक पहले आने चाहिए. अब विलियम ब्लेक पहले आएंगे तो उनका पब्लिकेशन भी पहले आना चाहिए, है ना? तो बच्चे बाय दैट लॉजिक आपके विलियम ब्लेक इंडीड पहले आएंगे. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपने सही फिगर आउट किया. बट उसके बाद क्या होगा? विलियम ब्लेक प्री रोमांटिक और एज ऑफ ट्रांजिशन के पोइट हैं, तो चलो ठीक है. उसके बाद बायरन का डॉन जोआन आएगा, पहले दो कैंटोस उसकी. ठीक है, उसके बाद आपके पास जॉन कीट्स का 1819 का पब्लिकेशन आएगा. पीबी शैली का जो प्ले है वो सबसे लास्ट में आएगा. सॉरी, पीबी शैली का प्ले सबसे लास्ट में. डन. ओके. ये जो इनकी डेट्स है ना काफी आसपास हैं, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है. जैसे डॉन जोआन है, उसके जो पहले दो कैंटोज हैं बायरन के, वो भी 1819 में पब्लिश हुए, और जॉन कीट्स के जो ओड्स हैं बच्चे वो भी 1819 में पब्लिश हुए थे. लेकिन बायरन का जो वर्क है वो 1819 के जुलाई वाले मंथ में आ गया था, और कीट्स का बाद में आया था. कीट्स ने कंपोज किए थे 1819 में, लेकिन वो पब्लिश बाद में हुए. इनफैक्ट कीट्स ने 1819 के अगस्त में जाकर, सितंबर या अगस्त में जाकर जो ओड टू ऑटम है वो कंपोज किया था. ठीक है, तो सेम ईयर की पब्लिकेशंस हैं, लेकिन उसमें भी मंथ्स डिफर कर रहे हैं. ओके. Thomas Hardy's concept of immanent will is best associated with which of his works? Immanent will. अच्छा, क्या होता है immanent will? What is immanent? Something, ये जो word है, English word है immanent, what does it mean? What does immanent mean in the first place? Okay. ठीक है. The Dynast was a drama. It was a play. It was not a novel. Remember, Dynasts was a play by Thomas Hardy. Hardy's concept of immanent will, a blind unconscious force that governs your life, right? That governs the universe without any moral purpose. Is this systematically present in his play, in his epic drama Dynasts, which is about Napoleonic wars, where it operates as a quasi-supernatural philosophical force. Do remember, Hardy ne, beside being a novelist, he was also a poet and playwright. He did write play like Dynasts, and after the failure, not the failure necessarily, but after the backlash that came against his novels, especially Tess and Jude, he also stopped writing novels and he shifted to becoming a full-time poet. उसके बाद उन्होंने पोइट्री के वर्क्स लिखे थे, तो he was a poet and a dramatist and a novelist as well. Which of the following best describes the narrative technique called free indirect discourse? The narrative, technique of free indirect discourse actually होता क्या है? Is your next question. Okay. किस किस को भूख लग रही है अभी? किस किस का डिनर का टाइम हो गया? एंड हु ऑल आर कर्सिंग मैम की मैम की क्लास नहीं होती तो खाना खा लिया होता? ऐसा तो नहीं है कोई? देखो, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन अ कैरेक्टर्स थॉट्स नैरेटेड इन थर्ड पर्सन बट रिटेन द कैरेक्टर्स इडियम्स एंड पर्सपेक्टिव्स. फ्री इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, कैरेक्टर खुद आपको वो आइडिया नहीं बता रहा, रादर उनके थॉट्स के थ्रू, उनके फ्लो ऑफ थॉट्स के थ्रू, चेन ऑफ थॉट्स के थ्रू आपको आइडिया कन्वे हो रहा है, narrative convey हो रहा है. This is free indirect speech. Next question for you people is,
जैसे जेन ऑस्टन की जो स्पीच जो नैरेटिव मोड है, टेक्निक है इन हर नॉवल एमा, वो फ्री इंडायरेक्ट स्पीच है. ओके, थॉमस टर्न एलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स व्हाट. आई नो ये क्वेश्चन मैं रिपीटेडली अपनी क्लासेस में पूछती हूँ, बट देन अगेन ये एनटीए भी रिपीटेडली पूछ लेता है, सो आई हैव टू आस्क इट. ठीक है, आई हैव टू आस्क इट. नो, नहीं लग रही, चलो ठीक है. थॉमस टर्न एलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो कि उन्होंने प्रपोज किया था इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स अपीयर्ड इन विच ईयर? Hamlet and his problems में in what year did he say that Hamlet is an artistic failure? कहाँ claim कर दिया था Thomas Stan Eliot ने that a play like Hamlet, which was perhaps the most studied tragedy of William Shakespeare, but Thomas Stan Eliot ended up remarking that Hamlet is actually an artistic failure. An artistic failure. Why? Because it lacks the use of ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव. शेक्सपियर अपने इस प्ले में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का यूज कर कर हैमलेट के इमोशंस को अपनी ऑडियंस तक कन्वे नहीं कर पाए थे. एंड द एसे अपीयर्ड इन द ईयर 1919. दैट इज योर करेक्ट आंसर. Objective correlative could be one object, could be a set of objects, could be a habit, a situation, an event that evokes a particular emotion in the reader. तो आपको ऑडियंस के माइंड में अगर कोई इमोशन इवोक करना है, अपने कैरेक्टर की जो इमोशंस हैं उनको कन्वे करना है, तो आप क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का यूज कर सकते हैं. आप कैरेक्टर की इमोशन को क्या कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं ऑन टू एन ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट कुड बी अ लिटरल ऑब्जेक्ट, कुड बी अ थिंग, कुड बी अ सिचुएशन और कुड बी एन इवेंट ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे ना वो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है, उसमें मिसेस डालेवी में there's a character who has a pocket knife or something, not a pocket knife, something he carries around with himself. I'm forgetting now, but when I read the novel back in masters, but there's a character who carries something in his pocket. Is it a knife? It's something, right? That could also be a potential objective correlative. Chalo. Next question. Assertion reasoning का question है. Samuel Beckett's Waiting for Godot is classified as a absurdist drama. If yes, the play depicts characters engaged in purposeful, goal-directed actions with a coherent causal plot structure. Causal plot structure means cause and effect relation होती है between actions and their results in the play. क्या हमारे जो Waiting for Godot के दो main figures हैं, Estragon and Vladimir? Estragon and Vladimir. Are these two characters engaged in purposeful, goal-directed action? But these are the most aimless, purposeless characters ever. These are two tramps who have no purpose, who have no aim, who have no direction in their life or in their day also. And वो जो structure है plot का, it follows no coherence also. In fact, structure cyclical है, nothing happens. बस वो एक loop में घूमता रहता है. Cyclical structure है, repetitive structure है. Statement is assertion is true, but reason is wrong. R is wrong. ठीक है? Okay. The play first appeared in French language. In French language, it was called En Attendant Godot. However, English title became Waiting for Godot. In French language, it was first performed in Paris, in France, and then England में ये perform हुआ था in the city of London. England में ये perform हुआ था in the city of London. ठीक है? That's your correct answer. चलो. Next question for you people is you need to match modernist techniques with their respective texts that exemplify it most prominently. Ford Madox Fogg, The Good Soldier, Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, Wasteland by Thomas Stern Eliot and Hugh Sylvan Mobley by Ezra Pound. इनकी टेक्निक्स को आपको मैच करना है. Vorticism in poetry, unreliable narrator, mythic method, okay, and you have stream of consciousness. Stream of consciousness. Okay. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो बहुत ही एविडेंटली आप मैच कर दोगे वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डालवी के साथ.
और क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया उसके साथ, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना पूरा. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विद वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल मिसेस डालवी, देन मिथिक मेथड विद थॉमस टर्न एलियट्स वेस्टलैंड. Okay, then yeah, because again, ठीक है, I mean we can justify that. The unreliable narrative, Ford Maddox Ford का good soldier, and Hugh Sylvan Mobley में आपके पास vorticism है, Ezra Pound. ठीक है. Next question for you people is, um, you need to consider these statements about William Butler Yeats, the Irish poet and playwright, and the Nobel laureate, and you need to tell me the correct statements from these three. Did he win the Nobel in 1953? Is that correct? The Lake Isle of Innisfree reflects Yeats's Celtic twilight phase. Does it? Remember the Lake Isle of Innisfree is that poem जिसमें जो speaker है, he has a tendency of escaping. He wants to escape the urban life and he wants to go away. Just like Walden में Thoreau went away, है ना? He left behind his urban life and he went away and he went close to nature. Likewise, Lake Isle of Innisfree के जो speaker है, he says something similar. He says, well, I'm going to go away from the hustle bustle of the city and I'm going to go to a very quiet place by the lake and I'm going to live there and I'm going to be close to nature. I'll be able to hear the birds singing. I'll be able to hear the crickets also and the bees also and all that. So nature doesn't escape our idea. Yeats developed the concept of gyres and phases of the moon in his work A Vision, did he? William Butler Yeats, the Irish poet and playwright. चलो, Yeats did win the Nobel, पर क्या 53 में उनको नोबेल मिला था? Did he win the Nobel in 1953? बच्चे, येट्स को नोबेल 1953 में नहीं मिला था, तो कब मिला था? बाकी ठीक है दोनों. Lake Isle of Innisfree reflects his Celtic twilight phase and येट्स ने अपना जो जायर्स वाला पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप किया था, अपनी ही एक माइथोलॉजी, अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया था in his work A Vision. But when did he win the Nobel Prize? Anybody who remembers that? In 1923. Yes, that's your correct answer. ठीक है. Which of the following novels is not associated with the Harlem Renaissance? Harlem Renaissance exactly कौन से डेकेड में हो रहा था ये रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर का रिवाइवल हो रहा था अमेरिका में इन द हार्लेम नेबरहुड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. बट इन व्हाट ईयर? डू यू रिमेंबर द ईयर और एटलीस्ट द डेकेड हार्लेम रेनेसांस? तो इनमें से कौन सा वर्क हार्लेम रेनेसांस के साथ अलाइन नहीं करता? जीन टूमर्स केन, रिचर्ड राइट्स नेटिव सन, रिचर्ड राइट्स नेटिव सन, लैंगस्टन ह्यूज नॉट विदाउट लाफ्टर, ठीक है ये तो होगा. ज़ोरा नीड हर्स्टन देयर आइज वर वाचिंग गॉड, ये भी होगा. केन भी होगा. बच्चे रिचर्ड राइट का वर्क नहीं होगा. सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सी नहीं होगा. डन. चलो, Richard Wright's native son is associated with African American protest fiction and social realism but not with Harlem Renaissance. बाकी तीनों वर्क्स हार्लेम रेनेसांस के वर्क्स हैं. आपको इन मॉडर्निस्ट नॉवेल्स को अरेंज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन. जेम्स जॉयस की यूलिसिस है, वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस, डी एच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स एंड जोसेफ कॉनराड हार्ट ऑफ डार्कनेस. Important works of 20th century, arrange them according to their publication years. This is a highly likely question that could be asked in UGC NET in June cycle because इस तरह का format का question आ सकता है. 20th century के चारों major writers के questions. Okay. James Joyce की Ulysses 1922, right? The Wasteland by Thomas Stern Eliot also 1922. Wasteland भी publish हुई थी 1922 में and 1922 में James Joyce की Ulysses भी publish हुई. ठीक है, डन. क्या स्टार्टिंग करोगे तुम जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस के साथ. जोसेफ कॉनराड वैसे भी बच्चे उनका कुछ बॉडी ऑफ वर्क है जो 1890s में भी आता है, इफ यू रिमेंबर जोसेफ कॉनराड. I mean, yes, his works also appear in the beginning of 20th century, but कुछ work है इनका, कुछ portion है जो 1890s वाले decade में भी आ जाता है. ठीक है, उसके बाद डी एच लॉरेंस की सन्स एंड लवर्स आएगी, फिर यूलिसिस आएगी, बाद में जाकर वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस आएगी इन 1927. 1899 में आएगी हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके बाद सन्स एंड लवर्स इन 1913, यूलिसिस इन 1922, वर्जीनिया वुल्फ इन 1927 with sons and with to the lighthouse. The term angry young men in British literature primarily refers to writers of which period? Angry young men in literature, this term is used for writers of which period?
ओके, चलो बताओ। The 1920s writers who rejected Victorian moral and conventions, बच्चे एंग्री यंग मैन जो टर्म है वो यूज होता है पोस्ट वॉर राइटर्स के लिए, the frustrations of the post war writers. तो 1920s वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता, 1970s is a bit too late, ठीक है, immediately after the war, second world war के बाद। तो 1940s who opposed the second world war, और 1950s, no, the war had already happened, they were not opposing the second world war, तब तक war हो चुका था। तो 1950s who depicted working class disillusionment with the establishment, 1950s यानी पोस्ट वॉर जो कंडीशन था इंग्लैंड का, उसमें द फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंग्लैंड, स्पेशली द वर्किंग क्लासेस, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हुआ करते थे, जैसे कि आपके जॉन ऑसबर्न के जो हीरो हैं, जिमी पोर्टर, ही हिमसेल्फ इज एन एंग्री यंग मैन, एंड ये जो टर्म है राइटर्स के लिए यूज होता है ऑफ पोस्ट वॉर ब्रिटिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यू क्रिटिसिज्म, अब थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। द टर्म इंटेंशनल फैलेसी रेफर्स टू विच ऑफ दीज? ओके, इजी क्वेश्चन। New criticism, the term intentional fallacy refers to which of these? Next question, please start answering. Intentional fallacy is a fallacy, it's a mistake, it's an error that you make. अगर आप ये सोचते हैं that you will be able to find the meaning of a literary work by finding the intended meaning of the work of the author or the poet, तो ये हो जाती है एक गलती। ऐसा न्यू क्रिटिक्स का कहना था, मेरा कहना नहीं है। कौन से दो न्यू क्रिटिक्स थे जिन्होंने मिलकर ये कहा था कि ये एक मिस्टेक है, एक फैलेसी है? द मिस्टेक ऑफ यूजिंग ऑथर्स इंटेंडेड इंटेंशंस टू जज द मीनिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क is called intentional fallacy। बच्चे विमसैट एंड बियर्सली दोनों ने मिलकर ये आइडिया दिया था अपने 1946 के essay में, जिसका टाइटल itself was the intentional fallacy। Next question is about Roland Barthes. Roland Barthes' essay The Death of the Author argues for liberation of the text from authorial control. Does it? If yes, Barthes contends that once a text is written, the author becomes irrelevant and the meaning is produced by the reader. Okay, Roland Barthes, he was a French literary critic. He was a part, I mean, he's somewhere, he sits somewhere on the threshold of structuralism and post-structuralism, because some of his ideas are structuralist, some of his ideas are post-structuralist. For example, the idea of decentering the author, the idea of stating that author is not the site of final meaning, this is a very post-structuralist idea. ठीक है, तो 1967 के अपने essay में he talks about any favors, he advocates the death of the author, the metaphorical death of the author, जिसकी वजह से author की जो creator वाली authority है वो खत्म हो पाएगी। author का जो rule है over the, because he author tends to dictate the final meaning, वो भी खत्म हो पाएगा, and the reader will be able to become a site of the meaning। ठीक है, तो ये assertion आपकी correct है। he contends that once a text is written, the author becomes irrelevant and the meaning is actually produced by the reader। ये भी correct है बच्चे, आपकी दोनों statements correct हैं, दोनों correct हैं। Okay, next question for you people is, अच्छा पहले मुझे so far बताइए कैसा लग रहा है अभी? Do you people feel confident about your preparation? Because हमने कुछ questions किए which were difficult, initial questions थे, I remember culture study के questions के साथ you people were struggling a bit, trauma studies, disability studies, वो जो initial topics हम कर रहे थे, space theory, उसके questions you people did not get correct much, but then as we transitioned into British literature, I could see a lot many correct answers coming up। That means British literature के साथ आप well versed हैं, वैसे भी वो core form करता है English literature का। Now we are transitioning into literary theory again 25 questions command कर लेती है। Trust me, literary theory culture studies का जो combo है can be a life changing combo for you people। ये turning point बन सकता है आपकी net journey के JRF journey में, because British literature में एक indefinite number of writers है, एक infinite number of writers है। However, culture theory and cultural criticism अगर आप इसको combine कर देते हो, number of theorists and critics limited हैं। So अगर आप इसकी solid preparation करके जाओगे, आपके 25 questions definitely clear होंगे out of 100। ठीक है, 25 questions of British literature को score करना correct is difficult compared to 25 questions score करना from literary theory। Why? Because literary theory limited है और आपका British literature unlimited है। Number of questions more or less दोनों में बराबर ही आते हैं, at least last cycle में ये हुआ था। So imagine covering so many writers for 25 questions, imagine covering limited number of theorists also for 25 questions। If I were you, I would have focused here first. Once I completed that, then I would have gone to British literature। ठीक है?
All information is new to me, but some of the questions I'm able to give answers. आयुषी बच्चे सारी information new कैसे है? अच्छा, आयुषी is preparing for December cycle, right? Because अगर आप जून के लिए prepare कर रहे हो, नहीं जून के लिए नहीं कर रहे हो ना, ठीक है? चलो, okay. Next question for you people then. Next question देख लें. अच्छा, by the way, has everybody registered for this? कब है ये एग्जाम आपका? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट है बच्चे, बिकॉज 22 जून ऑनवर्ड्स हमारा सब्जेक्ट का एग्जाम 22 को नहीं है, बट देन अगेन यूजीसी नेट का जो जून साइकिल का एग्जामिनेशन कैलेंडर है बिगिंस ऑन 22 जून. दैट मीन्स ऑल योर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड. आपके जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे, all subjects will be conducted on the same day, including English का mock test 21st June. And I want everybody, each one of you, to register for this क्योंकि completely free registration है. और इसको अटेम्प्ट करने के बाद मुझे अपना स्कोर भी बाय द वे बता देना, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आपके पास लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को मैच करना है विद देयर थ्योरिस्ट्स. डिफरेंस, इंटरपोलेशन, डीफैमिलियराइजेशन एंड कार्निवलिज्म. Defamiliarization, which was actually originally a Russian term called ostronymy. Ostronymy. Okay. Difference is made up of two words, difference and deference. And interpolation is a Marxist concept, which I personally love. It's a very smart concept if you think about it, right? Defamiliarization is how literature makes the most common things seem uncommon, is how literature makes the most familiar things seem unfamiliar or new. It just renews your perception, right? Makes you see the same things but with a different perception. And carnivalesque क्या होता है, जैसे आप एक कार्निवल में जाते हैं जहां पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं करती, कोई हायरार्कीज होल्ड नहीं करती, जहां पर सब लोग मिल जाते हैं, where there are no distinctions between high and low, ठीक है? तो वो आपका कार्निवलाइजेशन होता है. एंड दिस आइडिया वाज गिवन बाय अ रशियन थ्योरिस्ट हुज नेम इज मिकाइल बाख्तिन. तो आप 4 को मैच कर दीजिए ए के साथ. डीफैमिलियराइजेशन, ऑस्ट्रोनॉमी, ये भी रशियन का टर्म है, लेकिन रशियन फॉर्मलिस्ट का टर्म है. दिस इज फ्रॉम श्क्लोव्स्की. तो 3 को मैच कर दो बी के साथ. ओके, आपका इंटरपेलेशन बच्चे लुई अल्थूसर का टर्म है. इंटरपेलेशन कैसे होती है, हाउ डू यू बिकम अ सब्जेक्ट, तो ये उसके बारे में है. 2 को मैच कर दीजिए सी के साथ. एंड 1 को मैच कर देते हैं, डिफरेंस को मैच कर देते हैं विद द फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा. इसको मैच कर दो डी के साथ. डीसीबीए इज योर करेक्ट आंसर. डीसीबीए यहाँ पर है करेक्ट, ठीक है? Okay, next question for you people is Julia Kristeva's concept of intertextuality originally implied what? Kristeva, she was a Bulgarian French post-structuralist thinker. Post-structuralist thinker, and she has studied psychoanalysis also, by the way. Okay? She has studied psychoanalysis and she also very famously, पहले इतना ही बताओ चलो. Intertextuality as proposed by Julia Kristeva, what does that mean? Intertextuality in general and intertextuality as proposed by Julia Kristeva. Is it the direct borrowing of quotations from other works of literature? क्या उसको intertextuality कहेंगे? The intersection of textual surfaces, the text as a mosaic of quotations, absorbing and transforming other texts also. The influence of an author's biography on their work or the relationship between text and its historical period. बच्चे ये वाला करेक्ट हो जाएगा. दैट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है? उन्होंने कहा कि देखो इंटरटेक्चुअलिटी में कोटेशंस भी आएंगे, बट पहली वाली में सिर्फ कोटेशंस ही हैं, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. तो शी सेड इंटरटेक्चुअलिटी इज व्हेन अ टेक्स्ट इंटरसेक्ट्स विद अदर टेक्स्ट्स. एंड ये इंटरसेक्शन किस तरह से हो सकती है? हो सकता है दूसरे टेक्स्ट का कोई कोटेशन है, कोई एग्जर्प्ट है जो आज के टेक्स्ट में इंक्लूडेड है, but could be other possible connections also. Next question for you people is, consider these statements about feminist literary theory. आपके पास 3 statements हैं. You need to pick the correct ones only. Showalter, Susan, okay, Gilbert and Gilbert. चलो, next question. Sandra Gilbert and Susan Gruber, both of them American. The Mad Woman in the Attic argues that 19th century women writers suffered from the anxiety of authorship. Elaine Showalter coined the term écriture féminine to describe women's writing. Elaine Showalter ने
शी वॉज अमेरिकन, तो वाई वुड अमेरिकन प्रेडिक्ट पॉइंट एक्रेचर फेमिनिन? एक्रेचर फेमिनिन तो फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच कॉन्सेप्ट है, तो स्टेटमेंट 2 को हम निकाल देते हैं, इनकरेक्ट है। शो वॉल्टर्स गायनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन वुमेन एज प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग, ये करेक्ट है आपका। सो आपका नंबर 6 आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? योर 3 इज करेक्ट एंड योर 1 इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स 1 एंड 3 वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो, Frederick Jameson's concept of political unconscious argues which of these? Frederick Jameson, the American Marxist thinker, he gave us the idea of political unconscious. In fact, the work itself was called the political unconscious. Idea क्या है? Idea क्या है? Écriture feminine, writing from a woman's perspective, from a woman's experience, from a woman's body, right? Écriture मतलब writing. Écriture is writing in French and feminine as well, women, right? So écriture feminine, फ्रेंच थिंकर्स का आइडिया है ये। स्पेसिफिकली हम इसको हेलेन सिक्सू के साथ एसोसिएट करते हैं, जस्ट लाइक हम गाइनोक्रिटिसिज्म को स्पेसिफिकली एलेन शोवाल्टर से एसोसिएट करते हैं, बिकॉज शी प्रपोज दिस आइडिया। तो फ्रेडरिक जेमसन ने कहा कि पॉलिटिकल अनकॉन्शियस क्या होता है, लिटरेरी टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इस पॉलिटिकल अनकॉन्शियस को रियलाइज करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। Political unconscious literary text contains repressed political content that can be recovered and realized through symptomatic reading. This was his idea. The book itself was called Political Unconscious. It appeared in the year 1981. Frederick Jameson was American, by the way. Mark Fisher's concept of capitalist realism, ये हमने recently कोई question किया था, but I wanted to break this here again because I think this is important. तो मार्क फिशर का कॉन्सेप्ट है कैपिटलिस्ट रियलिज्म का, एज आर्टिकुलेटेड बाय हिम इन हिज 2009 बुक। इट इज मोस्ट डायरेक्टली रेलेवेंट टू विच लिटरेरी क्रिटिकल फ्रेमवर्क? कैपिटलिस्ट रियलिज्म का कॉन्सेप्ट किस लिटरेरी फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करता है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या ये भी बता दो, बिकॉज इफ यू पीपल फॉलो माई मॉर्निंग क्लासेस ऑल्सो, जो 8 AM क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की ऐप पर, कंप्लीटली फ्री क्लासेस हैं, 8 AM क्लासेस ऑन दी अनअकैडमी ऐप, ठीक है? And these are completely free classes. We like to call them special classes because these are special in the case that these are free but they happen on the app of Unacademy. So these are your special classes. Every single day I meet you people at 8 AM. तो वहां पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार डिस्कस हम कर चुके हैं, तो ये अलाइन करता है मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिसिज्म एंड अफेक्ट थ्योरी के साथ। ये आइडिया है क्या? कैपिटलिस्ट रियलिज्म का आइडिया क्या है? मार्क फिशर ने कहा कि फॉर वंस you can imagine the end of the world but you cannot imagine the end of capitalism. कैपिटलिज्म इतना थ्राइव कर चुका है बाय नाउ कि उसको डिफीट कर पाना, टू बी एबल टू इमेजिन द एंड ऑफ कैपिटलिज्म समहाउ सीम्स इम्पॉसिबल, बट it's more difficult than imagining the end of the world itself. क्या ना आइडिया था? कैपिटलिस्ट रियलिज्म मार्क फिशर का कॉन्सेप्ट है 2009 का। ऑब्वियसली ही इज अ मार्क्सिस्ट थिंकर, तभी वो कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ओके, सलमान रुश्दी's कॉन्सेप्ट ऑफ चटनिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन तो बच्चे हम सुबह कर चुके हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन आंसर कर दो, देन आई विल स्किप सम क्वेश्चंस, ठीक है? बाय द वे, अगर आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सुबह हमने करे थे, तो आप सुबह वाली क्लास देख सकते हो। अगेन जो करंट क्लास चल रही है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुबह वाली क्लास मिल जाएगी। सिंपली स्क्रॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, ठीक है? यहाँ पे मोर पे क्लिक कर लेना, और कल वाली सुबह वाली क्लास भी वहीं पर मिल जाएगी। फ्री लाइव क्लास वाला जो ये लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे अब हम, तो जो अपकमिंग क्लासेस है हमारी वो विजिबल हैं। तो कल सुबह हम 8 बजे मिलने वाले हैं, और इसी में आपकी जो पास वाली क्लासेस हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है? चलो, बस ये क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन वील स्किप थ्रू सम क्वेश्चंस बिकॉज दीज क्वेश्चंस वर डन दिस मॉर्निंग। तो सलमान रुश्दी का चटनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने 1981 की नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन में दिया था, वो आइडिया क्या है? द पिकलिंग एंड द प्रिजर्वेशन। आप पिकल करते हो, जब आप किसी को पिकल करते हो आप उसको प्रिजर्व भी कर रहे हो। जैसे अचार है, वंस यू मेक द पिकल इट कैन सर्वाइव ऑन योर शेल्फ फॉर हाउ मेनी मंथ्स, काफी टाइम तक आप उसको पिकल करके प्रिजर्व कर सकते हो। सो द पिकलिंग और द प्रिजर्वेशन ऑफ मेमोरी in a plural hybrid subjective narrative form, that is chutnification of history as given by Salman Rushdie in Midnight's Children, ठीक है? In Midnight's Children. Okay. Arundhati Roy's got a small things structure around concept of touchability and untouchability. I am assuming ये question हो गया था। Give me a quick yes or no. ये question सुबह वाली क्लास में हो गया था ना? A quick yes or no, students. Okay. Yeah, so I'm gonna just skip through some questions. अगर तुम लोग को ये questions attempt करने हैं, ये सुबह हमने solve किए थे, very very important questions, ठीक है? तो ये सुबह वाली क्लास से cover कर लेना। Right now I'll just skip through to the question जो आज जो हम fresh questions करेंगे, सुबह वाले नहीं करेंगे, ठीक है?
गिव मी अ मोमेंट। टोनी मॉरिसन का री मेमोरी वाला क्वेश्चन भी हमने सुबह किया था. दिस वाज इम्पोर्टेंट, सो आई इंक्लूडेड दिस इन द मॉर्निंग सेशन. तो ये भी हो चुका है, इसको भी तुम लोग वहीं से कर लेना सुबह वाली क्लास से. फ्री क्लास थी वो. ओके ओके ओके, ठीक है. स्टुअर्ट हॉल का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया था. ओके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलो, you need to match these cultural studies concept with their respective theorists जिन्होंने ये concept को develop किया. Hegemony, panopticism, simulacra, simulation and hyperreality, and you have habitus. कर दो इनको match. And you have habitus. Okay. Simulacra, simulation, the idea that we live in copies, in a world of copies, which is not the reality but hyper reality. ये आइडिया पोस्ट मॉडर्न थिंकर का ही होगा, तभी वो हाइपर रियलिटी की बात कर रहे हैं. पेनॉप्टिसिज्म का जो ओरिजिनल आइडिया था वो तो वैसे जेरेमी बेंथम का है, बट उसको डिसिप्लिनरी सोसाइटीज की फंक्शनिंग के एस्पेक्ट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था फ्रेंच थिंकर ने. ओके, हिजेमनी भी हमारा एक मार्क्सिस्ट थिंकर का ही आइडिया है. हिजेमनी क्या है? हिजेमनी इज कंट्रोल विद कंसेंट. कंट्रोल, कंसेंशुअल कंट्रोल, consensual control, that is your hegemony. और ये कॉन्सेंट को पहले मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर इसको यूज कर उन्हीं सेट ऑफ पीपल को कंट्रोल किया जाता है. इसको हिजेमनी कहते हैं. हैबिटस क्या होता है? हैबिटस इज बेसिकली द सेट ऑफ हैबिट्स जो आपकी सोशल क्लास आपके लिए डिटरमिन करती है. आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, हाउ डू यू ईट, हाउ डू यू इवन सिट फॉर दैट मैटर, आपकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, आपके जो टेस्ट हैं वो सब आपका हैबिटस होता है. एंड हैबिटस इज नॉट जस्ट योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, नो. यू माइट थिंक ये आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रेफरेंसेस हैं. ये डिटरमिन होती हैं बाय द सोशल क्लास दैट यू कम फ्रॉम. ये भी एक मार्क्सिस्ट थिंकर का आइडिया है, पियर बोर्डुआ का आइडिया है. पियर बोर्डुआ भी फ्रेंच थे. तो हाँ, तो मैच कर दिया आपने. एंटोनियो ग्राम्ची विद हेजेमनी, पेनॉप्टिसिज्म विद मिशेल फुको, सिमुलाक्रा, सिमुलेशन, हाइपर रियलिटी विद योर बॉडुलाद, एंड हैबिटस विद बोर्डुआ. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. अच्छा, एक बार वर्क्स भी देख लो कहाँ कहाँ ये आइडियाज आए थे. पेनॉप्टिसिज्म का आइडिया फुको ने डिस्कस किया, डिसिप्लिन पनिशमेंट 1975. बॉडुलाद ने डिस्कस किया था सिमुलेशन सिमुलाक्रा का आइडिया इन 1981. एंड बोर्डुआ ने हैबिटस का आइडिया कहाँ पर डिस्कस किया था? इन द आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस. एंड अपना जो सबसे मेजर वर्क है इनका, डिस्टिंक्शन. और ग्रामची का जो हिजेमनी वाला वर्ड है बच्चे, वो इनके उसमें आया होगा, प्रिजन नोटबुक्स में. ठीक है. You have statements about CCCS. You need to pick the correct statements only. Center for Contemporary Cultural Studies at University of Birmingham, CCCS. You've got 3 statements about it. NTA, usually what NTA does is NTA gives you 5 statements. ठीक है. Suppose NTA ने आपके लिए एक राइटर या किसी थ्योरिस्ट या कोई भी एक चीज सब्जेक्ट मैटर चूज कर लिया. एंड टिपिकल फॉर्मेट क्या होता है? एनटीए क्या करेगा? आपको इस राइटर के बारे में 1, 2, 3, 4, 5. In most cases, they'll give you 5 statements and then they'll ask you pick the correct statements from these 5 statements. ठीक है. तो this is the kind of format जो exact paper में आता है. तो जून में ऐसे questions को आप expect कर सकते हैं. अब क्योंकि 5 statements होती हैं, the question takes longer to solve, क्योंकि आप इसको read through करते हो, decide करते हो, eliminate करते हो, तो question time consuming हो जाते हैं ऐसे. Yup, indeed. CCCS was founded by Richard Hogarth in 64. Stuart Hall served as the director from 68 to 79. Resistance through rituals and policing the crisis were the major publications of CCCS. All 3 are correct. All 3 are correct. ठीक है. CCCS के फाउंडिंग डायरेक्टर हमारे रिचर्ड हॉगर्थ थे, लेकिन हॉगर्थ ने फिर CCCS छोड़ दिया था. तो उनकी डायरेक्टर वाली पोजीशन को किसने टेक ओवर किया था? स्टुअर्ट हॉल ने, who remained the director from 68 till 79, that is roughly a decade. And Resistance through Rituals and Policing the Crisis are both works that came out of CCCS and the writers and scholars from CCCS. दोनों करेक्ट हैं आपके, तीनों करेक्ट हैं आपके. ठीक है. Next question for you people is Paul Gilroy's The Black Atlantic 1993 argues for which of these? Paul Gilroy, you cover him under critical race theory, CRT. You cover him under
TRT, critical race theory. Black Atlantic, what is the idea? A return to African cultural roots as the basis for black identity. क्या ये black idea core idea है, premise है इनका? Yeah, a diasporic transnational black culture constituted through roots rather than through roots. Oh, roots and roots. Okay. The integration of black culture into mainstream European cultural identity, or the incompatibility of black identity with Western modernity. With Western modernity. चलो बता. Hmm. Paul Gilroy, in his 1993 book The Black Atlantic, proposes the central idea, and he proposes in favor of a diasporic transnational black culture constituted through roots rather than through roots. Okay? Next question. Sarah Ahmed's concept of, students, please don't get scared now. You might have a few new terms and new names coming up. I know Sarah Ahmed is a familiar name for you people, but the term could be new. Sarah Ahmed's concept of affective economies, elaborated in her work The Cultural Politics of Emotion, publication year 2004, argues for what? Affective economies term का मतलब क्या है? टर्म किसने प्रपोज किया? सारा अहमद ने प्रपोज किया. सारा अहमद आपकी पोस्ट कोलोनियल क्रिटिक हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के क्रिटिक हैं बाय द वे सारा अहमद. एंड बुक का नाम क्या है? द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ इमोशन 2004. तो अफेक्टिव इकोनॉमीज क्या है? अफेक्टिव इकोनॉमीज, economic systems are driven by irrational emotions rather than by rational self-interest. Did she say that? Emotions do not reside in subjects but circulate between bodies in science, accumulating intensity through sticking to certain objects and others. Emotional labor is primarily form of exploitation in neoliberal capitalism. क्या ये इनका core idea है? या फिर affects are universal biological responses that transcend cultural differences? No. Emotions do not stick to a single body. They do not reside in a single subject, but they circulate between bodies in science, accumulating intensity through sticking to certain objects and others. ये आपका सारा अहमद का core idea है, ठीक है? She says, अब देख लो ध्यान से. She says, emotions like fear or disgust or love, they are not internal states of individual humans. They circulate in societies and cultural economies. ठीक है? They stick to certain bodies. जैसे कि immigrants के साथ a certain emotion will always stick. The emotion of being feeling out of place. ठीक है? Queer, terrorists, through repeated contact, accumulating affective value. This challenges both the biological universalism and cognitive individualism about emotions. Such an interesting idea, है ना? काफी interesting idea है. सारा अहमद affective economies 2004 का work है. The cultural politics of emotions. Next question for you people is the figure of speech chiasmus is identified as what? Chiasmus क्या होता है? I'll give you an example. It's basically a kind of reversal, but then again, reversal not the way antithesis का जो chiasmus का example मैं आपको दे देती हूँ. When you say, you know, अच्छा एक बहुत ही famous statement है ना, वो ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. So again, chiasmus. It's a figure of speech. It's a literary device also. Broadly a figure of speech which can be used in literature. But ultimately देखो, ultimately literary devices क्या होती हैं? Literary devices are nothing but figures of speech. जब ये figures of speech normal language में use होते हैं, language usage में, तो हम उनको बोलते हैं figures of speech. जब यही figures of speech आपके literary literature में use होते हैं, तो we call them literary devices because वो तब literature को enhance करने के लिए use होते हैं, है ना? Okay. तो chiasmus क्या है? The reversal of grammatical structures in successive clauses for rhetorical effect. ठीक है? हाँ, ये most famous example यही है. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John F. Kennedy की statement है by the American president who was assassinated. Okay, iambic pentameter is the meter most commonly used in English dramatic verse. Is that true? क्या iambic pentameter most commonly used meter है? This morning we were discussing कि Emily Dickinson had a preference for other meters, but she did not use the most commonly used meter. She did not use pentameter. She used other meters. Remember?
And the iambic pentameter's pattern of 5 stressed unstressed syllables, sorry unstressed stressed syllables. iambic pentameter में जो foot है वो कैसे बनता है, एक unstressed syllable होगा, एक stressed syllable होगा, और ऐसे का 5 का set होगा, as in 1, then there'll be 2, then there'll be 3, there'll be 4, and there'll be 5. तो ये 5 poetic foot या feet जब ऐसे हो जाएंगे, ये आपके 5 iambs हो जाएंगे, and when you have 5 iambs it becomes iambic pentameter of 5 unstressed stressed feet meters. That natural rhythm of English speech follows. आपका statement 1 भी true है, 2 भी true है, और 2 1 को support भी करता है. Now if somebody does not know ये meters क्या होते हैं बच्चे, again I'll tell you, I had a class on meters in English poetry. ठीक है, आपकी इसी प्लेलिस्ट में आपको meters in English poetry की क्लास मिल जाएगी, because I know a lot many of you do not know the meaning of terms like tetrameter, diameter, dactylic, hexameter, iambic pentameter and all these. तो उस क्लास को एक बार रेफर कर लेना. नेक्स्ट, हाँ ये देखो, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द मीटर्स इन इंग्लिश पोइट्री इज, आपको मेट्रिकल फीट को मैच करना है उसकी डेफिनेशन के साथ. नाउ इफ समबडी इज वंडरिंग कि ये फीट या फुट क्या होता है, अगेन यू नीड टू गो बैक टू द सेम क्लास. ठीक है, लाओ मैं क्लास भी दिखा देती हूँ. इन योर प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इसी प्लेलिस्ट में देख लेना, कहीं तो क्लास मिल ही जाएगी. नहीं, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं है आज. अच्छा, ओके, है, दिस इज द लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक है इंग्लिश लिटरेचर की, तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना. एंड there's a class on meter in English poetry. उसमें से इट्स अ स्मॉल लिटिल क्लास, लेकिन एक बार आप उसको देख लोगे तो आपका कभी जो मीटर्स का कंफ्यूजन रहता है ये क्लियर हो जाएगा. तो मेक श्योर करना इस क्लास को कवर कर लो. ठीक है, देन यू विल नो कि ये iambic pentameter, hexameter ये सब कुछ क्या होता है. तो डेक्टाइल, एनाफेस्ट, ट्रॉकी, स्पॉन्डी सब डिस्कस किया है वहां पर. तो बता दो आंसर, मैच कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज मैच. ठीक है, या तो ऑन आंसर इज 1 इज करेक्ट. टेक्टाइल क्या होता है बच्चे, टेक्टाइल में क्या होगा आपके पास, एक सी, प्लीज फोकस, टेक्टाइल को आपने मैच किया डी के साथ, एक स्ट्रेस्ड होगा फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड. ठीक है, डम डा डा, डम सिग्निफाइज स्ट्रेस. ठीक है, टेक्टाइल में क्या होगा, एक ऐसा पोएटिक फीट जिसमें यू हैव 1 स्ट्रेस सिलेबल एंड 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. एनापेस्ट में 2 अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस. तो डेक्टाइल का ऑपोजिट है, रिवर्स है एनापेस्ट. ट्रॉकी में 1 स्ट्रेस्ड 1 अनस्ट्रेस्ड. तो ट्रॉकी किसका रिवर्स है, ट्रॉकी में क्या है, यू हैव अ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड. तो ट्रॉकी इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ विच पोएटिक फीट, जस्ट लाइक डेक्टाइलिक एंड एनापेस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं. और स्पॉन्डी में क्या होगा, दोनों स्ट्रेस होंगे, एंड ये वाला बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन उसमें दोनों स्ट्रेस होते हैं. दोनों स्ट्रेस होते हैं तो आपको बच्चे उस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है. यू टू स्लो डाउन, यू टू स्लो डाउन, राइट. सो या, तो इस, हाँ, एंड दिस इज द क्लास बाय द वे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मीटर इन इंग्लिश पोएट्री. डू रेफर टू दिस क्लास इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द आयम्बिक का ऑपोजिट हो जाएगा आपका ट्रॉकी, बिकॉज आयम में क्या होता है, अनस्ट्रेस पहले होता है फिर स्ट्रेस्ड होता है, अभी डिस्कस कर रहे थे. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रॉकी इसका ऑपोजिट है. ठीक है, इन क्लासिकल रिटोरिक सिनिक्टिकी रेफर्स टू व्हाट, सिनिक्टिकी क्या होता है, इट्स ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइस की तरह भी यूज होता है. तो व्हाट इज सिनिक्टिकी टू बिगिन विद, it's a figure where part represents the whole or whole represents the part. Okay, the attribution of human qualities to non-human entities. Okay, the use of related words as a substitute for the actual referent, the deliberate omission of conjunctions between clauses. Synecdoche.
Synecdoche is actually when you refer to a part by using the word for the whole, and you refer to the whole of something by referring to the part of it. For example, if you say, uh, I am on the wheels right now. What your meaning is that I am basically driving or riding right now. So wheels signifies your vehicle. It could be a bike, could be a car, right? So when you refer to the whole vehicle, but by using a word of the part of it, that is synecdoche. So by that logic, option number one is your correct answer. Okay, option number one is your correct answer. Okay. For example, in Hard Times by Charles Dickens, the workers are referred to as hands. Obviously, the word hands actually refers to the complete workers, but only a part of them, only a part of their bodies, hands, that is used for the whole worker. That is also synecdoche. Consider the following Aristotelian rhetorical appeals. Okay. And then you need to pick the true ones, correct ones. एरिस्टोटेलियन रिटोरिकल अपील्स में से आपको ट्रू वाली पिक करनी है. एथोस, पेथोस एंड लोगोस. लोगोस, ओके. डिड एरिस्टोटल टॉक अबाउट लोगोस आल्सो? एथोस क्या है? टू द इमोशनल अपील टू द ऑडियंस. पेथोस क्या है? टू द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड मॉरल कैरेक्टर. लोगोस क्या है? रेफर्स टू लॉजिकल आर्गुमेंटेशन एंड रीजन. एरिस्टोटल ने इनमें से किस किस की बात की थी? रिटोरिकल क्या होता है? रेटोरिक क्या होता है? द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग समबडी, द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी. ठीक है, तो आप किसी को परसुएड करने के लिए, कन्विंस करने के लिए इनमें से किस किस चीज का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लोगोस, राइट. लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेशन एंड रीजन का यूज करना. ठीक है, लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेशन एंड रीजन का यूज करना. चलो, ओके, ठीक. एथोस गलत क्यों है? It is not the emotional appeal to the audience. Ethos is actually the credibility of the speaker. ठीक है. Pathos यहाँ पर given है. It is the speaker's credibility. Actually pathos क्या है? ये emotional appeal of the audience है. तो इसको आपको घुमाना है basically. ठीक है. ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. Third वाला correct. Third वाला is correct. Okay. Next question for you people is, Noam Chomsky's language acquisition device (LAD) hypothesis claims what? नोम चॉम्स्की द अमेरिकन लिंग्विस्ट. हाइपोथेसिस क्या है इनका? रेडी वाला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाला. चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंटायरली थ्रू इमिटेशन ऑफ अडल्ट स्पीच. क्या चॉम्स्की ने ये कहा है? बिल्कुल भी नहीं कहा है. इनफैक्ट चॉम्स्की ने कहा है कि चिल्ड्रन ऑलरेडी पोजेस एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, है ना. Humans are born with an innate biologically endowed capacity for language acquisition. बिल्कुल. Chomsky says, well, humans already have a chip like thing. जैसे एक चिप होती है, तो humans में भी एक LED, एक डिवाइस है जो already inserted है, so that they already are competent to use language, right? They already know language. Language innate है from within. When they are born, they are born with it. Language development is purely social and environmental process. No, Chomsky का innateness hypothesis है, उसके साथ align तो करेगा ही नहीं है बिल्कुल भी. LED allows children to acquire any language equally easily at any age. No, this is your correct answer. This is your correct answer. Okay, match the following. आपको match करना है 4 terms को. All these 4 terms are from language. Linguistic definitions आपको बतानी है. You have suprasegmental features. You have diglossia. You have allophones, and there is morpheme also. And there is morpheme. Okay. हाँ जी. Morpheme, morphology, morpheme, smallest unit, smallest form. Allophone, set of phones is called allophone. है ना. Diglossia, di means two, glossia, glossia means tongue, right? Multiple tongues. तो बताओ. And suprasegmental features. A predictable phonetic variant of a phoneme in a given environment. ठीक है, वो आपका हो जाएगा allophone. A situation where two language यानी di varieties coexist in a community, diglossia.
Meaningful unit of a word is called morpheme. And please focus, new term for you people. Suprasegmental features क्या होते हैं? When you utter speech, the pitch, the stress, the tone, the intonation operating above the levels of individual segments. ठीक है? जो आप intonation, pitch और stress और tone use करते हो while speaking, that is the suprasegmental features. So that makes your option number A is your correct answer indeed. Next question. Ben Johnson's theory of humors in drama refers to which of these? Ben Johnson ने हमारे जो bodily fluids होते हैं, humors होते हैं, right? उस biology वाले concept से अपना एक theory of humors propose किया था, and then based on that theory of humors he created his fictional characters in his place. तो ये theory of humors है क्या Ben Johnson का? Is your next question. चलो बताओ. किसी को इस टाइम पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो नहीं हो रहा है कि हम रात के व्हाट टाइम इज इट, इस टाइम पर बैठकर आई कैन इजीली वॉच अ नेटफ्लिक्स शो, आई कैन टॉक टू अ फ्रेंड, और मे बी आई कैन सिंपली जस्ट स्क्रॉल थ्रू इंस्टाग्राम, I can look at reels and shorts and whatnot, and what am I doing, why am I studying? Anyone who's in that state of mind? देखो नेट तक की बात है, उसके बाद आई नो दिस इज समथिंग दैट यू हर्ड ऑल योर टीचर्स से, बट उसके बाद मजे ही मजे हैं. ठीक है, आई नो योर 12th टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू 12th का बोर्ड कर लो, मजे ही मजे हैं. 10th के टीचर्स ने कहा होगा, फिर उसके बाद कॉलेज के टीचर्स ने कहा होगा, मास्टर्स में भी कहा होगा प्रोफेसर्स ने कि मास्टर्स कर लो एंड देन यू कैन हैव ऑल द फन इन योर लाइफ, राइट? तो तो आई एम ऑनेस्टली जेन्युइनली सेइंग दिस, बस नेट कर लो, फिर उसके बाद things will get sorted. Many things will get sorted. I'm not saying the moment you clear your net you'll get a job. I'm not saying the moment you get your net you'll end up becoming an assistant professor, that too on a permanent basis somewhere, right? All I'm saying is many things become clearer to you once you have your net JRF. ठीक है, एक डायरेक्शन मिल जाएगी. तो जॉनसन ने कहा कि कॉमेडी दैट एम्स एट मॉरल इंस्ट्रक्शन थ्रू सटायर ऑफ एग्जैजरेटेड कैरेक्टर टाइप्स, मतलब हर एक कैरेक्टर टाइप एक ह्यूमर से डोमिनेट होता है. ठीक है, आइडली क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी ये फ्लूइड्स हैं, जितने भी ह्यूमर्स हैं, बैलेंस में होने चाहिए टू मेक अ हार्मोनियस होल. लेकिन बेन जॉनसन क्या करते हैं, एक एक ह्यूमर को उठाते हैं और अपने एक कैरेक्टर पर डोमिनेट करने देते हैं. तो एक एक कैरेक्टर के ऊपर एक एक ह्यूमर डोमिनेट करता है, वो उनका पर्सनालिटी ट्रेट बन जाता है. ठीक है, चलो, व्हाट आर द 4 ह्यूमर्स? ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. Milton's Paradise Lost employs what verse form? Easy peasy question. Easy peasy. And there's nothing called maza. देखो, I think humans need illusions to survive, to live by. है ना? कभी कभी delulu होना helps, right? So I would not name a delulu जो हमारे context में, हमारे country के context में, there's a term that would exactly convey the idea that I'm trying to convey, but I would not use that term. Let me use the term American dream. So American dream was something of an illusion, but then when you have an illusion that makes you work towards your goal, it's a good illusion, है ना? आप अगर उस illusion के अंदर रहकर, उस bubble के अंदर रहकर, it makes you work towards your goal, it's a good illusion, right? So let me just give you an illusion कि net clear होने के बाद you'll have the best life of, the best fun of your life, and it should help. So Milton's Paradise Lost was actually written in blank verse in unrhymed iambic pentameter lines. This is your correct answer. Next question for you people is, in fact, हाँ, मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट के प्रीफेस में जस्टिफाई भी किया था अबाउट व्हाई ही चोज टू राइट इन iambic pentameter lines, जो कि unrhymed lines हैं, यानी blank verse में उन्होंने क्यों लिखा? उन्होंने कहा that I want to recover the ancient liberty from the troublesome bondage of rhyming. He said I did not want the limitation of rhyming मैं अपनी poem पर impose करूँ, and that too if I'm going to write a poem जिसमें कितने number of words हैं,
कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं? नियरली 10,500. He says, I was not going to limit my writing by the restriction of rhymes, and so I just decided to write unrhymed meter, which is blank verse. Pathetic fallacy, term coined by John Ruskin, describes what? Pathetic fallacy क्या होता है? Okay, what is pathetic fallacy? अच्छा, बाय द वे, नाम से एविडेंट है ना, रस्किन ने जब ये टर्म कॉइन किया था, ही ऑल्सो मेंट दैट दिस इज एक्चुअली अ मिस्टेक. ठीक है, ही ऑल्सो मेंट इट एज अ मिस्टेक. आज इसका बट एक कॉनोटेशन है वो न्यूट्रल हो चुका है. सो टुडे वी कॉल इट nothing but a simple literary device. Although when he talked about it, he said, well, this is a mistake, this is a folly, right? And John Ruskin तो वैसे भी art critic हैं, so he said कि whenever I see pathetic fallacy, it kind of does, he did not like it. Basically, what was pathetic fallacy? When we attribute human emotions to nature or to non-human things, right? To inanimate objects, जब हम human emotions attribute कर देते हैं, that is pathetic fallacy. ठीक है? For example, जब हम कहते हैं the sad clouds, this is pathetic fallacy. जब हम कहते हैं the angry storm, give me more examples of pathetic fallacy. Or a dull day, a gloomy morning. अब बच्चे क्या कर रहे हो? नेचर की चीजों को ह्यूमन इमोशंस एट्रीब्यूट कर रहे हो. ग्लूमी, एंग्री, सैडनेस, डलनेस, राइट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलिसी. अब आप कहोगे मैम सिमिलर चीज तो पर्सोनिफिकेशन में भी होती है. सो हाउ इज पर्सोनिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम पैथेटिक फैलिसी? कैसे डिफरेंट है पर्सोनिफिकेशन पैथेटिक फैलिसी? बच्चे पर्सोनिफिकेशन में आप किसी भी नॉन पर्सन या इनएनिमेट चीज को कंप्लीट ह्यूमन की तरह एक्ट करवाते हो. ठीक है? When the clouds start walking and talking like humans, when the daffodil flowers start dancing like humans, that is personification, right? जब actions भी जो humans perform करते हैं, the same actions are when they are performed by non-human things, that is personification. Acting like a human is personification. Feeling like a human is pathetic fallacy. If I want to simplify it, although ये भी थोड़ी oversimplification है, but in order to make it understand to you, I could simply put it like this: acting like humans is personification, acting like persons. ठीक है? For example, death, arriving in a carriage. Imagine एक उबर में आपके पास death आए और आपको पिक करने आए, saying I am your Uber driver. ठीक है? Imagine उबर या ओला की कैब आती है, and who is driving this Uber cab? Death is driving this Uber cab. Death is the driver. So बच्चे, death acting like a proper human and doing things that humans do, like driving, this is personification. So when Emily Dickinson says that death came to me in a carriage, that was personification. Hello. Okay, students, can you hear me now? I did not realize I was on mute and I was going on and on about pathetic fallacy and personification and this and that. So, can somebody please confirm? अभी audible है? हाँ ठीक है. Ma'am did not realize. Ma'am कभी-कभी gets lost in teaching and does not look at your comments. अब मुझे बताइए, am I audible now clearly? ठीक है, pitch भी ठीक है. तो कहाँ तक सुन लिया था? What was I telling you people? Pathetic fallacy explain कर दिया था, but did I also tell you how
personification is different from pathetic fallacy. उतना पार्ट ऑडिबल था या नहीं था, या सुना ही नहीं? मैम अपने आप में ही बोल गई. Personification versus pathetic fallacy, is that clear, or should I repeat myself once and then we can move on to the next question about Jane Austen? Yes ma'am, that was done. चलो फिर Jane Austen का question करते हैं. Jane Austen's novel employs free indirect discourse extensively. Is that true? Jane Austen की novels में free indirect narrative होता है क्या? अभी question में अभी mention आया था, Emma novel का example आया था. Free indirect discourse allows Austen's narrator to simultaneously voice a character's inner thoughts and maintain ironic narrative distance also. Okay, next question. Till Emily Dickinson we heard. So all I was saying is when non-humans act like humans, that is personification. When inanimate things act like persons, that is personification. Death coming to you as a carriage driver, as an Uber driver would be personification. But the clouds feeling sad or the a storm being angry, that is pathetic fallacy. So that's a minor difference between the two terms because बहुत ही common चीजें हैं इन दोनों में. जेन ऑस्टन की नॉवेल्स में फ्री इंडायरेक्ट डिस्कोर्स होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज फ्री इंडायरेक्ट डिस्कोर्स क्या करता है, इट इनेबल्स द राइटर टू साइमल्टेनियसली वॉइस अ कैरेक्टर्स इनर थॉट्स आल्सो, बट आल्सो मेंटेन एन आयरॉनिक डिस्टेंस. दोनों करेक्ट हैं, ठीक है. स्पेसिफिकली ये नॉवल, कौन सी नॉवल में ये टेक्निक यूज की है जेन ऑस्टन ने? इन द नॉवल एमा. ओके. Which of the following statements correctly identifies the narrative technique of William Faulkner's novel The Sound and the Fury? The Sound and the Fury by William Faulkner, the American writer. उसमें narrative technique कौन सी है is your next question. चलो बताओ. It uses an omniscient third-person narrative with a linear chronological structure. It uses 4 different first-person narrators with shifting in temporal sequence and including perspective of an idiot also. Does it use an epistolary form composed of letters from 3 competent siblings, or it deploys a frame narrative in which a detective reconstructs events through the multiple testimonies? बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? Yes, indeed. 4 different narrators हैं, चारों के चारों first person narrators हैं, और नॉवल में काफी सारे टेम्पोरल शिफ्ट्स है, एज एन इट शिफ्ट्स बैक एंड फोर्थ इन टाइम, इंक्लूडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इडियट एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1929 की नॉवल है बाय द वे, द साउंड एंड द फ्यूरी. 1929 में और क्या पब्लिश हुआ था? योर रूम ऑफ वन सोन also was published in 1929. Next question. Which of the following statements about the theatre of the absurd are correct? You have 3 statements. उसमें से absurd ड्रामा के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो पिक कर दो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये टर्म मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया था 1961 में. बिल्कुल कॉइन किया था, करेक्ट है. यूजीन यूनेस्को's राइनोसोरस एंड आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर बोथ एब्सर्डिस्ट प्लेज? नो, इनफैक्ट ये तो रियलिस्ट ड्रामा है ना, डेथ ऑफ अ सेल्समैन. तो सेकंड को हम रिमूव कर देते हैं. और एब्सर्डिस्ट ड्रामा ऑफन यूजेस सर्कुलर और नॉन प्रोग्रेसिव प्लॉट स्ट्रक्चर्स. बिल्कुल रिपेटिटिव एक्शंस होते रहते हैं इसके प्लॉट में, लेकिन सर्कुलर मूवमेंट होती है एक्शंस की, प्लॉट की, लीनियर नहीं होती. परफेक्ट एग्जांपल वुड बी वेटिंग फॉर गोडो, अ प्ले इन 2 acts. एक्ट 1 में भी सेम चीजें होती हैं, एक्ट 2 में भी सेम चीजें होती हैं. दिस इज व्हाई अ रिव्यूअर फेमसली रिव्यूड द प्ले बाय कॉलिंग इट अ प्ले वेयर नथिंग हैपेंस ट्वाइस. राइट, क्या कहा था रिव्यूअर ने कि वेटिंग फॉर गोडो इज अ प्ले वेयर नथिंग हैपेंस बट ट्वाइस. Nothing happens twice. Why twice? Because it is a tragedy. It is a tragicomedy in 2 acts. So in both the acts, nothing happens. So he says nothing happens twice. So yes, the plot is indeed cyclical or repetitive, but definitely not linear. यानी non-progressive plot होता है. 3 भी correct है, 1 भी correct है, लेकिन 2 incorrect है. So 1 and 3 are the correct answers. Good. Next question for you people is, in Jacques Derrida and his reconstruction, the concept of logocentrism refers to what? बच्चे देखो, डेरिडा
being the father of deconstruction, इन्होंने काफी सारी neologisms भी दी थी अपनी deconstructive theory को समझाने के लिए, right? What are neologisms? Neologisms are new terms that he gave to explain his idea, to convey his idea. For example, aporia was a term that he gave. Difference was a term that he gave. Remember difference, the combination of differ and differ. So, yeah. तो अनदर टर्म, वैसे ये इनका कॉइनेज नहीं है, बट द टर्म इज कॉल्ड लोगोसेंट्रिज्म. अल्टीमेटली इन्होंने इस लोगोसेंट्रिज्म को क्या किया था? डिड ही एडवोकेट, डिड ही फेवर दिस और डिड ही चैलेंज दिस? Did Derrida favor logocentrism or did he challenge logocentrism? Derrida ने कहा this obsession, this fixation over the spoken word, on the spoken word over the written word, this preference of the spoken word over the written word, this is logocentrism. The privileging of speech, इन्होंने कहा कि वेस्टर्न फिलोसफी को आप उठाकर देखिए, and somehow spoken word has been considered primary and written word has been considered secondary. Spoken word यानी जो speech है उसको ज़्यादा immediate माना जाता है, क्योंकि once somebody says something आप immediately उसको सुन सकते हो, ठीक है? तो spoken word यानी speech is considered primary and written word is only considered a derivative of spoken word. इस idea को क्या कहते हैं? इस spoken word की fixation को Derrida says this is logocentrism, and Derrida ultimately इस logocentrism को criticize करते हैं. He says there should be no privileging of one element of binary over the other. ठीक है, क्योंकि ये binaries reverse हो सकती हैं, which is the core idea of post-structuralism. ये जो binaries हैं ये stable है ही नहीं, they can be reversed. Correct answer. So Derrida's logocentrism refers to the Western metaphysical tradition's privileging of spoken language over the writing language, which is treated as a secondary and derivative part only. In Of Criminology, 1967 work by Derrida, Derrida deconstructed this hierarchy, arguing that writing or written language is actually prior and that the presence of speech claims is always already deferred. ठीक है, तो Derrida ने इसको reverse कर दिया या inverse कर दिया. चलो, next question for you people is Jacques Lacan's distinction between imaginary, symbolic and the real. These are the three registers, psychoanalysis के registers हैं. Registers क्या होते हैं बच्चे? वो terms होते हैं जो किसी specific field के लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल रजिस्टर्स, लीगल रजिस्टर्स. सो साइको एनालिसिस में दीज आर सम रजिस्टर्स. ठीक है, आप कहोगे कि मैम रियल का तो अपना एक मीनिंग होता है. द वर्ड रियल हैज अ मीनिंग, द वर्ड symbolic has a meaning, the word imaginary has a meaning, yes, but in terms of psychoanalysis, like Lacanian psychoanalysis में these words have different meanings, so they are relevant to literary criticism. Why? ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो टर्म्स हैं, जो फैंसी से टर्म्स लका ने प्रपोज किए थे, लिटरेचर के लिए रेलेवेंट कैसे हैं? It provides a three-stage model for childhood development reading. The symbolic of language and the law of the father structures desire and subjectivity, enabling analysis of how subjects, meanings, and meanings are constituted in text. It shows that literature functions as wish fulfillment in the imaginary register only. The real corresponds to the actual historical world that literature represents. No, this is your correct answer. ठीक है, symbolic, real and imaginary. तो रियल से आपका जो कनेक्शन है, ऐसा लका ने कहा था. He said, well, the connection that you have with the real, it is severed forever, it ends forever the moment you start speaking language, because now you become part of the symbolic order. अब आप वर्ल्ड का पार्ट बन चुके हो, तो आपका जो कनेक्शन रियल के साथ था वो खत्म हो चुका है. ठीक है, ओके. Which of the following correctly identifies the narrative structure of R.K. Narayan's Malgudi Days? Next question is from Indian writing in English. English literature, Indian literature or Indian writing in English. Okay. A novel with a single protagonist across interconnected chapters set in Malgudi, which is a fictional setting of R.K. Narayan. Is that correct? A collection of short stories set in the fictional South Indian town of Malgudi. Is that correct? An autobiographical account of Narayan's own childhood that he spent in Mysore. Is that correct? Or a series of linked novels showing the life of Swaminathan across different generations. मालगुडी डेज आर.के. नारायण नैरेटिव टेक्निक क्या है? बिल्कुल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो कि मालगुडी नाम के इंडियन टाउन में सेट हैं. बच्चे, ऑल्दो द टाइटल इटसेल्फ कन्वेज कि मालगुडी की सेटिंग को यूज करने वाला ये वर्क है मालगुडी डेज. वाज दिस द फर्स्ट टाइम दैट आर.के. नारायण वाज यूजिंग द सेटिंग ऑफ मालगुडी फॉर अ वर्क ऑफ फिक्शन?
Hmm? Was Malgudi Days this work the first work where he uses the fictional setting of Malgudi? The fictional setting of Malgudi? बताओ. No. ये fictional setting ये already use कर चुके हैं for his debut novel which is Swami and Friends. What was the publication year of Swami and Friends? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स में इसको यूज कर लिया था, मालगुडी डेज में भी यूज कर लिया, गाइड में भी यूज कर लिया फॉर दैट मैटर, राइट. द गाइड में भी इन्होंने मालगुडी की सेटिंग को यूज किया था, बट फर्स्ट वर्क ये था. ठीक है. पब्लिकेशन ईयर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इट वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? द डेब्यू नॉवेल बाय आर के नारायण. कूल. मालगुडी डेज का पब्लिकेशन ईयर क्या है? 1943 है. इट इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. The confessional poetry movement in American literature is associated with which of these? Confessional poetry in American literature. Otherwise, we could have connected it to Kamala Das also, but here specifically American literature. 1935. Yes, indeed. 1935 में आर के नारायण का डेब्यू नॉवल आया और 1935 में एक और राइटर की डेब्यू नॉवल आई है. ही इज आल्सो इंडियन. हु इज दैट राइटर? हु इज दैट राइटर? Who is it? Confessional poetry is the kind of poetry where the author or the writer, sorry, the poet pours in, they pour in, right? Without any filters, they will pour in all their experiences of their sexuality, their mental health problems, everything that is very, very private to their life. They will pour everything in without any filters, without any inhibitions into their poetry. So intensely personal poetry, drawing on private experiences of mental illness, sexuality, फैमिली ट्रॉमा, डिसफंक्शनल फैमिली की डिस्कशंस हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल सिल्विया प्लैथ डिस्कसिंग द रिलेशन दैट शी हैड विद हर फादर इन द पोएम डैडी. इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कन्फेशनल पोएट्री. इसमें हमारे पास एन सैक्सन आती हैं, रॉबर्ट लावेल आते हैं एंड सिल्विया प्लैथ ऑफ कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरलिस्ट राइटर Theodore Dreiser is best associated with which of these? Theodore Dreiser is best associated with which of these? Next question. Okay. ठीक है. अनटचेबल, यस 1935 का अनटचेबल भी है बाय मुल्कराज आनंद. 1935 का स्वामी एंड फ्रेंड्स भी है बाय ऑफ कोर्स योर आर के नारायण. ठीक है. चलो. रेड बैच ऑफ करेज इज नॉट अ वर्क बाय थियोडोर ड्रेजियर. ये तो वैसे ही आप रिमूव कर दो. किसका वर्क है ये रेड बैच ऑफ करेज? इज इट अ वर्क बाय थियोडोर ड्रेजियर? ओह राइट 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 राइट. ठीक है. तो बच्चे आंसर हो जाएगा सिस्टर कैरी एंड एन अमेरिकन ट्रेजेडी. बोथ दीज वर्क्स दे डिटरमिन द फोर्सेस ऑफ बायोलॉजी एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल लाइव्स. तो ये जो नेचुरलिज्म है वो आपको थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में भी देखने को मिलती है. द सेम काइंड ऑफ नेचुरलिज्म इज आल्सो सीन in the works of Theodore Dreiser. The works are Sister Carrie and An American Tragedy. Correct answer हो जाएगा. Next question for you people is. अच्छा, by the way, what classes do we have tomorrow, day after tomorrow, and the day after that? क्या classes है हमारी? Six p.m. tomorrow. We're going to meet for what class? We'll move on with the questions, but एक बार बता दो कौन कौन सी क्लासेस हैं. कल का स्केड्यूल क्या है? 18 जून at 6 p.m. We are going to meet for what? 19th June at 6 p.m. What are we going to meet for? 20th June 6 p.m. Most importantly, on 20th June 6 p.m. what do we have? 25 क्वेश्चन सॉर्ट करने हैं अगर एक ही क्लास के थ्रू. 20th जून को हमारे पास क्या होने वाला है? all literary theories, all literary theorists and only previous year questions from all the literary theories. theory wise previous year questions करेंगे. ठीक है. theory wise करेंगे यानी मार्क्सिज्म के PYQs कर लिए, मार्क्सिज्म की डिस्कशन की, ऑल मार्क्सिस्ट की डिस्कशन की एंड देन मार्क्सिज्म की PYQs. लाइकवाइज फेमिनिज्म की डिस्कशन की,
सारे के सारे feminist thinkers discuss किए and then उसके PYQs, right? That's how we'll move ahead with it. Yeah. 19 जून को you have what and 18 जून को क्या classes हैं, पहले ये बता दो फटाफट से, very quickly. Chronology and one-liner sessions, yes, ठीक है. And tomorrow at 8 a.m. what do we have? कल आपका 8 a.m. क्या है? AI generated question paper जो हम solve कर रहे हैं उसका final part है, उसके बाद आपके 100 questions का set complete हो जाएगा. So do definitely join that. Next question, Ngugi wa Thiong'o's decision to stop writing in English, which he announced in his famous work Decolonizing the Mind 1986, represents what? When Ngugi wa Thiong'o said, I am not going to write in English, I'm going to go back to my own language, which is Gikuyu language. और ये अनाउंसमेंट उन्होंने कहाँ की थी, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दे दी थी in his 1986 essay Decolonizing the Mind. So what does this decision represent? This decision, this choice made by the writer represents what? Okay, this represents a rejection of all narrative fiction in favor of political activism, a cultural political act of resistance, arguing that writing in Gikuyu is essential to decolonize the African mind. हाँ, बिल्कुल correct है. अच्छा, in contrast, there's another writer who also had to choose between either his own language or the language of the colonizer, but he made the other choice. While Ngugi wa Thiong'o very clearly makes the choice of returning to his native language, Kikuyu, and abandoning or bidding farewell to English language, another writer, also a very prominent African writer, he chooses to continue writing in English language because he says, well, English language को use करना to tell my own story, that is not an act of being colonized. Rather, that is an act of being resistant. That is an act of resistance. Think of Raja Rao. Raja Rao ने क्या कहा था? Yes, I do agree that English is a foreign language, but आप ultimately उस foreign language को use कर जब अपनी कहानी बताओगे, right? In a way, you are resisting against the colonizer. Likewise, Chinua Achebe had a similar line of argument. ठीक है, Chinua Achebe. Salman Rushdie's concept of imaginary homelands suggests that migrant writers produce a partial, subjective, necessarily fictive reconstruction of their homelands. क्या सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड्स का आइडिया ये है कि जितने भी राइटर्स डायस्पोरा के राइटर्स हैं, राइटर्स हु आर आउटसाइड देयर कंट्रीज, जब वो लिखते हैं अबाउट देयर कंट्रीज, द काइंड ऑफ image that they create of their home countries in their novels or their fiction is actually an imaginative or fictive reconstruction of their homelands, because they can't go back to the homelands now. Okay, so they create a reconstruction of their homelands. Is that correct? And the reason is, Rushdie argues that migrant writers' perspectives from outside enables them to produce more accurate and complete representations of their homelands rather than somebody who lives within the country. क्या सलमान रुश्दी का ये भी एक argumentation है कि एक राइटर जो कि कंट्री के बाहर जाकर उस कंट्री के बारे में लिखता है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव से उस कंट्री को व्यू कर पाता है, they can give a better picture of the country than somebody who is writing from within the country. Is this also an idea that Salman Rushdie proposes or advances? Salman Rushdie, very, very important. I'm telling you once again, Amitav Ghosh, Margaret Atwood, Salman Rushdie, Toni Morrison, Thomas Hardy, Charles Dickens, these are those writers whose novels are at least 14 to 15 novels, if not more. तो इनमें से क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हैं, फ्यूचर में भी आ जाएंगे. इनकी क्रोनोलॉजीज बहुत सॉलिड करोगे बताने, ठीक है. या तो द आंसर इज बच्चे, स्टेटमेंट देखकर ही एविडेंट हो जाएगा ना बच्चे, ऐसा कैसे पॉसिबल है दैट समबडी हु इज राइटिंग फ्रॉम आउटसाइड कैन गिव अ बेटर पिक्चर. क्या रुश्दी ऐसा क्लेम करते नहीं करते? तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. बट रुश्दी इंडीड सेज कि जो राइटर इंडिया से या किसी भी कंट्री से बाहर जाकर उसके बारे में लिखता है, बिकॉज दे कैन नॉट गो बैक टू देयर कंट्री, सो इन देयर वर्क्स दे क्रिएट a fictive reconstruction of their homelands, and this is called imaginary homeland. Assertion is true but R is false. Next question. अच्छा, ये essay का collection कब का है? 1982 का essay collection है. Dick Hebdige's study of bricolage, his concept of bricolage applied to subcultural style and subculture, the meaning of style.
1979 स्टडीज वॉट मैं वो हमने इनको कल्चर स्टडीज में जो सब कल्चर की स्टडीज है उसमें कवर किया था डिक हेब्डाइज। सो सब कल्चर द मीनिंग ऑफ स्टाइल में यूथ सब कल्चर एज रेजिस्टेंस की बात की थी इन्होंने। तो ब्रिकलाज का कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे अप्लाई किया और क्या मतलब है ब्रिकलाज का इज द क्वेश्चन। दैट्स द क्वेश्चन। इन्होंने क्या क्या स्टडी किया था। सब कल्चर, द वे पीपल ड्रेस्ड अप, स्पेशली जो ब्रिटिश यूथ था आफ्टर वॉर, पंक सब कल्चर, टेडी बॉयज, है ना। तो ब्रिकलाज का कॉन्सेप्ट अगेन अगेन अगर आपको जनरल ब्रिकलाज का कॉन्सेप्ट पता है, द स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव अप्रोप्रिएशन ऑफ मास प्रोड्यूस कल्चरल ऑब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट न्यू सब कल्चरल मीनिंग्स। मतलब जो आपके पास अवेलेबल एट हैंड चीजें हैं, अब उन्हीं को रिवर्क करके एक न्यू सब कल्चरल मीनिंग जब प्रोड्यूस करते हो, दैट इज ब्रिकलाज। ठीक है, स्टाइल एज रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। अब नया राइटर या नया नाम देखकर डरना नहीं है। द ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी 2012 का वर्क है ब्यूंग चुल हैन का, ठीक है। एंड द बर्नआउट सोसाइटी 2010 का वर्क है बाय द सेम राइटर। द ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी एंड द बर्नआउट सोसाइटी, both these works present a new direction in cultural criticism. His central argument is that contemporary society is characterized by what? In both these works, Byung-Chul Han, in both these works, 2010 work, 2012 work, Burnout Society, Transparency Society, he says कि जो आज की society है, contemporary society है, is characterized by which of these? If this is a new culture critic for you, please take a screenshot, please make a note somewhere. Potentially इनमें से question आ सकता है एग्जाम में। चलिए बताइए। Disciplinary power that controls subjects through prohibition and punishment. A shift from disciplinary society of negativity to an achievement of society of positivity that produces depression and burnout. A shift from a disciplinary society of negativity to an achievement society of positivity. Yes. आजकल आप देखते हो द हसल कल्चर। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द हसल कल्चर? बच्चे आजकल हम इस हसल कल्चर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। वी टेंड टू से कि अपने 20s 30s में हसल कर लो, उसके बाद यू विल हैव एन इजी लाइफ, है ना। So we tend to glorify the hustle culture, and that in turn, that toxic positivity also in turn induces depression. ठीक है, so he says there was a time जब disciplinary societies हमें इतना control किया करती थी that it caused negativity. Now we have a pressure of achieving something, and that in turn produces depression. So this achievement society of positivity also in turn produces depression and ultimate burnout. ठीक है, that's your correct answer. Yes, that's your correct answer. Next question for you people is, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग आइडिया है। द कंप्लीट नेम इज ब्यून चुल हैन, ठीक है। तो हैन ने कहा कि डोमिनेंट सोशल पैराडाइम हैज शिफ्टेड फ्रॉम फुको's डिसिप्लिनरी सोसाइटी विच ऑपरेट्स थ्रू यू मस्ट नॉट। बच्चे फुको की डिसिप्लिनरी सोसाइटी में क्या था? सिंस यू वर कॉन्स्टेंटली बीइंग वॉच्ड, आप कुछ चीजें कर ही नहीं सकते थे। यू मस्ट नॉट डू दिस, यू मस्ट नॉट स्टील, यू मस्ट नॉट एक्ट डिफरेंटली, आपको सेक्सुअल डिविएंट नहीं बनना है एंड ऑल दोज। लेकिन अब सोसाइटी शिफ्ट हो चुकी है टू बिकमिंग एन अचीवमेंट सोसाइटी which operates through positivity, although this positivity is also toxic, right? This says yes you can. This excess of positivity, the tyranny of self optimization produces depression, ADHD and burnout. Relevant, ठीक है। तो ये आपका important question है, इसमें से आपका potential question मुझे लगता है नेट में बन सकता है। Done? Okay. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आइडिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ नीडेड। द ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी, द बर्नआउट सोसाइटी, ब्यूंग चुल हैन, द ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी, दोनों के वर्क्स की पब्लिकेशन ईयर पे भी क्वेश्चन पॉसिबली आ जाएगा। ओके, the term caesura in prosody refers to what? What is prosody? The study of poetry and the poetic devices and how that helps in writing poetry. That is prosody, sorry. And caesura क्या होता है? Caesura is one of the earliest poetic techniques जिसका यूज हुआ करता था ओल्ड इंग्लिश टाइम्स की लिटरेचर में, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में। So caesura क्या होता है? Is it the pause or break within a line of verse usually occurring near the middle? क्या एक लाइन के बीच में जब एक पॉज आ जाता है, एक पोएट्री की लाइन के बीच में, कहीं मिडिल के बीच में, क्या वो एक सिजोरा होता है? बिकॉज यूजुअली पॉजेज आते हैं एट द एंड ऑफ द लाइन्स।
final stress syllable that ends a heroic couplet, क्या वो caesura होता है? And the omission of unstressed syllable at the start of a line, क्या is that caesura? Or the addition of an extra unstressed line to the end of a line, is that caesura? No बच्चे. If you got a line, there's a break in that line, ठीक है? And that break makes you want to, when you're reading that line, आप एक pause पर आएंगे, एक halt पर आएंगे, वो middle of the line में जो pause आ जाएगा, that is caesura. And this was very very common in alliterative works of Anglo-Saxon periods. ठीक है? ठीक है, caesura का मतलब क्या होता है? Caesura is a Latin word जिसका English meaning है cut. It's a natural pause that occurs between a line marked by punctuation. Old English literature में caesura was very common. Another example would be, to err is human, to forgive divine. To forgive divine. Alexander Pope. The university wits of the Elizabethan period include all except which of these? Next question. University wits में सब आते हैं इनमें से except one of these. Who's not a part of university wits? Christopher Marlowe तो supreme leader हैं university wits के. Robert Greene is the university wit who also is going to hate on William Shakespeare. He's going to troll William Shakespeare, right? तो मुझे लगता है अगर शेक्सपियर का यूट्यूब चैनल होता, रॉबर्ट ग्रीन वुड हैव बीन दैट कमेंट जो कमेंट्स में जाकर नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं ना अबाउट पीपल हु आर ट्राइंग टू डू वेल, राइट? सो रॉबर्ट ग्रीन वुड हैव बीन दैट पर्सन शेक्सपियर के कमेंट्स में जाकर कि ओ यू आर एन अपस्टार्ट क्रो, है ना? व्हाट ही डिड वाज बेसिकली जो आपके ट्रोल कमेंट्स होते हैं वही कर रहे थे. थॉमस नैश अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के राइटर हैं और ये भी आपकी यूनिवर्सिटी विट हैं. हाउएवर फिलिप सिडनी इज डेफिनेटली नॉट अ यूनिवर्सिटी विट. अच्छा, यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी विट्स का मेंशन आ गया. कौन कौन मिसिंग है? थॉमस लॉज मिसिंग है, जॉन लिली मिसिंग है एंड पील भी मिसिंग है. एंड एडिशनली अगर आप इंक्लूड करोगे, अगर करना चाहते हो, तो थॉमस किड को भी आपको यहाँ इंक्लूड करना है. तो टेक्निकली 7 यूनिवर्सिटी विट्स, बट technically 6 university wits, but sometimes we add kid as well. ठीक है, otherwise 6 हैं. Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash, LLP, Lodge, Liley and Peel. Done? Cool. Yes, the term was given by George Sainsbury. Term बच्चे ये retrospectively मिला इनको. Retrospectively मतलब they existed in 16th century. ठीक है? Back in those times they were not known as university wits. तब ये लेबल उनके लिए यूज नहीं होता था. Later, however, एक क्रिटिक ने उनको ये टर्म यूज दिया एंड देन उनको ये टर्म यूज हुआ. मच लाइक मेटाफिजिकल पोइट्स. अब मेटाफिजिकल पोइट्स जब 17th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, दे डिड नॉट नो कि वो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं. ठीक है, वो तो बाद में जाकर द टर्म वाज ascribed to them. Cool. Next question for you people. एक बार देख लेते हैं. Marlowe, Greene, Nash, Lilly, Lodge, Peel and Kidd. Philip Sidney was an aristocratic poet, courtier, but he was not a university wit. Which Victorian age poet coined the term spasmodic school to satirize the overwrought emotional style of poets like Philip James Bailey? Philip James Bailey जैसे poets के जो over emotional style of writing था, उसको criticize करने के लिए किस Victorian poet ने ये जो term है वो coin किया था, spasmodic school? ऐसे कितने सारे terms है ना. For example, fleshy school of poetry to criticize the pre-Raphaelites. Again, it was a term that was invented only to insult a bunch of poets. Spasmodic school is also a term that a poet came up with to insult the over-emotional style of poets like Philip James Bailey. Philip James Bailey. Tennyson, Aytoun, Robert Browning, Matthew Arnold. एक ही नाम है जो ऑड वन आउट है, जो सुना नहीं हुआ है. विलियम एडमॉन्स्टोन आइटून. ठीक है. He coined the term spasmodic school in his 1854 parody to mock poets like Bailey, Sidney Dobell and Alexander Smith for their excessive emotional bombastic verse. Okay. New fact है तो learn कर लो. 1854 में इन्होंने ये term coin किया था, spasmodic school. ठीक है. Victorian poet. Bloomsbury group, to which Virginia Woolf also belonged, was shaped philosophically by the ideas of which of these thinkers? Bloomsbury group was a group of aristocratic thinkers, intellectuals, writers, painters also. Vanessa Bell भी इसका part थी, E.M. Forster भी इसका part थे. Briefly तो मुल्क राज आनंद भी associate हुए थे with this group. Virginia Woolf तो core part थी इसका, उनके husband भी थे.
But the question says कि ये जो group है it was shaped philosophically by the ideas of which of these? William James की pragmatism, William James the brother of Henry James, the writer of Principles of Psychology 1990, 1890, या फिर Bertrand Russell's logical positivism or the utilitarian ideas of Jeremy Bentham or the Principia Ethica and the value of personal relationship and aesthetic experience as proposed by G.E. Moore. As proposed by G.E. Moore. Okay. Bloomsbury Group valued aesthetics, beauty, right? They talked about beauty and how to create beauty either in literature or in poetry. So obviously beauty का idea, aesthetic experience का idea इनके लिए central था, personal relationships की value इनके लिए central थी, and ये ideas किसके हैं? G.E. Moore के ideas हैं in Principia Ethica. This is your correct answer. Principia Ethica G.E. Moore का 1903 का वर्क है, जिसने ब्लूम्सबेरी ग्रुप के मेंबर्स की आइडियोलॉजी को मेजरली क्या किया था, अफेक्ट किया था. G.E. Moore argued that the greatest goods were the pleasures of human intercourse and the enjoyment of beautiful objects. The human beings together, that is one, source of human delight, and second source of human delight is when you enjoy beautiful things, when you enjoy aesthetics. Okay. Which of the following best describes the critical approach called New Historicism? 1980s में ये जो literary theory है, this becomes very popular in America. It's the US School of Literary Criticism. Stephen Greenblatt is the representative member. He was the best known new historicist, Stephen Greenblatt. इनका जो perspective है, the way they understood history is very different from the traditional way of understanding history, because, and we call it the old historicism way, because this is new historicism. So the traditional way we understood history was the old historicist way. So new historicism का core idea, core premise क्या था? A return to traditional historical biography of authors as key to literary meanings, a method that reads literary and non-literary text together as equally significant cultural documents, examining how power is negotiated between culture. Yeah, यही तो आइडिया है ना कोर टेक्स्ट का. हिस्ट्री एंड लिटरेचर दोनों कोर टेक्स्ट हैं, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, दोनों कोर टेक्स्ट हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. लेट्स नॉट मेक वन मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर. ठीक है, तो ये करेक्ट है. साइमल्टेनियसली आपको दोनों को करना है. बिल्कुल. स्टीफन ग्रीनब्लैट, ऑल्सो लुई मॉन्ट्रोज. दो फिगर्स आपको लर्न करने हैं, लुई मॉन्ट्रोज एंड स्टीफन ग्रीनब्लैट. लुई मॉन्ट्रोज ने ना बहुत ही फेमस डेफिनेशन भी दी थी बाय द वे न्यू हिस्टोरिसिज्म की. क्या कहा था इन्होंने कि न्यू हिस्टोरिसिज्म इज एन अप्रोच दैट स्टडीज the historicity of the text and the textuality of history. How many of you remember हमने क्लास में ये डिस्कस किया था? So you have Stephen Greenblatt, he was a new historicist. Also Louis Montrose. Louis Montrose defined new historicism by calling it a school or a philosophy that focuses on the historicity of the text, as in the historicity of the text, literary text, right? And the textuality of history. A school that also acknowledges कि जो history है is not simply objective retelling of past events. History is also a narrative. उसकी textuality को भी हम study कर सकते हैं. History की textuality और text की historicity दोनों important है. 1980s में ये definition दी थी लुई मॉन्ट्रोज ने. Okay, cool. कमला दास इज माई स्टोरी एंथे कथा है ना, मलयालम ओरिजिनल वर्क जो था वो मलयालम लैंग्वेज में था. तो दी ओरिजिनल मलयालम ऑटोबायोग्राफी जो कमला दास ने लिखी थी, द इंडियन पोएट, ठीक है, कमला सुरैया दास, क्या नाम था उसका? एंथे कथा. एंथे कथा. एंथे कथा एज इन माई स्टोरी, मेरी कहानी. कथा मतलब कहानी, तो माई स्टोरी. My Story 1976 and her poetry collections are significant in English literature, in Indian English literature, because of which of these reasons? They established detective fiction genre. No. Kamala Das, confessional poet. Hmm. Cool.
Obviously they broke taboos about female sexuality. इनकी poetry वैसे भी confessional poetry है, much in it fits very well in the tradition of the kind of poetry that was written by Anne Sexton and Sylvia Plath. She talks about desire, about female desire, body, and yeah, all of this she does in the first person. Okay, correct. Next question. She's also been known as Madhvi Kuti. In Malayalam, she's been called as Madhvi Kuti. Okay. Which of the following best describes the literary technique of iceberg theory as given by, as articulated by Ernest Hemingway? Ernest Hemingway was also an American writer, also a writer who killed himself one early morning. इनकी आइसबर्ग थ्योरी है राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आइसबर्ग थ्योरी हमने क्लास में डिस्कस की है. So what was he suggesting the writer to do through this iceberg theory? Okay. See, he says, when you look at an iceberg and all you see is the tip of the iceberg, he says exactly this is what a writer should aim. A writer should write in a manner that he or she only reveals the tip of the iceberg and let the majority part, the bigger part of the iceberg be submerged in water so that the reader will have to dive into the water and then discover the remaining part. He cannot literally dive. So he says a writer should not explain every single thing. A writer should tell some things and let some things be untold so that the reader can actually interpret them for themselves, right? And this is the iceberg theory of not revealing everything. So he said the idea that deeper meaning of a story should not be evident on the surface. सरफेस पे सिर्फ जो सरफेस पे क्या है, आइसबर्ग का जो टिप है वही विजिबल होना चाहिए. जो स्टोरी है वो डेप्थ में हिडन होनी चाहिए ताकि रीडर को जाकर उसको सर्च करना पड़े. ठीक है. द डिग्निटी ऑफ मूवमेंट कम्स व्हेन द सरफेस व्हेन द डीपर स्टोरी इज हिडन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ ओमिशन कहते हैं. ही सेज द राइटर शुड डेलिबरेटली ओमिट सम डिटेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, there we go. V.S. Naipaul's House of Mr. Biswas, 1961, is significant in Caribbean post-colonial literature for which of these reasons? It uses Afro-Caribbean folk mythology to resist colonial authority. Its tragicomic epic of a colonial subject's quest for individual identity, which is seen in his desire for owning a house, no matter how small or big the house is. This is actually your correct answer. I do not need to go to the other options. It was pretty evident. Next question for you people is Bell Hooks' concept of male gaze as extended in feminist literary studies builds most directly on which of these? Bell Hooks का real name बताओ पहले तो. The real name of Bell Hooks, and Bell Hooks also conceptualized the idea of male gaze by extending the idea and picking the idea from an earlier thinker. तो इन्होंने ये आइडिया किससे पिक किया था? जैक्स लकान के मिरर स्टेज से, या लॉरा मल्वी के साइकोएनालिटिक थ्योरी से ऑफ विजुअल प्लेजर इन सिनेमा, या फिर फूको के आइडिया ऑफ क्लिनिकल गेज से, या फिर जॉन पॉल सार्त्रे की आइडिया से ऑफ द लुक इन बीइंग एंड नथिंगनेस. बेल हुक्स का रियल नेम वाज, yeah, but Bell Hooks' real name was? करेक्ट आंसर इज लॉरा मल्वी का. बच्चे लॉरा मल्वी ने भी इन टर्न वो किससे बोरो किया था? जो गेज का आइडिया है, मेल गेज का आइडिया, फिल्म थ्योरी में तो लॉरा मल्वी ने अप्लाई कर दिया था, ठीक है, विजुअल सिनेमा, विजुअल प्लेजर इन सिनेमा में. लेकिन इन टर्न उन्होंने भी ये जो गेज का आइडिया है बोरो किया था फ्रॉम अनदर वर्क. किसका वर्क था वो? किसका वर्क था? ग्लोरिया वॉटकिंस. यस इंडीड. ऋषिका. वेरी गुड, वेरी गुड. ग्लोरिया जीन वॉटकिंस. This is the real name of this feminist thinker. ठीक है.
but the name that she used is bell hooks, and she stylized her names in lowercase only. So we don't write her name as bell hooks. Instead, what we write it as is bell hooks. Everything is under in lowercase. Okay, bell hooks. Yeah, and Laura Mulvey ने intern ये idea borrow किया था John Berger के ways of seeing. Remember John Berger के ways of seeing. John Berger's ways of seeing. ठीक है. सो एक चेन बन गई वेज ऑफ सीइंग से. लॉरा मल्वी का आइडिया आया मेल गेज का, इंटर्न उसको फिर एक्सटेंड कर दिया बेल हुक्स ने. दैट्स योर करेक्ट आंसर. Bell Hooks extended and critiqued this idea in her essay The Oppositional Gaze 1992. बच्चे this is very very important, please focus on this. ठीक है, चलो करो आंसर. Next question for you people is here, please answer this question. Okay, cool. So yeah, the next question is, an ode is a poetic form which is characterized by which of the following. अच्छा, एक क्लास हुई थी हमारी जिसमें हमने सारी की सारी poetic forms डिस्कस की थी. We did discuss a ballad, we discussed sonnet also, ballad also. तो वहां पर डिस्कशन हुई थी ode की. So what is an ode? A poem in exactly 14 lines. That would be a sonnet. That would be a sonnet. तो इसको तो रिमूव कर देते हैं. A poem that is written in to mourn something, to grieve something, तो वो तो आपकी elegy हो जाएगी. इसको भी रिमूव कर दो. A narrative form of oral tradition using simple quatrains, वो आपका ballad होता है song के जैसा. ठीक है, इसको भी रिमूव कर दो. A lyric form, first of all, it's a short poem. Ode is always a short poem in elevated tone, often addressed to a thing. Yes, odes are often addressed to something. For example, ode to the west wind. है ना, कभी नोटिस किया है? Mostly all the odes are addressed to something. Ode to the west wind by P.B. Shelley. ठीक है. Ode to Skylark, to the Skylark, also by P.B. Shelley. Ode to Autumn, John Keats, Ode to Autumn. Ode to Nightingale, Ode to Psyche, Ode on Indolence, Ode to a Grecian urn. ठीक है, चलो. Next question for you people is, the pragmatic principle of cooperative principle and its 4 maxims were proposed by which of these linguists? Your options are John Searle. John Searle कौन है? जिन्होंने ऑस्टिन की स्पीच एक्ट थ्योरी को फर्दर इलेबोरेट किया था एंड उसको वाइडन किया था. जेएल ऑस्टिन को प्राइमरीली हम स्पीच एक्ट थ्योरी के लिए क्रेडिट करते हैं. सर्ल ने उनकी थ्योरी में उनको हेल्प किया था. एचपी ग्राइस और नॉर्म चॉम्स्की. The pragmatic principle of cooperative principle in language was proposed by which of these? It's not Noam Chomsky. I mean, we would have discussed it agar Noam Chomsky hote. H.P. Grice is your correct answer. H.P. Grice proposed the idea of cooperative principle and the 4 maxims of conversation in Logic and Conversation. 1975 का वर्क है. कौन से बचे 4 maxims हैं जो उन्होंने propose किए थे? Quantity, quality, relation and manner. First of all, he said as far as quantity is concerned, say as much as is needed. है ना? ठीक है, आपको बचपन से बताया जाता है जितना काम जितना जरूरत है उतना बोलो, तो बस वही आइडिया है क्वांटिटी. ही सेड स्पीच के बारे में आई हैव 4 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, ठीक है, देयर आर 4 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. व्हाट आर द 4 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स? से एज मच एज इज नीडेड, नेसेसिटी के हिसाब से बोलो. क्वांटिटी, बी ट्रूथफुल, whatever you speak has to be good. Quality, relation, whatever you speak has to be relevant to the subject which is being discussed. And be clear, your manner of articulation should be clear and precise. Okay? And if you flout any of these rules, if you break any of these rules, this will generate conversational implicature. Okay.
सो फिलिप सिडनी के इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर यू नीड टू टेल मी विच ऑफ दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो चलो पेस अप करो. वी हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, लास्ट 1 आवर. ठीक है, अभी नहीं थकना है. Okay, we're going to pace up a little, students, very quickly. ठीक है. Astrophil and Stella, which is a work of sonnet sequence है सिडनी का. Astrophil, aster मतलब क्या होता है? Star. Astrophil. Let's just break down this title. Astrophil and Stella. Stella. So aster means star. Aster means star. And Phil means lover of. So lover of star is Aster, and Stella also means star. So star and the lover of star. It's a work by Philip Sidney. It's the first major sonnet sequence in English language. ये तो correct है. The sonnet sequence explores Neoplatonic idealism versus earthly desires, and Astrophil represents Sidney himself, and Stella represents Penelope Devereux. क्या ये correct है? Yep, indeed. All the three statements about this work are correct indeed. Chalo, next question. Which of these is not a defining feature of Gothic literature? Which of these is not a defining feature of Gothic literature? Next question. Settings in ruined castles, abbeys and remote spaces. Landscape, ये तो होता है ना? Most of the Gothic literature is in fact set in abbeys. Nightmare Abbey, Northanger Abbey. तो abbey की settings भी होती हैं, है ना? Castles की setting भी होती हैं. तो ये तो correct है. Themes of inheritance, transgression and the return of the repressed, ये भी होता है बच्चे गॉथिक में. Rational enlightenment based explanations for apparently supernatural events, no, गॉथिक में ये नहीं होता. Exploration of sublime and terror that it provokes, ये भी होता है. So ये नहीं होता. Option number C हमारा correct है. Done? Cool. Next question. The movement poets कब आते हैं? 20th century के mid में आते हैं. In post-war British literature include Philip Larkin and Kingsley Amis. Both of them were also very good friends, by the way. They were associated with which of these? Movement poets का आपको description बताना है, features बताना है, characteristic features बताना है. Quickly. चलो pace up करो बच्चे. Last 1 hour. Imagine the amount of satisfaction you will have at the end of this class, because you would have solved all 10 unit questions in 5 hours. ठीक है, बहुत solid आपकी preparation हो रही है. Believe in yourself and last 1 hour, I promise. देखो questions तो I have a lot many questions, and जो remaining questions हैं वो आपको कल मैं 8 AM वाली क्लास में कर पाती हूँ. ठीक है, पर अब फिलहाल मूवमेंट पोइट्स, पोस्ट वॉर एज के पोइट्स हैं. फिलिप लार्किन, आप कहोगे मैम किंग्सली एमिस तो नॉवलिस्ट हैं. ही हाउ कम ही इज अ पोएट? He started out his career as a poet, but then he did not get much success as a poet, so he then settled for a novel writing career. And Kingsley Amis is the father of Martin Amis. He's also the writer of your famous novel Lucky Jim, which was a campus novel. Lucky Jim, which is about the titular Jim Dixon. और Jim Dixon का जो character है, in fact, Philip Larkin से ही inspired था. ठीक है, the character of Jim Dixon was actually inspired by Philip Larkin. Done? आंसर क्या हो जाएगा? Their poetry was anti-romantic. They were deliberately writing anti-romantic poetry, empiricist poetry, ironic verse using traditional forms of diction, and they rejected modernist obscurity. Modernist vagueness को उन्होंने reject कर दिया था. They said हम अपने poetry के through clearly articulate करेंगे जो भी हम idea articulate करना चाहते हैं. Done? Movement poet का नाम कहाँ से आया? It comes from Robert Conquest's New Lines Anthology, 1956. Gayatri Chakravarti's Spivak, Can the Subaltern Speak, concludes with which idea? Very famous post-colonial statement that is given by Gayatri Chakravarti Spivak in her famous essay, Can the Subaltern Speak? Can the Subaltern Speak? Okay. ये भी मुझे लगता है one of the most famous works है NTA का, क्योंकि NTA इसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से निकाल कर पूछ लेता है. ये पूछ लिया था सबाल्टर्न टर्म कहाँ से लिया था, ग्रामकी से लिया था, तो दिस वाज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे इसमें से. तो या तो बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इस एक ऐसे में से. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक. देखो, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में स्टिक टू सिलेक्टेड नंबर ऑफ थ्योरीज, पर उनके आइडियाज को अच्छे से करके जाना. एडवर्ड सईद ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, होमी के भाभा, एजाज अहमद, सारा अहमद को भी कर लेना. ठीक है, तो ये तो करना ही है बहुत अच्छे से. Yeah, so I was saying
क्लास में हमने कुछ एडिशनल भी करे हैं, बट एटलीस्ट अगर आप रिविजन कर रहे हो, खुद रिविजन अगर मेरे नोट्स के थ्रू कर रहे हो तो सब कुछ रिवाइज करना, अगर खुद पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये 5-6 तो कर ही लेना। तो कैन द सबाल्टर्न स्पीक का कंक्लूजन क्या है? Subaltern women in particular cannot speak. They've been denied speech. They've been denied voice within existing structures of colonial and patriarchal representations without being misrepresented. Next question for you people is, which of the following Indian English novels is structured around the narrative device of a child protagonist recounting events from an uncomprehending or naive perspective? You have a child protagonist in which of these novels? Hmm. You have a child protagonist in which of these novels? Next question. Which of these Indian novels has a child protagonist? चलिए बताइए. Vikram Seth, A Suitable Boy, Rohinton Mistry, Such a Long Journey, Rohinton Mistry, Indian origin Canadian writer of Fine Balance, also Tales from Firozshah Bagh, also very important writer. इनमें से potentially question आ सकता है. Then you have Arundhati Roy, God of Small Things. क्या ये child perspective से आपको story या narrative मिलती है? Correct, indeed. बच्चे एस्था एंड रेहल के पर्सपेक्टिव से आपको ये स्टोरी मिलती है, which is why this has a child perspective. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 प्ले employs the technique of expressionistic interludes. Why? Expressionistic interludes, why? Next question, please start answering. चलो आंसर करो. I'm gonna just get some water for myself because my throat is beginning to give up now. लेकिन 5 hours की क्लास तो करेंगे, ठीक है? I'll just get water. ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बता दो आंसर. ठीक है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन. Who's the titular salesman? Willy Loman. Yes, indeed. He uses interludes, expressionistic interludes, to present the salesman memories and fantasies as theatrical reality on stage, blurring the past and the present. Remember, Willy Loman के भाई जो हैं, the successful brother, also keeps coming back to him through memories. So that also happens through the use of dramatic technique का use किया था, expressionistic interludes. ठीक है? Okay. फ्रांस फैनॉस ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 का वर्क है, uses psychoanalysis to argue which of these. Franz Fanon was actually trained in psychology. He was trained in psychoanalysis. तो इन्होंने psychoanalyze किया था उस colonized brain को in order to study the effects of colonization, on colonized people. So what was his core idea or central argument in 1952 की book? He said colonized people suffer from an inferiority complex that can only be resolved or cured through political independence. Did he say that? कि एक बार political independence मिल गई तो जो colonized लोगों का inferiority complex है वो खत्म हो जाएगा? No. Okay. Colonial trauma can be overcome through the adoption of European cultural values? No. Black people must reject psychoanalysis as a European science inapplicable to African experience? No. In fact, he himself had trained in psychoanalysis, ना, तो ये तो नहीं होगा. He said colonialism produces a psychopathological condition in which the colonized people internalize the colonizer's language and gaze, producing ontological alienation. This is indeed your correct answer. ठीक है? That's your correct answer. Think of this as women internalizing the male gaze. इसके parallels draw करते हैं and think of women internalizing the male gaze. ठीक है? When you people watch films, you start watching films from the same perspective that male viewers or male audiences watches the same film. When you read a novel, you start reading the novel from the same perspective as a male reader would read the novel, because you internalize their perspective. Which is why Elaine Showalter had to say that you need to read as a woman. You need to criticize or critically
read from a woman's perspective. Likewise, colonized people at some point have been so colonized कि वो colonizer का idea ही उनका ही perspective क्या करते हैं internalize कर लेते हैं. So the colonizer saw them as inferior. अब colonized अपने आप को as an inferior ही देखता है. So that's your correct answer. Okay. Consider the following statements about Michel Foucault's idea of discourse. Which of these are correct? Michel Foucault's idea of discourse. चलो बताओ. Discourse for Foucault is simply a synonym for language or speech. Is it that simple? It's nothing but a synonym for language or speech. Definitely no. Foucault की बात हो और कोई simple चीज हो जाए possible ही नहीं है. Foucault talks about everything. He talks about power politics, power dynamics and everything. Discourse produces the objects of which they speak rather than merely describing pre-existing realities. Foucault's concept of discourse is neutral with respect to power relations. बच्चे, Foucault ने कभी भी ये नहीं कहा that discourse या knowledge is neutral. He always focuses, he always emphasizes that knowledge is very much rooted in power dynamics. तो ये तो correct हो ही नहीं सकता, है ना? So this is one of those rare options जहाँ पर आपके एक ही ऑप्शन करेक्ट है. अदरवाइज आई थिंक अब तक ऐसा आ रहा था कि दो ऑप्शन करेक्ट थे या तीनों करेक्ट थे. He did say, however, that discourse produces objects of which they speak rather than merely describing pre-existing realities. कि discourse की वजह से कोई कुछ चीजें क्रिएट हो पाती है, not just describe होती है. ठीक है? Exam. Next question. Sprung rhythm, G.M. Hopkins, is based on counting only stressed syllables in a foot with any number of unstressed syllables. Reason is Hopkins developed sprung rhythm to break from classical quantitative meter and achieve the energy of natural English speech. G.M. Hopkins, Gerard Manley Hopkins, by the way, he hated his middle name. He did not like to use his middle name, G.M. Hopkins. Hopkins was born and died in the Victorian period in the 19th century. However, his poetry was produced and published in the 20th century. Okay, you've got to remember this as well. पोइट्री लिखी तो इन्होंने 19th सेंचुरी में थी लेकिन पब्लिश हुई थी 20th सेंचुरी में बिकॉज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही डिड नॉट पब्लिश हिज पोइट्री. इट वाज आफ्टर हिज डेथ दैट अ डियर फ्रेंड ऑफ हॉपकिंस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंड? दिस फ्रेंड वाज आल्सो बाय द वे अ पोएट. ये फ्रेंड भी एक पोएट थे एंड इन्होंने हॉपकिंस की पोइट्री को पब्लिश किया था. क्या नाम था इनका? I know I bombard you with questions. In a single question I ask you 10 other questions, but that's necessary. ठीक है, अदरवाइज आप कनेक्शंस कैसे बनाओगे? तो स्प्रंग रिदम का आइडिया जीएम हॉपकिंस ने दिया था, बिल्कुल दिया था. आइडिया दिया भी सही हुआ है यहाँ पर. He developed sprung rhythm to break away from the classical quantitative meter and achieve the energy of natural English speech. उन्होंने कहा कि अगर आपको रिदम क्रिएट करनी है, you only need to count the stressed syllables in a foot. ठीक है, और अनस्ट्रेस्ड syllables कितने भी हो सकते हैं. दोनों करेक्ट हैं बच्चे, लेकिन इनकी पोइट्री को पब्लिश किसने करवाया था? That was Robert Bridges. Who said that? Okay, somebody by the username Richard Bobage. किसने कहा? सुभाश्री क्या हो गया? बॉबेज कहाँ से आ गए यहाँ? रॉबर्ट ब्रिजेस. ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रिजेस ने he edited and published the poetry of G.M. Hopkins. G.M. Hopkins की famous poem हमने जो क्लास में कवर किया is the Deck of Deucalion. Okay, next question for you people is the communicative language teaching. ये pedagogy का question आ जाएगा. Unit number 5 language में जो pedagogy वाला portion है वहाँ से question है. So the communicative language teaching approach to English language teaching emphasizes which of these? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग तो एक्चुअली आप किस पर फोकस कर रहे हैं? ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से तो बिल्कुल डिफर करता है बिकॉज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड था और उसका सारा का सारा फोकस रिटन इंग्लिश पर था. अगर आपने बच्चे ट्रेडिशनल तरीके से स्कूल में लैंग्वेज सीखी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर टॉट English language in your schools through the traditional, if you were taught English language in your schools through the traditional grammar translation method, then you would have been really good at writing English but not very good at speaking English. Why? Because grammar translation method makes you good in that language, in the vocabulary and the spellings and the tense and the grammatical rules. Okay? But it does not prepare you for the conversational part of it. What prepares you for the conversational part of it is the communicative language teaching approach, the ability to use language effectively for authentic, for actual communicative purposes in real world. ये आपको enable करता है ये वाला method ऐसे language को use करने के लिए.
डन। अगर आप सिंपली मेमोराइज कर रहे हैं वोकैबुलरी को और ग्रामर के रूल्स को, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड है, जो आज भी स्कूल में यूज होता है। स्कूल में तो यही मेथड यूज होता है। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब डरना नहीं है नया टर्म देखकर, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेसाtura, ओके, in Renaissance literary and courtly culture, Presatura, derived from Castiglione's The Book of the Courtier, means what? Okay, too many new names, but we'll underline it. Castiglione का वर्क है The Book of the Courtier, ठीक है। इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, रेनेसांस लिटरेरी कल्चर का कॉन्सेप्ट है, विच इज Presatura. What does Presatura mean in the first place? Display of elaborate ornament and decoration in language, जैसे कि euphuistic writing style हुआ करता था लिली का, और a studied carelessness or of effortless grace that conceals the art and effort behind it, the strict imitation of classical models in literature, and the moral virtue required of the Renaissance gentleman scholar. No, बच्चे, जब आप बहुत ही एफर्ट के साथ एंड विद ग्रेट deliberate effort किसी वर्क को क्रिएट करते हैं, बट व्हेन दैट वर्क इज रेड इट सीम्स लाइक इट वाज क्रिएटेड एफर्टलेसली, ठीक है। तो दैट मास्टर स्ट्रोक, उसके लिए वर्ड क्या है, Presatura, ठीक है। A studied carelessness or effortless grace that hides, that conceals the fact that a certain piece of art has been created with much conscious effort. अंडरस्टूड? ये टर्म भूलोगे तो नहीं, नया टर्म है। Castiglione's Presatura describes the ideal courtier's quality of making difficult skills appear effortless and natural. It is an art that conceals art, what Touchstone might call the truest poetry, in that it dissembles. The concept influenced Renaissance poetics' discussion of art versus nature. Art versus nature. Okay, when you create art in such a way that it seems to be flowing out of you naturally, as if you've made no efforts to do it. That is it. Take a screenshot of this because I'm assuming this is a new idea for you people. Next question is Matthew Arnold's concept of touchstone that he proposed in the study of poetry 1880 proposes what? देखो exactly this is the kind of variation जो आपको नेट एग्जाम में देखने को मिलेगी. Some questions will be completely new. आपने वो वर्ड कभी देखा नहीं होगा, वो राइटर का नाम कभी सुना नहीं होगा, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही फैमिलियर भी आ जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसी वेरिएशंस एक्सपेक्ट करो नेक्स्ट एग्जाम में कि बहुत डिफिकल्ट भी आएगा, बहुत इजी भी आएगा, मतलब बहुत फैमिलियर भी आएगा, बहुत अनफैमिलियर भी आएगा। इजी डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट या familiar and unfamiliar. Matthew Arnold's concept of touchstone as given by him in the study of poetry 1880, it proposes which of these? Poetry should be evaluated by its social moral usefulness. No. Passages of proven excellence of the great masters. Yes. बस यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, easy question है, let's not spend much time on it, we have a lot many other questions to solve. Next question, narrative term heterodiegetic. Heterodiegetic narrator कौन सा होता है? Refers to a narrator who, when we say किसी भी वर्क में एक heterodiegetic narrator है, तो कौन सा narrator को heterodiegetic narrator कहते हैं? Is your next question. Okay. अच्छा, be honest, how many of you are actually having your dinners while attending the class? अब ये तो मुझे पता ही है कि since I can't see you people, तो मुझसे आधे लोग ने क्लास करते करते डिनर कर लिया होगा, है ना? तो heterodiegetic narrator is one such narrator, B, who stands outside the story world and is not a character in it. Sometimes what happens is, बच्चे आपने देखा होगा, एक ऐसा narrator है जो कहानी का पार्ट भी होता है. For example, think of the 1925 American novel The Great Gatsby, है ना? The Great Gatsby. ठीक है, finish the dinner also. Okay.
So The Great Gatsby 1925 की ये नॉवल है. इसमें जे गैट्सबी इज योर टाइटुलर कैरेक्टर. जे गैट्सबी तो हमारे चलो सेंट्रल हीरो हैं, बट ऑल्सो जे गैट्सबी के साथ हमारे पास एक और मेन कैरेक्टर हैं, स्लाइटली मेन कैरेक्टर हैं, निक कैरेवे. ठीक है, तो निक कैरेवे हिमसेल्फ इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, बट ही इज ऑल्सो द नैरेटर. कैरेक्टर भी है, नैरेटर भी है. तो ऐसा नहीं होता हेटेरोडाइजेटिक में जो हमारा नैरेटर होगा वो सिर्फ नैरेटर होगा. दे आर नॉट ए कैरेक्टर इन द स्टोरी. कहानी में वो एक कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट नहीं होंगे. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट, हाँ, ये आइडिया बच्चे किसने प्रपोज किए थे? सारे गेरार्ड जॉनेट ने. एक बार देख ले इनको. ये हाँ, इस पे से ना आई जस्ट राइट. ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. गेरार्ड जॉनेट की नैरेटोलॉजी में से जो इनके टाइप्स ऑफ नैरेटर्स हैं, उनका एक बार एक मैच द फॉलोइंग फॉर्म में क्वेश्चन आ गया था. तो इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार. डिनर के बाद मैंगोज भी मैम. अरे अरे अरे, ओ माय गॉड, फिल्म देख रहे हो तुम लोग? पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाया करो, है ना, पॉपकॉर्न. ओके, so in Janet's narratology, he said the first kind of narrator that I'm going to talk about is homodiegetic narrator. Homo मतलब कि जो narrator है वो within the work एक character भी है. ठीक है, तो a homodiegetic narrator is within the story world first person character narrator. Heterodiegetic narrator कौन होगा? Who stands outside the story and is not a character in the story. The distinction is about the narrator's presence in or absence from the literary world, not about reliability or about person. Is that understood? समझ आ गया? अगर फिक्शन वर्ल्ड के अंदर नैरेटर है और कैरेक्टर भी है वही, तो वो आपका होमोडाइजेटिक हुआ. अगर जो नैरेटर है इज नॉट अ प्रेजेंस इन द वर्क ऑफ फिक्शन बट इज एन आउटसाइडर जो बस आपको कहानी बता रहा है, देन दैट इज अ हेटेरोडाइजेटिक नैरेटर. किसके कॉन्सेप्ट्स हैं? नैरेटोलॉजी के फादर गेरार्ड जॉनेट के कॉन्सेप्ट्स हैं. गेरार्ड जॉनेट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म अपोरिया इन डिकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रेफर्स टू व्हाट? ये अपोरिया टर्म किसका है? दिस इज आल्सो वन ऑफ द नियोलॉजिज्म. किसके नियोलॉजिज्म है? आपके जैक्स डेरिडा की. नींद भी आ रही है. चलो, another half an hour is all you need to focus. half an hour भी नहीं है, उससे भी थोड़ा कम है, but I really want to complete a good number of questions with you. ठीक है, चलो, जितने मैंने प्लान किए थे उतने तो फिर भी नहीं हो पाएंगे. I have a lot many questions planned, but we'll do them in tomorrow's class. तो कल 8 AM वाली जो क्लास है जिसमें आपका AI जनरेटेड क्वेश्चन पेपर मैं आपको कंक्लूड करवाने वाली हूँ. पार्ट नंबर 3 है, कल लास्ट पार्ट है. शार्प 8 AM ज्वाइन कर लेना. वहां पर आई एड सम क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे जो मुझे लगेगा कि नए क्वेश्चंस हैं. कुछ जो कॉमनली नोन क्वेश्चंस हैं आई विल नॉट इंक्लूड दोज. ठीक है, या अपोरिया क्या है? अपोरिया इज लाइक दैट डेडलॉक जिसके बियॉन्ड कुछ सॉल्व ही नहीं होता. राइट, उसके बियॉन्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं होती. सो एन अनडिसाइडेबल कॉन्ट्रडिक्शन और इम्पास विद इन अ टेक्स्ट दैट रेजिस्ट further resolution is called an aporia. It was a term given by Derrida. Derrida ने कहा कि एक टाइम आता है जब लैंग्वेज अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना स्टार्ट कर देती है. So aporia comes from the Greek word which means impassable path. Path जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, पाथ नहीं कर सकते. Derrida locates aporias to demonstrate that texts cannot stabilize their own meanings or binary oppositions because at one time they begin to contradict themselves. तो आप टेक्स्ट में मीनिंग को निकालकर स्मूथली पास नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बामा's Karuku 1992 work translated in 2000 occupies a unique position in Dalit Tamil literature for which of these reasons? बामा's Karuku. बामा's Karuku ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? तमिल लैंग्वेज है. ठीक है, तमिल लैंग्वेज. If anybody has not covered that one shot class that we had on Indian literature, उसको कवर कर लेना. एक वन शॉट क्लास हुई थी ऑन इंडियन लिटरेचर बिकॉज उसमें हमने सारे के सारे दलित लिटरेचर के राइटर्स, सारे के सारे इंडियन ड्रामेटिस्ट, इंडियन प्ले राइट्स, इंडियन नॉवलिस्ट, इंडियन पोएट, इंडियन एस्थेटिक थ्योरी सब कुछ डिस्कस कर लिया था. लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल. तो बच्चे ये आपकी जो वो है ना, दिस इज योर करंट क्लास. ठीक है, ये कल वाली क्लास है 50 मेजर इंग्लिश बेस्ड. या दिस इज द क्लास दैट वी हैड. इंडियन लिटरेचर की क्लास हुई थी. इट वाज अ 3 आवर लॉन्ग क्लास. तो इसमें काफी कुछ डिस्कस हुआ था. तो आपकी क्विक इंडियन लिटरेचर की रिवीजन हो जाएगी इफ यू वांट टू डू दैट. तो बामा का करूको इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज इट्स अ पायनियरिंग दलित फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफी दैट आर्टिकुलेट्स डबल ऑपरेशन. वन,
बिकॉज बामा इज अ वुमन, ठीक है, कास्ट लाइन्स की ऑपरेशन है, जेंडर लाइन्स की ऑपरेशन भी है, बिकॉज शी इज अ कैथलिक दलित क्रिश्चियन वुमेन्स पर्सपेक्टिव, इनफैक्ट क्रिश्चियन भी हो जाएगा, क्रिश्चियन बीइंग अ माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ईयर क्या है करूकू का? 1992, ठीक है। ट्रांसलेट कब हुआ तमिल से इंग्लिश में? 2000 में। आप ट्रांसलेशन वाले ईयर नहीं लर्न करोगे चलेगा, बट ओरिजिनल ईयर लर्न कर लो तमिल वर्क का, 1992। ओके, which of these best characterizes Thomas Pynchon's narrative technique in Gravity's Rainbow? देखो Gravity's Rainbow वैसे भी पोस्ट मॉडर्न नॉवल है। अब पोस्ट मॉडर्न नॉवल में टिपिकली नैरेटिव टेक्निक कैसी होती है? थॉमस पिंचॉन्स नॉवल Gravity's Rainbow, 1973 is the publication year, is a post-modern novel. So, typical post-modern novel में narrative structure किस तरह का होता है? You need to tell me that. विशु says, मैम ये कुछ क्वेश्चंस मुझे HP सेट से मिलते जुलते लग रहे हैं। विशु बच्चे देखो, नेट के क्वेश्चंस सेट में बहुत अपीयर करते हैं, है ना, और बहुत रेयर होता है कि सेट के क्वेश्चंस नेट में अपीयर करते हैं, बिकॉज नेट का जो लेवल है सेट से काफी हाई होता है इन मोस्ट केसेस। कुछ स्टेट के सेट एग्जाम्स भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट नॉट इन मोस्ट केसेस। इन मोस्ट केसेस अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सेट काफी स्मूथली आंसर हो जाता है, बट डब्ल्यू सेट कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है, so that's something, but yeah, questions all in all English literature, as long as देखो आपका वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो सेम ही है ना, चाहे गेट में क्वेश्चंस आए, नेट में आए, सेट में आए। या तो थॉमस पिंचॉन्स ग्रेविटीज रेनबो की जो नैरेटिव टेक्निक है इज एन एंट्रोपिक मैक्सिमलिस्ट पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव विद हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, paranoid structure, and the V2 rocket as organizing symbol. Next question for you people is, the term subaltern is used in post-colonial studies. It was borrowed from which of these figures? This is a previous year question. PYQ है ये। Subaltern जो post-colonial studies में term use होता है, specifically इसको popularly use किया था स्पिवक ने। टर्म कहाँ से बोरो हुआ? मिशेल फुको का टर्म है, फैनो का टर्म है, ग्रामशी का टर्म है, मार्क्स का टर्म है, कार्ल मार्क्स का, और इज इट अ टर्म फॉर कार्ल मार्क्स बाय कार्ल मार्क्स? क्विकली। कार्ल मार्क्स का नहीं है। कार्ल मार्क्स का टर्म क्यों होगा? ग्रामची का टर्म, ठीक है। ग्रामची का टर्म आता है प्रिजन नोटबुक्स में से, वेर इट रेफर्स टू नॉन हिजेमनिक सोशल ग्रुप। ग्रामची ने कहा था जितने भी मार्जिनलाइज्ड और फ्रिंज ग्रुप्स हैं, जितने भी सेंटर में ना आने वाले ग्रुप्स हैं, हु ऑक्यूपाई द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी, तो सारे के सारे सबऑल्टर्न हैं, ठीक है। नॉन हिजेमनिक सोशल ग्रुप्स आर सबऑल्टर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। या all the subordinated people, all the marginalized people of social, जिनके पास hegemonic power नहीं है, वो सब के सब subaltern हैं। हाँ, interestingly, importantly, the subaltern studies group, जिसके members कौन थे? रंजीत गुहा, पार्था चैटर्जी and Spivak, adapted this for post-colonial analysis. This is important, Ranjit Guha and Partha Chatterjee as well. Walter Benjamin's concept of the aura of a work of art, as discussed by him in his 1935 publication, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, aura क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, वॉल्टर बेंजामिन के टर्म्स में ऑरा क्या है, और तुम लोग आजकल जो सोशल मीडिया पे ऑरा डिस्कस करते हो कि मेरा ऑरा कम हो गया है ना, मेरा ऑरा माइनस हो गया, व्हाट इज दैट ऑरा? करते हो ना ऑरा? So how is Benjamin's aura different from the kind of aura that you use in today's slang? Walter Benjamin says कि देखो, the problem with this world of machines is कि अब mechanically हर चीज को reproduce किया जा सकता है। Just like machines को use कर आप एक piece of cloth को 100 piece of cloths में reproduce कर सकते हो, exact चीज को। The same product can be reproduced with the same measurement, the same style, the same color through the use of machines. Likewise, आज mechanically हम आर्ट वर्क्स को भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। बच्चे एक वक्त हुआ करता था जब आप क्या करते थे, आप म्यूजिक को कैसेट्स में या सीडीज में सेव करके रखते थे। Today, however, you do not do it because you can literally find music at your fingertips.
So the more mechanical reproduction has happened, the more the works of art have been copied and copied over and over again. So much so that the originality, the essence of the work, the aura of the work is now lost. Okay? So the unique authentic presence of an original work in a particular place and time connected to the ritual and tradition is now lost, and this is the loss of the aura that has been that is actually a result of the mechanical reproduction of art. 1935 का वर्क है, वॉल्ट बेंजामिन आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर थे. The term anacrusis in prosody refers to what? Prosody क्या होता है? Prosody is basically the study of poetry. So while you're studying poetry, there's a term for you called anacrusis. What is anacrusis? What is anacrusis? Okay. The repetition of consonant sounds at the beginning of word in close succession. Is that anacrusis or is that consonance? Or is that consonance? The addition of extra syllable at the end of a line beyond the regular pattern. Okay. The omission of final unstressed syllable at the end of a line, feminine ending variant. One or more syllable unstressed syllables at the beginning of a line of a verse before the regular metrical pattern begins. Anacrusis क्या होता है? ठीक है. अच्छा, किसी की अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि सारे ऑप्शंस में जो लॉन्गर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होता है. तो बाय दैट लॉजिक ये चूज कर लेते हैं क्योंकि ये भी करेक्ट आंसर है. ठीक है. Arrange the following works in the order of their compositions and performances because publication year तो सबका same है. नहीं, सबका same नहीं है. I'm sorry. So yeah, you need to arrange these works in the order of their compositions or performances. This is so easy, like perhaps the easiest question of today's set of questions because everybody knows the starting point. I hope everybody knows the starting point. Yeah. The anonymously written work Beowulf, the English epic, appears first. So Beowulf has to be your starting point, followed by Everyman, which was an anonymously written morality play from before the Elizabethan age drama appears. That means Everyman comes from 15th century. So Everyman comes next. Then comes your Dr. Faustus पहले आएगा या Hamlet पहले आएगा? Dr. Faustus पहले आएगा या Hamlet पहले आएगा? See, the question will actually bring trouble to you क्योंकि 3-2 के बाद यहाँ पर you are stuck क्योंकि दोनों सेम ही एज के राइटर्स हैं, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर. लेकिन हैमलेट, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं वो उनके लेट करियर में आई थी, तो उसके हिसाब से हैमलेट को हम लास्ट में प्लेस करेंगे एंड डॉक्टर फॉस्टस पहले आ जाएगा. ठीक है. तो हैमलेट 1601 and 1592 Dr. Faustus. John Keats's Ode to a Nightingale explores the tensions between what and what. John Keats's Ode to Nightingale is one of his 6 1819 odes. Ode to a Nightingale is also perhaps his best known and most loved ode. है ना? So yeah, the ode begins with the lines. क्या opening lines हैं इस ode की? My heart aches and a drowsy numbness pains. The ode begins with the lines, my heart aches, and a drowsy numbness pains, and a drowsy numbness pains. That's how the famous 1819 ode, this is one of the 6 odes of 1819 by John Keats, that's how the ode opens. The ode is actually a conflict between the permanent beauty of art and the transience of human life. Okay, next question for you people is, you need to match the following Nobel Prize winning writers with their respective years. Now, I'll be very honest, मुझे भी इनमें से 3 ही पता है. I did not know the 4th one. Again, net crack करने के लिए you do not need to know everything about literature. Nobody knows everything about literature. Nobody can claim that they know 100% about literature. But जो आपको 90% या 80% पता होता है, just use that, put that to use. So I do know Harold Pinter का year क्या है. ठीक है, I do know कि Doris Lessing का year क्या है. I do not know Kazuo Ishiguro का year. I do not know when he was awarded the. I do know he was awarded the Nobel, but exact year मुझे याद नहीं है. Question तो solve हो जाएगा ना, है ना? बिल्कुल. The answer is indeed. A is your correct answer. Harold Pinter को नोबेल मिला था 2005 में. मैच कर दें. Harold Pinter को जब नोबेल मिला था, he was actually in hospital, so he could not actually come to, receive his own Nobel. So he had to, send his
Nobel speech in a recorded format. It's a very famous speech. It's a very famous Nobel Prize speech because he also he gave some very radical political statements in that Nobel winning speech. So that's how. Harold Pinter 2005. उसके बाद आएंगी डॉरिस लेसिंग in 2007. ठीक है, डॉरिस लेसिंग याद है सबको? She was a she happens to be from Zimbabwe, right? She was British, but her parents were in Zimbabwe. So yeah, Doris Lessing, she was also awarded the Nobel. She was very old when she was awarded the Nobel. She was 88 years old, perhaps the oldest woman. In fact, there's an interesting video that you can see on YouTube. Doris Lessing, she was coming back from shopping groceries, and she was unloading the groceries from the car when the media people, they approached her and they asked her, "Ma'am, what do you think about it? You won the it's been announced that you recently won the Nobel." She says, "Well, I'm gonna have to unload my groceries, right?" So she had been so accustomed to winning these literary prizes that it was not a big deal for her. Because she was 88 years old when she won the Nobel. And then you have Shimasini in 1995 and Kazuo Ishiguro in 2007. Chalo. The concept of dialogism in Mikhail Bakhtin's theory means what? Mikhail Bakhtin, Russian thinker. Dialogism का idea क्या है? Monologism, dialogism. Monologism, dialogism. Mikhail Bakhtin's idea of dialogism means what? Okay. The Golden Notebook, The Grass is Singing, these are major works by her. हमने Grass is Singing discuss किया था because वो उनका debut work है लेसिंग का. Golden Notebook उनकी best known novel है. Also Doris Lessing के works को हमने क्या किया था? We also studied her communist phase of writing. Remember, there was a time she was very influenced by communism, so many of her novels have the influence of communism in them. There was a phase in her life when she was very much influenced by Sufism also, the philosophy of Sufism. So that influence is seen in many of her works. She did write a space, a series of space novels also. Children's literature भी लिखी थी. Dialogism का idea क्या है? The inherently multi-voice, multiple voice nature of language and discourse, where every utterance is shaped by and responds to every other possible utterance. मतलब language हमेशा से क्या है? एक conversation में है, ठीक है? ठीक है. Next is a bunch of statements about partition literature. You need to pick the correct ones. Good question. Solid question. Consider these statements about partition literature in English literature in India and pick the correct ones. Khushwant Singh's Train to Pakistan, 1956, depicts the 1947 partition through the microcosm of a border village called Mano Majra. सारी डिटेल्स करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. बॉर्डर विलेज होता है और इंडियन पार्टीशन ऑफ 1947 को दिखाती है. 56 की पब्लिकेशन है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. वापसी सिद्धवा, पाकिस्तानी राइटर, आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया, दूसरा टाइटल इसका क्या है? क्रैकिंग इंडिया, 1988 की नॉवल है. नरेट्स द पार्टीशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड हु आल्सो हैज द पोलियो डिजीज. करेक्ट है, सारी डिटेल्स करेक्ट हैं. ठीक है. Amitav Ghosh's The Shadow Lines deals directly only with the partition. नहीं बच्चे, Amitav Ghosh का जो work है Shadow Lines, it does deal with partition but also post partition भी ये work historical events की discussion करता है, which is why 1 and 2 are correct but 3 is not correct. ठीक है. Partition of Bengal की discussion करता है, ढाका की communal rights की discussion करती है Shadow Lines. Okay. Next question is from Transcendentalism, and since we've recently completed American literature in your course class, I'm assuming you will be able to answer the question. So, Ralph Waldo Emerson's concept of oversoul is central to American Transcendentalism. Is that so? If yes, the oversoul का idea है क्या? It possesses a universal spiritual force of individual human souls, which are part enabling mystical union with the divine through intuition rather than institutionalized religion. Obviously, देखो transcendentalists were pretty much against organized religion, तो institutionalized religion के beyond जाकर भी without the use of organized religion भी आप क्या कर सकते हैं? अपने individual को divine के साथ connect कर सकते हैं through if you become an oversoul. तो क्या ये exact idea रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने propose किया था? Is this an idea by Ralph Waldo Emerson?
Yes, indeed. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपकी. रैल्फ वालो एमर्सन wrote a very famous work जिसमें उन्होंने अपने ट्रांसेंडेंटलिज्म की फिलोसफी दे दी थी, and the work is called Nature. Nature. Next question for you people. By the way, students, 1841 का essay है by the same title, The Oversoul. ठीक है, ठीक है. Wole Soyinka's play Death and the King's Horseman is a 1975 play. It's based on a historical incident in colonial Nigeria in which what happens? Wole Soyinka. Wole Soyinka also has a important category जिसमें वो first हैं. क्लास में अफ्रीकन लिटरेचर की क्लास में हमने डिस्कस किया था. He is the first writer to what? First writer from so and so a place to do what? Who's gonna tell me that? Wole Soyinka. अगर कोर्स के नोट्स को रिवाइज किया होगा तो याद होगा. Death and the King's Horseman is indeed about the ritual suicide. Once the king passes away, the horseman has to accompany him. Ritual sacrifice होती है ये, ठीक है. So the ritual suicide of a king's horseman required by Yoruba tradition or Yoruba mythology after the king's death was prevented by British colonial intervention. देखो जिस तरह से Britishers also prevented and ultimately abolished sati because it was inhuman. Likewise, यहाँ पर they had a culture, they had a tradition, they had a ritual where if the king passed away, तो king का जो horseman था, he also had to sacrifice himself, ठीक है? And the Britishers actually prevented this ritual from happening, and that forms the backdrop of the play, the Death of the King's Horseman, 1975. Wole Soyinka was the he was awarded the Nobel Prize for Literature. Correct है. Next question for you people is Judith Butler. ये तो हो गया था question, इसको हम skip कर देंगे. ठीक है. Consider the following statements about a villanelle. Villanelle. It's a kind of poem with a fixed number of lines. How many lines? You're about to tell me. A villanelle has 19 lines arranged in 5 tercets and a final quatrain. What's a tercet? A stanza with 4 lines is a tercet. ठीक है. तो क्या विलेनेल में आपके पास 5 tercets होते हैं? 5 4s are 20. No, tercet is okay, and a final quatrain. अच्छा, okay. Dylan Thomas भी हमने कवर किए थे. He's a Welsh poet. We must have covered him in 20th century post-war poetry में कवर किए होंगे. इनकी एक और पोम भी कवर की होगी, Fern Hill. एक और भी कवर की होगी. I covered 3 or 4 poems by him. Do not go gentle into the midnight. This was actually a villanelle जो उन्होंने लिखा था when his father was on the deathbed. तो ये correct है. Villanelle uses 2 recurring rhymes and 2 refrains from the first stanza. बता दो. Do not go gentle into that good night. तीनों correct है. तीनों correct. ठीक है. 5 tercets plus a quatrain. ठीक है. ठीक है. This was his elegy for his dying father. ठीक है. And this is also his most famous poem and the most famous English villanelle as well. Okay. Which of the following is the best characteristic of a dramatic monologue in Victorian dramatic form, poetic form? Dramatic monologues को master किसने किया था? Robert Browning was the master of dramatic monologues. And besides Browning, Alfred Lord Tennyson wrote a dramatic monologue called Ulysses. What's his name? Arnold wrote a dramatic monologue called Dover Beach. Arnold का Dover Beach is a dramatic monologue. Ulysses by Tennyson is a dramatic monologue. Browning के तो बहुत सारे dramatic monologues हैं. In fact, he's the master, he's the expert of dramatic monologues. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एग्जैक्टली होती क्या है? कंडीशन क्या है? मोनोलॉग है मतलब सिंगल स्पीकर है, बट द कंडीशन है सिंगल स्पीकर को सुनने के लिए हमारे पास लिसनर्स या ऑडियंसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. however they do not intervene, they do not participate in the conversation, they are mute. ठीक है. So the audiences, the readers, us, we will always be made aware that there's somebody in the poem who's listening to the speaker, to the single speaker, but they will never participate. ठीक है. So a poem spoken by a fictional or historical speaker at a crucial moment addressed to a silent listener. बच्चे prerequisite है dramatic monologue में, single speaker तो होगा ही होगा, but single speaker के साथ the second prerequisite is there's a single speaker plus there's a silent listener. There's a silent listener revealing character involuntarily. ठीक है, ना चाहते हुए involuntarily जो speaker है they'll reveal their character. For example,
The Duke reveals his character, and the Duke ultimately also reveals the fact that he has murdered the Duchess. The last Duchess. Last Duchess. Cool. The Condition of England novels, including Mrs. Elizabeth Gaskell's novel North and South. एक तो एलिजाबेथ गैस्केल की जो इंडस्ट्रियल नॉवल थी नॉर्थ एंड साउथ, एंड जो बेंजामिन डिज़ायली जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी नॉवल थी सिबिल. बोथ दीज नॉवल्स, these are condition of England novels. They address what is their primary concern that they address? Cool. Next question, please start answering. The moral condition of English aristocracy after the Reform Act of 1832, the first Reform Act of 1832, the industrial class divide and the social conditions of the working class poor in England. But in England, during the Victorian times, there was a massive rift, right? There was a massive drift. The rich were very rich, the poor were very poor. Okay? Industrialism was at its peaks, and industrialists were thriving, okay, as they always do, right? But at what cost? At the cost of the workers who were being exploited. So this was the condition of England. It seemed as if there were two different nations within the same country. What did Benjamin Disraeli say? He said, well, it seems like there are two nations within the same country. One, the nation of the poor people's England, and one, the rich people's England. Because the rich are thriving, they are flourishing, but the poor are actually suffering. Okay. Sibyl or the two nations? Sibyl or the two nations? Okay. Maggie Nelson's The Argonauts, 2015. I know it's a new work. I know it's a new title. So please focus. Is significant work, recent work in which genre? आपको genre बताना है. And what theoretical interlocutors does it engage? Maggie Nelson's work, 2015 का work है Argonauts. You need to tell me the genre. It's a work of fiction, of course, but fiction may be specifically what kind of fiction is it? Is it auto theory or auto fiction? Is it academic feminist criticism? Is it post-colonial memoir, or is it an eco-critical memoir? The Argonauts. The answer is yes, indeed. That's your correct answer, बच्चे. It's an auto theory या auto fiction. अब auto theory auto fiction जो fiction का genre है, sub genre, exactly what does it do? So it engages queer theory, just like Eve Kosofsky Sedgwick and Judith Butler, and feminist thought through Nelson's own experiences of pregnancy and her partner's gender transition as well. Okay, that seems like one hell of a work. Okay, you need to arrange these works of literary theory in their chronological order. तो आपको इनको sequentially arrange करना है. Frederick Jameson's Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Ferdinand de Saussure's Course in General Linguistics, Michel Foucault's Discipline and Punish, and Terry Eagleton's Literary Theory and Introduction, which is a classic textbook of literary theory. Cool. Terry Eagleton was English. ठीक है, nationalities discuss कर लेते हैं. Eagleton was English, Foucault was French, Saussure was Swiss, he was a Swiss linguist, and Frederick Jameson was American. Done. कर दो arrange chronologically. Okay. ठीक है. Very quickly, please answer the question. It's a chronology question, and you can expect similar questions in your exam also. क्योंकि roughly about 15 questions हर बार chronology के बन ही जाते हैं, more or less. So because last 2 cycles में 15 questions ही थे exactly. तो हो सकता है 1-2 questions plus minus हो जाए. ठीक है? Okay. The answer is, because Saussure का work actually Saussure का work है नहीं. Saussure did not write it as such, right? But ultimately authorship तो इन्हीं की. ठीक है, तो 1916 की publication है. He delivered lectures in Geneva.
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस करेंगे शॉर का वर्क, क्योंकि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग का वर्क है। उसके बाद मिशेल फुको का वर्क आएगा डिसिप्लिन एंड पनिश, जिसमें मिशेल फुको ने काफी सारे पीनल रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए थे। दिस वाज मिशेल फुको, द फ्रेंच थिंकर, द हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज। देन कम्स ईगल्टन्स टेक्स्ट बुक ऑन लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। और देन लास्ट में आएगा फ्रेडरिक जेम्सन का पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, वो 1991 का वर्क है। So that's your correct answer. Chalo. Next question for you people is actually a homework question, and this is where we're going to stop now. ठीक है? ये homework question है for you people. I want you people to answer this question in the comment section. Very very important because अमिताभ घोष almost हर cycle of net में एक question, दो questions तो command करते हैं. So you need to answer this question for sure. Also, I'm gonna see you people tomorrow, because tomorrow at 8 a.m. क्या होने वाला है? At 8 a.m. tomorrow you have your final part of the this thing of your of what? You have your final part of the question paper solving session, and at 6 p.m. tomorrow I'll see you because we have a chronology marathon tomorrow. ठीक है? तो कल 6 बजे आपकी YouTube क्लास में chronology marathon है, and that's it. चलिए, thank you very much for joining. I hope the class was useful. Class ka feedback I want to see in the comment section, but also the answer to this question is something I'll be looking forward to. And I'm going to meet you people tomorrow. कल 15 questions को sort कर लेंगे chronology marathon के through, and कल आपका जो question paper solving session चल रहा है उसको conclude कर लेंगे in the 8 a.m. session. 8 a.m. session को कैसे join करना है, आपकी जो current class चल रही है, which is here, इसी के description box में free class का link होता है, हमेशा होता है. If you people find the class useful, do make sure to like it as well. And more पे क्लिक कर लेना, क्लास का लिंक भी मिल ही जाएगा, स्पेशल क्लास का लिंक यही डाला होता है वैसे तो, या फ्री क्लास का लिंक है, क्लिक ऑन दिस लिंक. ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे, ठीक है. I'll see you tomorrow morning, and this is your 8 a.m. class. It's a completely free class, anybody can join this. Thank you very much. Good night everyone.